Yo, what's up guys? Welcome back to yet another stream. कैसे हो आप सभी लोग? Hope you're doing good. Let's get started. हाँ, वो लास्ट लोकेशन, वो आइडिया, वो ठीक है. आगे ले. Oh, it will store itself. Okay. Yeah. Thank you. पहले स्टोर को देख लेते थे कि नीड्स एनी स्टॉक अप एंड देन ये गो. सुनने में ये आया कि बहुत चल रही है. ओके. Not here. Not here. Not here. Oh, अच्छी बात है. At least somebody is here. The number you are calling is currently unavailable. You have Please the try non-stop. again later. My bad. You don't need to. Yo. हेलो. हेलो. क्या बोल रहे हो तुम? आवाज आ रहे हैं? अभी आ रही है. बताओ तो. किधर हो? मैं हूँ मिरर पार्क में. तुम कहाँ? हॉस्पिटल के बाहर. पता नहीं, आज तो फॉर्म भरा है ये मैं ज्वाइन करने के लिए. अच्छा, पिकअप कर पाओगे मुझे मिरर पार्क से? देखता हूँ. ठीक है, बताना. ओके. Next about this about Max uses. Okay. Okay, let's go. So what's been going on? Huh? Okay. Uh-huh. Read that. If I have enough to provide a person with access to time. हाँ?
ऑन तुम्हें आना ही पड़ेगा, मेरे पास ताले वाला चीज नहीं है। अरे मैं मिरर पार्क के आ रहा हूँ। आजा आजा, ठीक। अरे कट हो जा भाई। ये बाहर है। बाहर? दूर के बाहर हूँ। अच्छा ये तो आ रहा है, आ रहा है। अच्छा। व्हाट्सअप? नहीं, 1 मिनट को पेट्रोल डालते हैं। डाल पेट्रोल डाल। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ पेट्रोल पंप का? फोन अबे नंबर। फोन में क्यों है? मैं पूछ रहा था पेट्रोल पंप, पेट्रोल का क्या हुआ? नहीं, पेट्रोल डाल रहा हूँ। देख रहा हूँ कितना डालना पड़ेगा। पेट्रोल का प्राइस कम हो गया क्या? अच्छा कितना हुआ देखने दो। डाल दिया था। ओके, $8 पर लीटर। हाँ। हम्म, सुनने को आया आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम कोई जॉब करने चले तो चल सकते हैं पवन। कौन सा वाला जॉब करना है? पहले क्लोथिंग स्टोर लेके जाओ, मुझे कुछ ऑफिशियल कपड़े में बदलना। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है? और बताओ क्या कर रहे थे आजकल, उसमें गोइंग ऑन? थोड़ा सा माइनिंग किया था बस। अच्छा, कुछ मिला उससे? रिंग्स बनाए तुमने? रिंग्स तो बनाया लेकिन उसके बाद नहीं बन पाता। अच्छा उसके बाद वाले मतलब नेकलेस वगैरह? उसके लिए वो चाहिए, ग्रेफाइट चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेफाइट, सब चीज के लिए ग्रेफाइट चाहिए। अच्छा, और वो बहुत वो रेयर पता है। नहीं कहाँ मिलेगा। नहीं ग्रेफाइट मिला था ना मुझे उस दिन, जब हम इसके, डायमंड माइन कर रहे थे ना, मैंने एक डायमंड अच्छा माइन किया। डायमंड माइन करने से उससे मिलता है। 4 डायमंड तो ग्रेफाइट बहुत मिले रेयर मुझे। है। हाँ 4 ग्रेफाइट और एक डायमंड क्रिस्टल मिला मुझे। अच्छा। तो बहुत रेयर है, सिंपल पेन। वो तो पक्का है, बहुत रेयर है वो। हाँ। ओहो, पूरा कॉम्प्लेक्स बना डाला है। आराम से आराम से आराम से। आ जाओ। Oh, we have an outfit formula. We have something to this. So, दूर हो जाओ। Okay. Maybe on the shirt can be black. Is classic one. Change from that at least. Until another guy and something facial, but it's fine. It should be um maybe a pair of earphones will do, I guess. बहुत खाली लग रहा है, if you're just trying to get what I mean, but बहुत खाली लग रहा है। If I had some earphones, maybe might look a bit funny. Not this. Not this. Yeah, this.
Yeah, a bit full. No. Okay. How's the whole look? Not bad. Let's see this. There are better earphones. What's this? Not good look. There's only one earphone. Okay. It's a bud, honestly. No, not this one too. Not this one. Not this one. Not this one. Not this one. Remember. Ah. Actually, really nice guns. I'll just remember this 41. Oh, we have mini earbuds actually. It's nice. The one is the best one which suited the suit's look is 41. I'm sorry. Okay. Nah, really 41. Yeah. Any more colors in this? Okay, yellow. Black doesn't seem right. I'm going with yellow. I'm going with white. I mean, alright. Let me see this shit. I think we are good with this shit right now. So हमें अभी जाना होगा सिटी हॉल यहाँ पर. कैसा है सूट? अच्छा. हाँ अच्छा. कौन है ये? कौन है ये? एनोनिमस को ही फोन कर रहा है. Hidden. अबे okay. क्या हो गया? हेलो. ये क्या है? ओ भाई नीचे आ गया. ओके दिख रहा है मुझे अभी कुछ. नेल्स में आ गया. हेलो. चलो सही है. कीप करो. नहीं यही बाकी रह गया था. हट. Hello. What's your name? Can you hear me? What's your name? You obviously know my name if you call me. Get to the point. Where are you? Yeah, what's up? Where are you? I am underground at downtown. What are you doing there? I guess the gods wanted me here. That's it. Come to Pillbox. I don't have a vehicle. It's my friend driving it. We'll try to reach the box. Who are you, by the way? No, come there. It's anonymous, so I really don't know who you are. Will no, come there. You will know when you come there. Alright, sure. अरे लॉक पे क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा? हाँ है ना. एक्स्ट्रा दे देना. एक भी नहीं है मेरे पास. ये खुल डोर नहीं खुल रहा है. अच्छा आपको दे देता. बैठो ब्लॉक बॉक्स में. अच्छा 50 चलो अभी बाहर निकल यहाँ से. सीधा जाओ. हाँ सीधा जाओ. डिग्रेटिव वे पे एक एग्जिट आएगा. अभी सीधा जाएंगे.
बस आराम से अरे अरे भाई ये क्या? हाँ जाओ जाओ सीधा जाते रहो। अभी यहाँ पे राइट लो, ऊपर चढ़ा दो, पिल बॉक्स के नीचे वाले एग्जिट पे आओगे। अरे 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 अरे, आप तो सीट बेल्ट पहनो भाई। हेलो। पहन तो लिया था मैं। जाओ जाओ। हाँ चलो पिल बॉक्स चलो, कोई बुला रहा था। किस जा रहा है क्या? हाँ हाँ कहाँ ये पिल बॉक्स, यही पर है, ये देखो। लेफ्ट लो, पीछे जाओ, वो वाला नहीं, नया वाला पिल बॉक्स। हाँ सीधा जाओ। ये खुल गया? हाँ खुल तो गया मैं। अच्छा, मैं तो पुराना पिन बॉक्स से वेट कर रहा था भाई। ये क्या? नहीं, यहाँ वहां पर लोग नहीं दिखेंगे तुम्हें क्योंकि ये खुल गया ना। आराम से, हाँ यही पर तो है सब। इधर रखे तो गाड़ी चला जाता है। रुको, कोई और रख के आता है। रखो। 10 मिनट के बाद सिटी हॉल चलते हैं, ठीक है। ये ना, ये इसके अंदर पार्किंग है ना, उसमें डाल देते हैं। अरे इतना भाग के आएंगे वापस? अरे चलते नहीं तो कोई गाड़ी नहीं मिलता है भाई। अच्छा ठीक है ठीक छोड़ के छोड़ लोग है ना, सब लोग। है। चल। ओए रुक जा, चल रुक जा बेटा। अबे ये क्या है? हेलो। अरे भाई साहब बुलेट नहीं देख रहे क्या? अरे अरे हैं? क्या चला रहे हो गाड़ी? मेरे भाई जब हमारी बुलेट देखे ना, बेटे, ये क्या नाम है कह तेरा रहा भाई, है? ये तो बता दे। चेक चेक। देव देव मार गए। मेरे भाई मेरी बात सुनो, हाँ आपने लीव करके बंदे को सुना है? कहाँ है बंदा? लीव करके कोई है तुम्हारा दोस्त वो, उसको जो जानते लीव हो लीव कर... बिटलॉक वही है ना? हाँ 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 जानते हो जानता क्या? हूँ, क्या हुआ? उसका नंबर देना मेरे को। ऊपर रुको देखता हूँ। उसके दोस्त हो भाई साहब? नहीं, जान पहचान वाला हूँ। अच्छा अच्छा, कॉमन फ्रेंड हो आप? हाँ जी। तो मैंने फ्रेंड हो मतलब आप है? हाँ म्यूचुअल उसका नंबर लिख लो, म्यूचुअल। आओ आओ। 351 एक सेकंड, 351 2602 26। 02। बस ये 3512602। हाँ बस। बहन चौदह इसे सेव कैसे करी? पहले डाल तो यार लो एक बार। वादा बोलना। 351 351 2602। 2602 लीफ रंडी। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। कोई बात नहीं, आपका नाम क्या? कर दिया हमने भी। माय नेम इज कांचा बाबू। माय अच्छा नेम से का लोगो। ठीक। वो ये कुछ ज्यादा ही धीरे नहीं चल रही क्या भाई साहब? अरे तो स्टक। चलो चलो। साला वैम्पायर के ऊपर नाम रखा है अपना। पहले अभी ये तो दिखाओ, आप थोड़ा भाई दिखाओ तो आपकी फोटोज कैसी हैं, कुछ अपनी हेलो, दिखाओ। प्रफुल्ल ये भाई। खींचिए। हाँ मर हाँ जाओ भाई, कौन मर है? जाओ मर जाओ, तुम बाहर मर जाओ, हॉस्पिटल के अंदर नहीं मिलेगा दाखिल आज। हाँ फोटो देखनी है तो चल लगता है वही जाना चर्पी पे पड़ेगा। देखो जरा, डाली है मैंने, चर्पी पे देखो जरा। नहीं मैंने सुना तो था कि, मैंने सुना था ये खुल गया है। आज ओपनिंग है ना, आज इनॉग्रेशन। अच्छा कितने बजे? 9:30 कुछ है। अच्छा उसके बाद ब्लड ब्लड टेस्ट का कैंप भी है, ब्लड कैंप। चलो पहले होना होना चाहिए ना बॉडी में। आज कुछ नहीं होता है, चलो। गाड़ी है कि गायब हो गया? बताओ। है।
चलो इधर जाने हैं। हाँ बोल। हेलो, हेलो। कहाँ हो? आ रहा हूँ, हॉस्पिटल आ रहा हूँ। हाँ, आज इधर नहीं जाना भाई। नहीं वो हॉस्पिटल नहीं, ये वाला हॉस्पिटल, पुराना वाला, नया वाला नहीं। क्या ये बिजनेस स्क्वायर? अच्छा बात। वैसे पवन हमारा ये है ना कि स्टोर के पास में है, गैस स्टेशन है ना हमारा। हाँ हाँ, अब खरीद गया क्या? नहीं, सोच रहे कि हम वो भी लेने की कोशिश करें, समझ रहे हैं? तो अरे अबे भाई, इंजन बंद कर, इंजन बंद कर। तो आप है। इंजन बंद किया, उतर जा, उतर। वाह। Damn, bro. यही रह गया था। No medics, bruh. Seriously, this one is what. No medics. But this time. I guess there's something even going on. I guess it's fine. Great. इधर है डॉक्टर, हमको भी नहीं पता। वाला बिल बॉक्स ट्राई करना है, बिल बॉक्स ट्राई करना है। ये चलो चलो, अबे दिख रहा है कि 9 डॉक्टर अवेलेबल है बट एक भी डॉक्टर इधर नहीं है। पीडीएम आ गया, लिया कोई? कौन सी कहाँ आ गया पीडीएम? तेरा आ गया? हाँ, अच्छा पनीर भेड़ वाली आ गया ना। छोड़। Uh, चला रहा है।
मेरा गाड़ी हाँ तो रेसिंग भी तो तुम्हारा चालू क्या करना है, गाड़ी कुछ तो है? करना पड़ेगा। हाँ। आजा इस पे बैठ। रुको आ रहा हूँ। ओए वो पुल बॉक्स खुला हुआ है? नहीं मेरे को लग रहा है उधर ये सारे नहीं हॉस्पिटल भाई, नहीं ये डॉक्टर सारे किधर उधर ही है। कहाँ कांड मरवा रहे डॉक्टर्स पूरा। अरे वो पिल बॉक्स पुल ही नहीं हुआ है, जाने का कुछ फायदा नहीं है। वे ठीक है तो हेलो ओ भाई अरे आ, ब्राउन एग मिला है क्या? क्रैग मिला तेरे को? सिल्वर अरे ब्राउन अब क्या? सिटी हॉल ड्रॉप कर दो सिल्वर मिला था। क्या क्या? सिटी हॉल ड्रॉप कर दो नहीं नहीं, नहीं करेंगे। ये ले इधर। हाँ इसको तो नहीं करना। इस बंदे को कहाँ आएगा? देव नाम है तुम्हारा? हाँ क्या होगा बिल्कुल नहीं करेगा इसको, तो बाइक कहीं चला भी ले। ड्रॉप में अच्छा ठीक है मर जाएगा रे। वो नहीं चलाना था उसको गाड़ी वाड़ी, उसको पता है। नहीं है हम्म? भाई। हाँ आराम से चला ला एनजे। अरे देव, एनजे? आ जाओ अरे आ जाओ देव आ जाओ। देव बिल्कुल बिल्कुल भाई देव साहब एनजे आपका है नाम ना क्या है उसका वैसे नाम। लीवा है। ओह जेनी नाइस टू मीट यू साले मेरे को बहुत मारता तरीका। है तेरी गांड। क्या कर सिटी हॉल यही पर है ना भाई भूल गया था no Mm-hmm. Tell me. meetings here right Sorry, what? meetings here right Yeah. how are you Hmm. so how are you Fine, just a bit tired today. uh-huh Yeah, it's been over the top. You have any food on you? I guess I will Yeah. Please lend me some. yeah Thank you. Thank you. Thank you. so what's going on what's the constitution work has been all done or just hectic No, it's not hectic. I mean, uh-huh. it's just a bit tiring. It's point of time. KD is here Yeah. Greetings, my lord. हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग Good evening. सब लोग आ गए तुम लोग नहीं आए क्या Yeah. आई कैन सी अदर्स लेट मी कॉल देम Saul Goodman I can see Saul Goodman I don't have his number. I think so. तेरे बाप की पार्किंग है जो यहाँ पर खड़ी कर रहा है? Yeah, I don't have his number. yeah Good evening, guys. good evening There's some civilians that I came around. They said like there are people with beard are kicking off people from bikes and they're stealing their bikes away. That's what we got to know. From bikes. Okay. बिल्कुल भाई साहब
Myself Sheikh Alok Habibi. Nice to meet you. This is my bodyguard Kancha Baur, right side. Nice to meet you. Yes, yes, yes. I am his bodyguard. Yes, yes. Yes, yes, yes. Are you the bodyguard? You're the bodyguard. Bodyguard. I am his bodyguard. Can you believe? I am his bodyguard. Yes. Courthouse. क्या कह रहा है? ये ले. Oh, Oh shit. ओए ओए what? क्या? my cheek. Sure, it's your cheeks. Yeah. Oh yeah. This is Kancha's bodyguard. Spanked. Oh yeah. He slapped me very hard. Can तो ये somebody कोर्ट call हाउस का, ओए police? भाई साहब बात सुनो हमारी. ये जो कोर्ट हाउस है ये हमारे बाप के नाम पे रजिस्टर हुआ है. इसका रेंट दे दो फटाफट. डॉक्यूमेंट दिखाएं. This is not a courthouse, number one. Yeah. अच्छा कोर्ट हाउस नहीं है. Yeah. Yeah, I think you got the wrong address. Oh, the wrong father. माफ करें. City hall. This is city hall. My brother. सिटी हॉल. वही सिटी हॉल भी हमारे बाप का है. नहीं दादा का था. हाँ अच्छा पहले डिसाइड हो जाए. दादा कहाँ है तुम्हारा? दादा मर गया है भाई साहब. तो मर गया ना बैंड चोद, मर गया ना बुड्ढा, तो अब क्यों लेकर आ रही हो उसकी बात? अरे चिट्ठी पे लिख के गया था वो हमारे नाम पे है बोल के ऐसा भाई साहब. एक बात बताओ हबीबी भाई, कैसे गया था? मतलब कैसे उनकी वो हुई थी, विदाई हुई थी? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ. लड़की के चक्कर में भाई साहब. हैं? तुम्हारा दादा लड़की के चक्कर में चला गया ऊपर? कैसे? एक लड़की थी जिसका नाम था अंशिका मैथी. हैं? अंशिका मेहती? हाँ. अच्छा. उसने क्या करा, मेरे दादा को रूम में लेके गई थी. दादा ने शराब पिलाई थी उसे. और उसने शराब पीने के बाद मुंह के ऊपर अपना पल्लू गिरा दिया था. उसमें दब के मर गए वो. अबे पल्लू में दब के कौन मरता है? बेंचो झूठ बोल रहा है भाई साहब. उसके अंदर बेहोशी की गोली भी थी ना. अरे तो बेहोशी से आदमी बेहोश होएगा या मरेगा? बेहोश होने के बाद लौड़ा मर गया है जिंदा है कहाँ पता लगेगा. आप में दिमाग में है नहीं है थोड़ा सा आपने. एक मिनट, मतलब तू ये कह रहा है तेरा दादा बेहोश था और तुमने जला दिया उसे? जला दिया. मेरी माँ की चूतिया है. अरे तो यही तो कह रहा है बेहोश है. I am looking for KD पाठक जी. अरे थप्पड़ खाएगा. आई एम लुकिंग. ये बाप की दफनाते दादा की हैं, बात हो जलाते रही नहीं, है. दफनाते हैं. यस यस सर. कम हियर. एक मिनट मैं गाइस बात कर लेता हूँ. हाँ ओए इधर ओए पैट्रिक इधर आओ बेटे. हाँ बताओ. हाँ तो ये भाई साहब ऐसा हुआ है तो इसके पेपर वूपर दिखाए हमें पहले सिटी हॉल. सर मैं जॉब के लिए आया था. What? क्या बोल रहे हैं? सिटी हॉल के पेपर्स दिखाने को बोल रहे हैं. हाँ तुम पहले अपना आईडी कार्ड दिखाओ. आईडी कार्ड. भाई साहब आप पहले अपना आईडी कार्ड दिखाएं. कौन है, किससे बात You कर रहे mentioned हैं? earlier that his name is Sheikh Alok Habibi. यस यस. ask him to show his ID card. ये बिल्कुल भाई साहब देखिए. दिख नहीं रहा है मेरे को. We can't see it. You have तुमको ही to दिख give रहा it है to यार. us. You have to hand it अच्छा. over. नो मैं नहीं लूंगा इससे. एक आईडी कार्ड भी हो सकता है फिर मेरे को. हाँ वो भी हो सकता है. आप लोग समझ रहे वकील है. तो सर नहीं हुआ, डायरेक्ट भर्ती हुई है सर. इसका अभी भी चिपका दिया है. वो आईडी कार्ड कहाँ चले गया? वो कहाँ चिपक गया? रुको भाई साहब वहाँ कहीं चिपक गया. मतलब ट्रांसफर अभी उल्टा सीधा हरकतें मत कर. अरे वो आईडी कार्ड वहाँ चिपक गया है भाई साहब जरा. अच्छा. नहीं सर. ये कौन है आपके साथ? हेलो. ये नहीं है. ये कौन है पता नहीं काला. ये हमारे साथ हमारे साथ. अच्छा आपके साथ है, ठीक है. भाई साहब वो जरा आईडी कार्ड दे सकते हैं हमारा? आप हैं वहाँ कहीं दूर चले गए हैं जरा. अभी भी आपके लिए दूसरा चॉइस आ रहे हैं. बुलाए कौन सा जा रहा है? हम भी बुलाए जो पेपर्स दिखाएगा उसको बुलाए. हाँ पेपर है तो ही बात करें. ओह वेरी गुड गर्ल यू आर. थैंक यू सो मच. हाँ रशियन नहीं आती सर मुझे. फौज अभी भी यहाँ पे गिरफ्तार कर दूंगा तेरे को. अभी कंटेम्प्ट ऑफ लगा दूंगा भैंस में. बॉडीगार्ड से बात करें हम. छोटे मोटे जज वज से बात नहीं करते. बुलाओ यार पैट्रिक भाई. अरे अभी भी नारा तो तेरा टाइट नहीं है. अभी पैंट खुल जाएगा तो आगे जाएगा. वो हम खोलने के लिए रखते हैं. लामी जमाल हमारा दोस्त है. उसका ट्रेंड फॉलो करते हैं भाई साहब. हाँ बेसिक लैंग्वेज आती है कि इंग्लिश? चलो हम लोग को एक मीटिंग है. आपको कुछ काम है डीओजे से? अदरवाइज नहीं हम जा रहे हैं सर. आप जाएंगे मीटिंग करें. बिल्कुल धन्यवाद. ध्यान रखे. हाँ बिल्कुल. आप भी ध्यान रखें कभी आ जाओ पैट्रिक आ जा. सही गल है ना. एक तो पहले आप जर्मन सीखिए, ठीक है? हम उसको स्क्वाश I'm an experienced में आओ.
नहीं नहीं, अमेल पमेल वाला पूरा बताइए ऐसे। मपेल चपेल चपेल तो मैं एक्चुअल ऐसे। That doesn't sound German at all. समझ आ रहा है तुम्हें? ओए लड़की एक बोल रही है सेकेंड, लड़का जर्मन बोल की रहा बात है, हो रही है ना। कंफ्यूज हो मृगा गया। आस्ते वर्क मस्तु फ्रोत में शागनी है सुगुट इश बिन का चब। समझ समझ आया समझ कुछ? कुछ नहीं है, बस इतना समझ आया कि कांचा भाऊ बोल रहा हूँ तभी मैं, तो मतलब आप मेरा नहीं तभी अभी तक नहीं, पागल बना मैंने दिया तभी कि आपको एक ये बार बोला सीखना कांचा पड़ेगा भी, सीखना पड़ेगा। कांचा बाऊ इज माय फ्रेंड इन जर्मन में बोला है। नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने बोला है कांचा भाऊ बॉडी गार्ड तो ऑफ शेखानो का देखिए, बेबी जर्मन में। हाँ तो देखिए आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि हाँ जी। आपका अभी क्या है कि अभी कितने बज रहे हैं? अभी 8:30 बज रहे हैं ना। आप 10:30 आए तब आपको जॉब मिल जाएगी। 10:30 बिल्कुल। तक आए अच्छा, और जो जब हमें तुम्हारा हेड बुलाया है ही ना 8:30 उसके गया, हिसाब तो सर से। मैं 10:30 क्यों आऊंगा? हमारे से सवाल जवाब कर रहे हो हैं? सर वैसे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपकी पैट्रिक एक जरा बात बोलूं। साइड में लेके जाओ इन्हें। सर बुरा तो नहीं लेके मानोगे जाओ, सर? एक नहीं बात नहीं बाहर लेके बोलूं? जाओ। निकालिए इसे, एडी सर, बाहर एक निकालिए बात इसे, बोलूं? आइए सर, बल्ला बाहर निकाल। निकालिए। पैट्रिक बल्ला निकाल, बाहर लेके चल, क्या ये निकल। कोर्ट रूम ये आइए सिटी आइए हॉल में सर। चिल्ला कौन रहा है? 12 12। इससे समझ आ गया जी, आप लोग जब वो लॉयल नहीं हो तो गया है। मैं आपके गलत आदमी से बात कर रहा हूँ, सॉरी। आपके दुकान में कोई दिक्कत हो रहा है? आप भाई अरे सिटी हॉल क्या में चल रहा है चिल्ला ना कौन रहा है बिजनेस यार? में? अरे चिल्लाओ अरे मत। क्या दिक्कत हो गया सर? कैसी बातें ओए कर रही है आप? ये वो बबून क्या की है ना शक्ल कि का लाइक कौन है? आप ऐसे हमारा जॉब खा रहे हो, तो हम भी सोच रहे हैं आपका जॉब खा लेते अरे थोड़े दिन के अरे लिए। नहीं नहीं सर, मैं तो टेस्ट ले रहा था सर। मैं ये देख रहा था उसकी कैपेसिटी है आप जैसे बड़े अफसर तक आने की सर। टेम्पर जो कब होता है ना तक एक आदमी टूटेगा का वो? कि जो बिकॉज यू गाइज हैव प्रोफेशनलिज्म, चाहे सामने वाला ब्रेक कर दे बट यू कांट। ये तो आई एम फिर गुरु जस्ट बात करना टेस्टिंग चाहिए। दैट। किसकी बात और कर इस रहे हो बंदे तुम? पे ये टेस्ट ऐसे जॉब प्रोफेशनलिज्म पे है रहने सर। के बाद ये टेस्ट आप कोर्ट में क्यों नहीं करते? आओ आप कभी ऐसे भी लीगल एड बन के। सर बिल्कुल आई बिल्कुल विल करेंगे। बट आई एम टेलिंग डन है। टेलिंग यू सर, ये एरिक में बहुत प्रोफेशनलिज्म है। इसने बहुत टेम्पर, इसने अपना बहुत कंट्रोल में रखा अच्छा, है। आई एम इम्प्रेस्ड। यू आर इम्प्रेस्ड राइट? ओके, आई कैन हायर हिम वो राइट? सब तो ठीक है, ये काला बबून कौन है ये बता दो हंड्रेड काइंडली। बिल्कुल परसेंट बिल्कुल। क्या बोल ये रहे हो तुम? हाँ तो किसके साथ हो मतलब तुम भाई साहब? काला बबू। भाई ये हाँ इज्जत क्या नाम है सम्मान भाई तुम्हारे साहब? अच्छा गाइज, आप लोग ऊपर आ जाइए, चले विल क्या नाम स्टार्ट है द भाई मीटिंग, साहब ठीक है? का? मेरा नाम वही जॉनी काले मिलर ओके। है। बबू है। जाओ बेटे, दो तुम कप इज्जत चाय से लाओ। आपका बात नाम कर क्या लो। है भाई साहब? सुनो मैं सुनो, सिर्फ एरन काले यादव बबू सर। ने क्या करते हो तुम शहर में मेरे बच्चा? ऐसा ऐसा काम कर लूंगा ना, आपको जेल में डाल दूंगा। मैं इज्जत से बात करूँ। मेरे भाई This one, साइंटिफिक में right? कोई गलत पहले नहीं तो कह तू सकता। ढंग से ये बोल। आपके सुना, समझ नहीं आ रहा, आपके समझ नहीं आ रहा। एंसिस्टर बंदर थे, वो तो हमारे को देखने से This दिख रहा है one? मेरे कांट भाई। हियर, वी कांट हियर ईच अदर। आपके एंसेस्टर थोड़ा ऊपर चिंपांजी चले होंगे। जाके, तो चले बहुत बंदर आवाज आ भाग रहा है। जाए चिंपांजी भाई किधर से मोटे चिंपांजी। मेयर का ही ऑफिस हड़प लेते हैं आज। आई थिंक देयर इज अ मीटिंग देख रूम ओवर चिंपांजी हियर। का भाषा। हाँ, देयर इज अ मीटिंग रूम हियर। इट्स लॉक्ड। तो मीटिंग रूम एट द प्लेस सर मैं तो just पहले opposite डिपार्टमेंट to ऑफ the जस्टिस पहुंच senior गया था bunch. सर। Both are locked. It's crazy by the way. कौन सा है? ये वो ऊपर है क्या? He's trying to lockpick. That's crazy. He's trying to create a key. आई एम नॉट एबल टू, आई थिंक आई डोंट हैव एक्सेस। Hello, you guys are lawyers. हाँ जी सर, हम लोग एक मीटिंग में Yeah. जा रहे हैं। आप बताइए। तुम ही लॉयर है यार। अच्छा, आपने अप्लाई किया था? हाँ जी। ओके, never mind guys, I will take the governor's office That is also for locked. today. Yes, look. Fuck. The place training class is just open. opposite to the senior bunch has a really good meeting room by the way. Huh. Yeah. But how Sir, will everyone go there? You have a very का big meeting. ऑफिस ऑफ जजेस है इधर नाइट में। That is the Talking individual about- concern, you know. इधर ही है ना? Class है ना, हाँ training इधर आ इधर जाओ, है। जाओ इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। We'll go back to our old room. I'm a backbencher. Prepared, ठीक है? And you will tell everyone whatever the points that you have noted down. So this is for, अच्छा पहले तो बताओ कौन कौन who haven't got the job yet and who are here for the job. Okay, Mr. What's your name? myself जॉनी मिलर। जॉनी मिलर। मिस्टर जॉनी मिलर, आपको किस पोस्ट के लिए बताया गया था? Which पब्लिक डिफेंडर। बेसिकली आपको कोर्ट की साइड से बुलाया जाएगा जब किसी के पास कोई वकील नहीं होगा। तो जॉनी मिलर, I will set you as a
on the post of prosecutor, because we don't have any kind of defender post, but you will be Yeah. under prosecutor paycheck. But I hope you are not allowed to. You should not get caught of doing any kind of shady things. Okay. I get it. I get it. Okay. Mr. Johnny Miller. हाँ जी. Okay, Johnny Miller, you got the job. Just think about duty DOJ and you can go on duty. What's the other name, guys? Aaron Yadav, sir. Okay. Aaron Yadav. Yeah, sir. I'm for the private attorney, sir. Excuse me. You also got your job. Excuse me. हाँ जी. Right. Thank you, sir. Third person. आपको भी job चाहिए था? You already got the job, right? यार Mr. मैं तो अभी checking, मीटिंग checking, में sir. मैं कुछ नहीं कर सकता अभी. हाँ आपको मिल गया है. इनको पूछ रहा हूँ Yeah. मैं जो बैठे हैं पिंक कोट में. आवाज नहीं आ रहा है. मुझे मिल गया अच्छा, आपको मिल. आपका नाम क्या है वैसे? सॉल गुडमैन. अच्छा अच्छा, सॉरी, आपका हेयर स्टाइल चेंज हुआ है शायद. इस दिन आपको दूसरे हेयर स्टाइल में दिखा था. Cool. Okay, you guys have seated. I think let me just quickly do a cross check if anyone else is available in the city. Johnny Miller is done. Saul Goodman, Dev, Aaron Yadav. Okay, all right, all good. Fine. So we'll start. I think Tej will take the lead. Okay, guys. And जो लोग private attorneys हैं, ठीक है? This is for you also to understand the constitution. अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐसा लगे कि it is going unfair for the normal civilians and it will be unfair for you guys to defend cases, you also can put up your points. Okay. Okay. All right. So that is why this meeting has been held through all the judges. Now this draft will further go to the Chief Justice and then it will go to the governor's office. Okay. So I hope Mr. Tej, Miss Hazel, I guess you guys have I don't know if you guys had got the time to verify it with the police department, like kind of Not run yet. through. But I hope that your interest lies in the police department while you're making the draft. Totally. Okay, cool. So just because like you don't want to keep a loopholes for yourself, right? Which private attorneys can utilize. So I hope that. But yeah, so right now, guys, we'll go through one by one points what Tej have drafted and. You will explain. If you have any doubts, you guys can discuss. Okay, if किसी को भी कोई भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी चीजें कोई दिक्कत होता है, तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं. ठीक है? Patak sir, just a request. I had sent you the draft over mail. Could you just share it with them over mail itself? Let me check if I can present it here. Yeah, that would be great. Shit, I cannot place on this whiteboard. Nope, not on this whiteboard. Anywhere else, if it could be done or something. Maybe here on this wall. Yeah, on this wall I can. Yeah, that's great.
Madam Hazel, I would request you to join me, just to Sure. explain alongside. Well, this is the first time I'm gonna look into it as well. Yeah. I mean, it's a very basic draft. I hope everyone gets to understand it. If there's anything, please feel free to ask and talk Yeah, I about think it. I need access to your document. So, Yeah, or maybe if you can present, just take a little bit of bunch of screenshots and just place it over here. give it to you. If you How could you do give it? Yeah. My brain's a bit messed up today, so. You can just send it to me. I'll do my best. But I don't think I can put anything here. I can't access it. No, maybe I think he's doing it already. So. देखते हैं just waiting for the presentation. टेक्निकल इश्यूज होते हैं स्टार्टिंग में. The other room. इधर भी नहीं है, इतना बड़ा frame है ना इसके वजह से. Can we do it in some other room maybe? Let's see, let's find. Let's go for a hunt. Wall hunt. We can do here ना. Hello. यहीं कर दो इस पे. यहीं खड़े होकर देख लेंगे. बाहर से लोग आ जाएंगे बहुत. ये भी है. People would be like, what's this? What's this? What's this? Oh, let's go to the garage, guys. आ जाओ. Fuck this whole building. Yeah, perfect. सब लोग है ना? We have everyone. But yeah, Patek sir, I would still consider. I would also still suggest going to that building near to the senior ones. We need a very big bus, I guess, to accommodate everyone. I have my cycle. I have a four. अच्छा 4 door है ना? मेरे पास एक और 4 door है. I got a कितने लोग bike. हैं? I got a bike. Okay, then I think we have enough, I guess. चलो. All right, I'll see you guys there. आ जाओ इसमें आ जाओ. सब पे अपनी अपनी व्हीकल हैं. हाँ चलो आ जाओ. चलो आगे चलो. मुझे तो रास्ता ही नहीं पता. कोई माफ करेगा? हाँ ये सुना. ओके ये वाला देखने पड़ेगा. बस ये वाला भी देखना पड़ेगा. आई थिंक देयर आर सम न्यू जॉब्स वी एक्सप्लोर. This is work shot. हाँ. कहाँ पे मीटिंग रूम? Can we put a good screen? इधर है meeting room. We have a meeting room here. Let me check if we can put a screen over here.
हाँ इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। सबको इधर बुला लो, तो लोग बाहर है। आपका क्या नाम है भाई साहब? देव। आपका? मेरा नाम जॉनी मिलर। अच्छा, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। जो पब्लिक डिफेंडर प्राइवेट साइड, सॉरी? आप डीएस ऑफिस हो प्राइवेट? नहीं, पब्लिक डिफेंस। डीएस ऑफिस है, पब्लिक नाइस नाइस नाइस, मजा आएगा। आप प्राइवेट हो? हाँ 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 जी, प्राइवेट। ओके, माय सेल्फ Aaron Yadav, I'm a private attorney. नाइस टू मीट यू देव रोमान। Nice to meet you too. Nice. हेलो अंदर से। आ जा अंदर चलते हैं, जॉनी जी। नाइस टू मीट यू आनंद जी। आई थिंक सबको दिख रहा है, राइट? Yes, yes, yes. ठीक है, ऑलराइट। तो या तेज टेक द लीड। कहाँ है तेज? कहाँ है? तेज कहाँ है? Can hear the call. Interesting. Okay. This will be the foundation stone of our radiography. Right to enact and repeal laws to do defamation procedures to defend that depends on the lawful penalties. Okay. Huh? What the hell है? क्या कर रही है? The most stated opening disaster after the promised 8:30 opening failed to take Nice. place with the mayor Salman not arriving on time, despite the several sick people gathering outside the waiting room. Patek sir, are we good to go? Good to go, yeah. Start with the preamble. Okay, guys. So just a basic question. Do you guys know what's a preamble? Wow. Everyone? Yeah. Even if you don't know, just let me know. We can just go through it and let you know about it. इन सिंपल भाषा में कुछ बता सकते हैं तो थोड़ा सा शब्द वैसा हो गया हमारे थोड़ा सा जी जी। Okay, so preamble is just basically stating that we are in full faith of this constitution. It's basically the scope and purpose of this constitution explained in a few lines, okay? Which we are gonna follow throughout. So the preamble is, we the people of the state of San Andreas, in order to establish justice, liberty, equality, public order, accountable government, and the rule of law, do hereby establish this constitution. We recognize that no person, office, department, or authority is above the law, and the government exists to protect the rights and interests of the people. Guys, what do you understand of this? I mean, just giving you an outline of it, and just to have a basic understanding for you guys. Oh. Do you want me to say it? I'll go for it. Yeah, sure, please. Well, I mean, first of all, preamble is basically an introduction to, like a short introduction to the stuff that's going to happen next, and the serving the purpose of the Constitution. So, based on the preamble that is mentioned over here, the only thing that I will like to put out in like scope in is that no person, office, department, and authority is above the law, and which is the reason why this constitution exists. That's what I'm gonna take from there. Yeah. Nice. Thank you. So guys, I have highlighted a point over there. DOJ team notes. Guys, please, any of you could, read it through and
give me a brief understanding why I have written that, please. No clue. Any of you guys? Can you apart please from repeat sir? मैं वहाँ पे Yes, sir. वहाँ पे एक जगह पे डीओजे नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ जी। तो आपको वो समझ में आ रहा है कि वो किस लिए लिखा हुआ है? लिखा- बिकॉज़ व्हाट आपका क्या काम है उस नोट से, आपको ये समझ में आ रहा है? वो पूछ रहा है। यस सर। हाँ, तो ठीक है, मैं आपको ये समझा देता हूँ, इट्स नॉट अ क्विज़ थिंग, मैं रखना नहीं चाहता, अगर आप लोगों को डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी को भी हम लोग यहाँ पे सब सिखाए नहीं आए हैं, ये तेज दीज़ ऑल द ओल्ड पीपल विल हेल्प यू टू यू नो थोड़ा-सा आपको समझ में भी आएगा कि कैसे यहाँ पे डीओजे चलता है। एंड यहाँ पे जो नोट्स का यही मतलब है कि अगर आपको कोई सजेशंस हैं, Yes. जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ द स्टेट, जैसे यहाँ पे उसने ऑलरेडी मेंशन किया है कि वी रिकॉग्नाइज नो पर्सन, ऑफिस, डिपार्टमेंट, अथॉरिटी। अब मान लो आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी हम लोग कुछ और ऐड कर सकते हैं इसके साथ, तो यू कैन सजेस्ट, ठीक है, दैट इज फॉर योर क्राइटेरिया टू गिव द पॉइंटर्स, सो दैट हम लोग क्या है ना कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें ऐड कर सके, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट्स से रिलीजियन, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि रिलीजन की जरूरत है यहाँ पे लगाने का, तो आप ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, एंड देन वी विल टेक दोस पॉइंट, विल डिस्कस अमंग सब लोगों के बीच में, लाइक वी हैव द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, वी हैव प्राइवेट अटॉर्नीज, विल डिस्कस अमंग अस, एंड देन अगर हम लोगों को लगे कि आफ्टर दिस डिस्कशन कि हाँ ये पॉइंट ऐड होना चाहिए, विल ऐड इट, ठीक है। गॉट इट? सो अगर आपको किसी को भी कोई भी सजेशंस है ऑन द प्रीएम्बल, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, प्लीज फील फ्री टू यू नो पुट योर सजेशंस ओवर हियर ऑन द टेबल. Otherwise, we'll go to the next article. Yeah. Okay. I guess I have a suggestion though. Yeah, sure. Please go on. We could add religion for sure. Gender, maybe works. I think we'll have a clarity on this up until if we head towards the amendments. Until and unless we go through the amendments, I don't think we can give a solid input over here. Yeah, but this defines the state's philosophy, so I really think we can add religion and gender if it really defines it. Sure. Point considered. We'll have a discussion about it later on. All right. Thank you. Anyone else? No. No from my side. I think Tej, you can add a comment on that, ठीक है? वो जो पॉइंट्स है उसने बोल रहा है तुम अपने डॉक्यूमेंट में ना वो पॉइंट ऐड करते रहो कमेंट में, ठीक है? ऐड अ काइंड ऑफ कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर नोट, ताकि हम लोग बाद में फिर बैठ के वो डिस्कस करें. एनीवे इट विल गो थ्रू लॉट ऑफ, हम लोग बार बार इसको पढ़ेंगे, एंड डोंट वरी, ये ऐसा नहीं कि अभी फाइनल सब कुछ हो रहा है, देयर विल बी चेंजेस विल कम एंड ऑल. अभी हम लोग पहले आते हैं आर्टिकल 1, दैट इज द लेजिस्लेटिव ब्रांच, ठीक है. यहाँ पे डिफाइन होता है कि ये शहर कौन चलाता है बेसिकली, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है. कुछ कुछ शहरों में होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ कुछ शहरों में होता है जैसे नॉर्मल कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होता है, मिनिस्टर्स ऑफिस जो होता है, एंड कुछ कुछ जगह में भी मेयर्स ऑफिस का भी जिक्र होता है. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग एज अ कॉमन टर्म यूज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ना तो हमें पता नहीं कि जैसे अभी हमें पता है कि देयर इज अ मेयर, ठीक है. नाउ इट कैन बी रिप्लेस्ड विद मेयर्स ऑफिस और इट कैन बी रिप्लेस्ड विद कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है. तो बेसिकली जिसके पास पावर होता है इस शहर में कुछ भी बदलाव लाने के लिए, व्हाटएवर, कल को तुम जाओगे, कल को व्हाटएवर प्राइस इंक्रीज होना, इन्फ्लेशन, प्राइस किसका क्या होगा, टैक्सेशन कैसा होगा, व्हाट आर द लॉज, bills that have to be passed, that will be passing through that particular assembly, ठीक है. It can be mayor's office, it can be cabinet ministers, it can be anything, ठीक है. But in a common term इसने यहाँ पे mention किया है state legislative assembly, ठीक है. It's basically a group of people elected by our citizens, okay. Got it? Now they have mentioned some powers, ठीक है. वहाँ पे 1 2 3 है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में 4 5 होगा. पहला पावर ये है कि लाइक enact, amend and repeal laws. इसका मतलब कि लॉज ला सकते हैं, अमेंडमेंट्स ला Yes. सकते हैं. Yes. नहीं, amendments नहीं, amend laws means बदलाव ला सकते हैं किसी भी कानून में, ठीक है. And repeal means किसी भी कानून को हटा सकते हैं अगर हटाना है, ठीक है. Establish government regulations and procedures. मान लो कल को हमारे पास लाइसेंस का सिस्टम आया कि हम लोगों को वेपन लाइसेंस प्रोवाइड करना है,
कैसे करना होगा, तो ये हम लोग डीओजे डिसाइड नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आएगा हमारे पास कि दिस विल बी द प्रोसेस टू फॉलो टू गिव अ लाइसेंस टू समवन, ठीक है। मतलब एस्टैब्लिश असेंबली डिसाइड क्रिमिनल, करेगा। करेक्ट, establish criminal offenses and lawful penalties, that means the charges basically, कितना फाइन होगा, कितना जेल टाइम होगा, कितना क्या होगा, that is the powers of assembly, ठीक है। अभी इसके बाद और 2 पॉइंट्स हैं, I couldn't fit it in the image but for the time being इसमें 1 to 3 पॉइंट्स जो है, जो हम लोग पावर दे रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन इन दैट, डू यू थिंक दैट सम पावर्स stays in DOJ or some power shall not go to the legislative assembly totally, ऐसा कुछ आपको सजेशन है तो आप दे सकते हैं। मैंने जी जी बोले बताइए। बोले जनी आप बोले, जनी आप बोले। हाँ जी सर, मेरे 2 सेशन थे। पहले सेशन कौन है एसएल ने, उनको थोड़ा डिफाइन कर देंगे तो अच्छा होगा इसी प्रीमेबल अभी में। कोई नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, देयर विल बी इलेक्शन कमिंग सून, आपको बहुत जल्दी जो डेप्यूटी मेयर है आई थिंक वो भी मीटिंग रखेंगी इस वीकेंड को, यू शुड कम एंड अटेंड दोज मीटिंग्स। वहाँ पे पार्टी नॉमिनेशंस, पार्टी फॉर्मेशंस, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजों के बात होगा। तो देयर विल बी पार्टी इलेक्शन के लिए पार्टीज जो है वो नॉमिनेट करेंगी खुद को, देन देयर विल बी इलेक्शन विल हैपन, and the election they will choose a particular mayor or a minister, I don't know, probably they will choose a mayor only because we have the mayor system right now and we are following the mayor, deputy mayor and all the other mayor's office thing, so they will choose the mayor based on their votes, जिसको वोट करना है, ठीक है। now mayor will create this assembly with his office, with his whoever जो mayor's office में है, उनके जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी मेंबर्स जो है, उनके साथ मिलके वो असेंबली बनाएंगे, ठीक है। somebody will take care about the economy, somebody will take care about the infrastructure, somebody will take care about this everything, like basically taxations, auditing and all the stuff, so that will be done by mayor's office, ठीक है। but अभी तो वो नहीं है, but this see the thing is, अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है laws and lawful penalties, आपको ये समझना है DOJ is also part of a legislative assembly, ठीक है। ऐसा नहीं कि DOJ पार्ट नहीं है इस चीज का, जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है उसमें डीओजे के भी मेंबर्स होते हैं, उसमें पीडी के भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं टू डिस्कस अबाउट द करंट सिचुएशन जो भी। तो ऐसा नहीं है कल को कोई भी मेयर बोलेगा कि ये लॉ पास कर दो, ये लॉ पास हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। उस लॉस को लाने से पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो डीओजे की तरफ से बिल पास होता है वो बिल जाता है असेंबली के पास टू बिकम अ लॉ, ठीक है। So there will be a lot of process. I'll brief you, but right now, basically, what it says is like the state assembly can enact and repeal laws. Basically, वो हटा भी सकता है और लागू भी कर सकता है। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, कोई आपत्ति है तो आप बता सकते, कोई ऑब्जेक्शन है तो। क्वेश्चन है सर, या मैं ये पूछ रहा, जैसे आपने बोला रिपील भी कर सकते हैं, तो जैसे आपने बताया कि जब लॉ पास करने की बात आएगी, जब भी सबकी बात मानी जाएगी, तो रिपील करने के टाइम पे मेरे ख्याल से सबसे पूछा ही जाएगा। So that's a process. I'll brief you. Process क्या होता है? Basically, for example, there is a law of let's say legalize marijuana, ठीक है। marijuana को legalize करने का लॉ आया है, ठीक है। अब ये लॉ बनेगा नहीं, पहले वो आएगा बिल। अब वो बिल क्या, बिल बनने से पहले it will become a PIL first. It will start from a PIL where a lot of people are requesting to have this legalized. तो यहाँ पे आप लोग जैसे यहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों को वो PIL फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, एंड टेलिंग दैट कि वी शुड लीगलाइज मैरिजुआना। देयर विल बी अ कोर्ट हियरिंग, देयर विल बी, उस कोर्ट हियरिंग में आपके ऑपोजिट काउंसिल्स भी रहेंगे, वो लोग ऑपोज करेंगे उस चीज को। आपको उस कोर्ट हियरिंग को पहले जीतना है। वंस यू विन दैट कोर्ट हियरिंग, इट विल बिकम, आई थिंक इट विल बिकम अ बिल और एक्ट, व्हाट इज इट? It will become a subsidiary bill. या सो इट विल बिकम अ बिल, ओके। देन उस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा असेंबली के सामने। देन असेंबली विल वोट ऑन दैट बिल कि वेदर दे वांट इट और नॉट, ठीक है। ओके, अगर वो अप्रूव करता है, अगर वो बेसिकली उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, देन इट विल बिकम अ लॉ और अ एक्ट बेसिकली जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो वो बिल बन के ही रह जाता है, ठीक है। अब रिपील का क्या बात है? अब मान लो असेंबली ने डिसाइड किया कि ये जो लॉ है इसको नहीं रखना चाहिए, ठीक है, तो देन दे विल रिपील दैट लॉ एंड टू बिकम इट बिल, एंड दैट टाइम there will be a proper court hearing, there will be people will be called to repeal the law कि this is the statement। एंड कभी कभी क्या होता है, मेयर्स आपकी बात नहीं भी सुन सकते, वो मेयर के ऊपर है, उसका वोट बैंक अगर बचाना होगा
तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगर वो मान लीजिए सिटीजन्स को दुखी कर रहा है तो उसको वोट नहीं मिलेगा, सीधी बात है, नेक्स्ट टाइम, राइट। सो ही हैव टू बी मेक श्योर दैट इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। नहीं होता है बिकॉज रिपील उतना इजी नहीं होता है, कोई भी लॉ को उतना रिपील करना। हेलो, हाय हाय चंदू। तो वही है बस। नहीं, बस सर यही था, no worries. यही पूछना था सर, बस थैंक यू। सर मेरा एक और सवाल था, एक लाइक सेकंड, जो उन्होंने हाथ ऊपर किया था। Yeah, I think. Hello? I'll call you I back think up in a we meeting. Okay. गाइस पहली बात तो आपके फोन जब आप ओपन करोगे ना, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर एक बटन है, उसको दबाओगे ना तो तुम्हारा फोन जो है साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। प्लीज उसको दबा दो। Right. So I was saying that I think we should describe the SLA properly and as many like word and terminology involved, because I think a lot of people will have different in understanding what SLA is supposed to mean. We need to have a proper description of what SLA is, Right. what it is. Hazel ma'am will be, I mean, yeah, good suggestion from your side. We'll be going to the DOJ team notes below this after this article is done, which states something similar accordingly. So whoever feels volunteering in this, they can come up and prepare the note for it. या गाइस विल हैव द सेम सेशन टुमारो एज वेल, ठीक है। हम लोग आज थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है। विल गो थ्रू दिस वेरी क्विकली एंड अभी आप लोगों को, सारे लोगों को आई थिंक ये कॉपी मिल जाएगा उधर। यू गाइस गो थ्रू एट योर टाइम, ठीक है, आप लोगों को जब भी टाइम मिले। एंड इफ यू फील लाइक सम पॉइंट्स आर मिसिंग एंड यू जस्ट केम इनटू योर माइंड, आप कल दोबारा आइए, ठीक है। दोबारा विल हैव दिस सेशन अगेन एंड विल गो थ्रू द होल कॉन्स्टिट्यूशन अगेन, ठीक है। आपको कोई भी पॉइंट जो है अभी आपको समझ नहीं आ रहा है बट यू थिंक दैट इट विल बी अ गुड एडिशन, we'll definitely consider it. So it's not like today is the end. Okay, so let's go to the next part. Okay, so the 4th and 5th point एकदम टॉप में, ऑथराइज टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। ओके, जो मैंने आपको बताया था अभी कि मेयर्स ऑफिस के पास पावर्स होते हैं, दे कैन adjust the taxations based on the demands and supply, and obviously they can change the salaries, जैसे हमें salaries मिलते हैं वो change कर सकते हैं and all this stuff. फिफ्थ वाला क्या लिखा है, मेंटेन अ पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ लेजिस्लेशन। ओके, सो वट एवर द लेजिस्लेशन, ये तो बेसिक सा पॉइंट है, मतलब ये तो हम लोग भी रखते हैं obviously all the legislations of make it a public record. So basically कोई भी आके पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि एक legislation होगा जो छुपा के रखेगा अपने केबिन में, ठीक है। So they have to keep it public. Okay, so these two are very basic points, so उतना कुछ important नहीं है, but obviously we can discuss more. अगर किसी को कुछ भी objection है, you can tell us about it, otherwise we'll proceed. सर जो इस अपना थर्ड पॉइंट था उधर, जी जी, एक कैन यू टर्न द पेज इफ पॉसिबल? No. Yeah. So the third point on the establish criminal offenses and lawful penalties. So how yes. my objection is, how can they like establish criminal offenses? That's the work of DOJ. So क्रिमिनल ऑफेंसेस मीन दिस, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कल को बहुत सारे बैंक पे लोग डाका डाल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड देयर आर नो चार्जेस फॉर इट, ठीक है, टू एक्यूज द सस्पेक्ट्स फॉर बैंक रॉबरी, ओके, एंड स्टेट का बहुत नुकसान हो रहा है उस पर, राइट। पुलिस डज नॉट हैव अ चार्ज टू चार्ज देम. So obviously the legislative assembly cannot wait for the DOJ to file a PIL and then go through it to make it a bill and then make it a law or something like that. What they can do is, like, if they feel like that their economy and their infrastructure is getting attacked by some kind of people, so what they can do is, like, they can enact a law. Creating a charge is basically creating an extra charge that if you found doing any kind of bank robberies, you will be charged with this charge and this will be your fine amount. Okay, and they can also change the fines. For example, if they see that to maintain the economy and to reduce the crime rate in the city, if they want to increase the fines, they can. That is what it says. Okay.
Right, and DOJ comes under the state legislative assembly, right? आपको ये समझना है गाइज, पावर्स जितना असेंबली के पास जाएगा, ठीक है, असेंबली की उतना ही दिक्कत होने वाली है, बिकॉज कुछ भी इधर उधर होगा तो देयर विल बी प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ सिटी हॉल, देयर विल बी लीगल केसेस विल बी फाइल्ड, there will be lot of things, there can be chance of impeachment as well. So that will be kind of mayor's office. Generally mayor's office does not take these decisions without a proper consultation of DOJ, ठीक है, अपने आप से नहीं करता है, बट अगर उन लोगों ने किया तो हम लोग भी अपना हाथ खड़े कर देंगे, हम बोलेंगे हमें तो पता नहीं था, मेयर्स ऑफिस ने किया है, सो दे विल डू प्रोटेस्ट, दे विल रिप ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम देयर रूट्स, सो Right. it's the public that they will take care of the government that time. I have a suggestion over here. Yeah. If we can move the criminal offenses and lawful penalties just under DOJ, and it doesn't have to be a part of the state legislative assembly. Agreed with that. Okay. To Okay, so what we can make it as is like they can suggest the DA's office, okay, regarding any kind of charges. They can have a discussion with the DA's office or the police and all, and then the DA's office can file the need if it is needed to change the fine amount. Until Okay. unless Chief So that Justice the private approval. attorneys can also get a chance to oppose if they need. Yep. Right? Yep. Fine. Okay, just note it down, page. क्योंकि आई हैव अ पॉइंट सर, अगर आगे जाके कोई भी अगर गलत सरकार भी आ जाती है तो उसका फायदा उठा सकती है सर। एज अ पब्लिक वो सरकार को उखाड़ के फेंक भी सकते हो ना तुम सर, लेकिन अगर आपने जैसे बोला कि हम हाथ उठा देंगे लेकिन अगर हम ही हाथ उठा देंगे तो फिर पब्लिक भी कहाँ जाएगी? एट द एंड मदद तो हमें भी करनी पड़ेगी ना सर। I mean, my good sir, I would just like to point out every action has an equal and opposite reaction to it. So yeah, there can be things happening around it, but yeah, we can think about it. I'll have a very straightforward approach to constitution, to be very honest. It's right now the people present over here belongs to the judiciary and not the legislative branch of the constitution. So anything that deals with making law, making law comes under legislative version, but maintaining it and forming something new and stuff and upholding the one that is there should be kept under DOJ and should not be meddled with. All right, makes sense. Makes sense. Makes sense. So the mayor's office can suggest, the DOJ will look into it, and if it's something that we in our career or in our best interest do feel, because I believe that not everyone who is a part of the legislative assembly will have a good understanding of the law better than the DOJ themselves. So I think when it comes to decisions like this, it should be solely on the DOJ and not anyone else. Right. Cool. Makes sense. I'm okay with 4 and 5. DOJ team notes mentioned about who constitutes SLA, how members are appointed, elected, the terms, and whether the governor or chief justice has any legislative role. How they're appointed, I don't think DOJ can choose how they're appointed. Like we are not supposed to tell how they're appointed. I think we'll let the public decide it, or mayor should have a word with everyone and decide it themselves. So that's why I think it is mentioned यहाँ पे कि like decide who constitutes the SLA. Okay, so now पहली बात तो आप लोगों को decide, you guys have to decide कि SLA बनेगा कौन? Will it be only mayor's office, or will it be a combined of mayor's office, DOJ, PD, EMS, and everyone, all the departments together will create that legislative assembly? We need to decide the stakeholder charge. Yeah, so who have the basically, so suppose for example right now we have how many 1 2 3 4 5 6 7 8 people in the room. For example, let's say you 4 are from mayor's office. Okay, she's from PD. Okay, I am from DOJ, and these 2 guys are from, let's say one is from EMS and one is from the public, who is basically neutral. So mayor's office have their interest lies into same direction. Okay, whatever the mayor says. Okay, now suppose you try to bring up something which can ruin the whole city's economy and everything. So all these people, others who are not part of mayor's office, can oppose it basically, and cannot let the whole assembly to pass that particular bill or the law. Right. So I recommend we will need one representative from the mayor's office.
one or two Right. representative from the mayor's office. We need one PD representative, one EMS representative, one DOJ representative, and one civil representative. Exactly. So note these points. Okay, this will not be added in the maybe we can add in the constitution also, but I think this will be more over the when we have the legislative assemblies. There will be a separate legislation will come. Yeah, we need to prepare a separate document for the structuring in the process for that. But this is required overall just to understand why. We'll just mention it over there that it will constitute of PD, DOJ, mayor's office, and Yeah, civil sure. representatives. Yes. Yeah, yeah. Yeah, you can mention it in the top, the first line. Yeah. Now we'll go through the legislative procedures that मैं आपको थोड़ी देर पहले explain कर रहा था कि how bill कैसे pass होता है, ठीक है, and how we get the approvals, how emergency registration जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर mayors wait नहीं करेंगे हमारे bill pass होने का and all the stuff, they can do a kind of a quick thing जो यहाँ पे पास हो सकता है, but it is a temporary thing, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है temporary emergency legislation may be introduced अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बाकी तो आई थिंक इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स वही चीज है कि लाइक introduced before the SLA. Before introducing before the SLA, it should filed as a PIL and it should be heard in the court. ठीक है, उसके बाद उसको अगर कोर्ट से अगर आपको परमिशन मिलता है then it will become a bill and it will be present in front of the SLA. Okay. किसी को कुछ डाउट है इसमें? इंट्रोडक्शन मतलब कैसे बिल्स बनते हैं, वो किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर, बस मुझे एक सजेशन Okay. देना था। जैसे सर इसमें लिखा है कि स्पेसिफाई वेदर अप्रूव्ड रिक्वायर्स अप्रूवल बाय गवर्नर, चीफ जस्टिस और अनदर अथॉरिटी बिफोर बिकमिंग अ लॉ। यस। तो मैं तो कहूँगा सर इसको अगर चीफ जस्टिस और गवर्नर के हाथ में ही रहने दे तो वो गुड ही रहेगा, अगर हाँ ठीक है, एंड मतलब अप्रूवल के लिए, क्योंकि वो वही भी आई मीन वहाँ पे लिखा है इसलिए स्पेसिफाई वो हमें ही डिसाइड करना है, ठीक है, कौन अप्रूव करेगा, इट इज नॉट येट डिसाइडेड, ठीक है, कि कौन पास करेगा, दैट इज मेंबर्स ऑफ द एसएलए, कौन उसको फाइनल अप्रूवल देगा, दैट विल बी ऑब्वियसली वी यूज्ड टू हैव अ गवर्नर हु यूज्ड टू फाइनल अप्रूव ऑन ऑल द बिल्स एंड ऑल, बट अगर हाँ अगर चीफ जस्टिस को रखना है तो यू कैन राइट इट, बट यूजुअली इट यूज्ड टू बी अ गवर्नर, ओके, हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द बिल्स, ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशंस तो इट्स जस्ट लाइक व्हाटएवर इज इन द बिल, इट विल बी यू नो formally recorded and publicly published. So जब कोई भी बिल पास होता है from the either SLA or the DOJ or everything, there will be a press conference जहाँ पे हम लोग openly public को बताते हैं कि this bill has been passed and this will be the current law and whatever it is, okay, blah blah blah. Okay. I just request to refer to the team notes for this one because it is important. Yeah. Coming to that as well, exact voting process. I believe we will. I mean, my best assumption or my best recommendation would be, like we mentioned, for the executive approval. It's either going to be a governor or a chief justice. I believe one or the other, if they are weighing into certain things, if there is like one yes and another no, then the governor's input will be taken into priority than the chief justice. Or if both are inclining to yes, then it's a yes. If both are inclining to no, then it's a no. That is what I consider for voting process. And I will say that if these meetings can be happen on a weekly basis, then that keeps everything in the power. But again, I'm just a suggestion. Which meeting you are talking about? Sorry. Like SLA meeting. Okay, so it will only happen when there is a new thing to be passed, generally, mostly. Other than that, अगर कोई भी mayors will be busy, I think क्या बोलते हैं उसको, to have meetings with different owners or maybe whoever is coming to. No, I understand, but this is the only time where a civil representative can actually come in and present what they are facing or what the people in the city needs. Okay. So I think if we have it on weekly basis, then at least we can look into the state's need and we can push forward. It either can be done once a week or maybe once in 2 weeks. It's completely up to the chamber over here, whoever wants to say. Regarding publication requirements, I'll not say anything about it. The maximum duration, I would suggest maximum can be 2 weeks. But if it goes on, it's going to be based on the situation. And again, it's on the basis of governor or chief justice approval. It can be extended further. Extension of what you're saying? Emergency Publication.
Emergency. Okay, Emergency okay. laws, yeah. Martial law Oh, and all those things, yeah. okay, If applied. okay. See, I don't know Also, whether we'll have the emergency legislation or not. It's just mentioned. It can be removed also. Okay, in the final draft. Okay, so yeah. it's just mentioned here to give them a scope. If they don't want to accept, if the governor doesn't want to accept, he will just strike it off. Okay. Okay. No, but Alright. again, emergency legislation is coming by the approval of governor or chief justice, right? So if the chief justice says yes and governor says no, Acha, then okay. it's always Ha, gonna that is, recline to. yeah, if it is coming from governor side, that is different. But I thought like it's from SLA. Okay. No, it would be presented directly by the chief justice or the governor itself. No other authority, Okay. including SLA, would be directly having the authority to present it or make it there. It would be just from the governor or the chief justice. That's it. Hmm. Also, we can have a abstinence vote as well throughout, just so that whenever the time is right for a law or a thing to be applied, abstinence should be there for future review. Abstaining? Yeah. Yes, no, and abstaining. Mm-hmm. Pre-voting Definitely. Would that channels, yeah. that on the legislative side, yeah, definitely. But abhi tak, guys, we haven't come to the main part of the constitution. These are all we are discussing about how the SLA will act and how they. We Main can thing move is yet to next. come. Yeah, main I'm thing is more yet to come. focused on the amendments. Yep. You, welcome to the stream. Okay. Now there is another thing that he wants to introduce is the executive authority. Yeah, go ahead, Tej. Brief us about it. Yeah, the executive authority of the state of San Andreas shall be vested in the governor and government authorities established by law. So we have been talking about it throughout, and we have been building through it. So duties of the government, section 2. Please go through it. The government shall be responsible for administration of the state, public safety and security, enforcement of law, government departments and services, implementation of lawful legislation. Okay, I hope that's pretty much simple and clear to everyone. And Mhm. if there's any points that needs to be added, please let us know about it. And this is not for public, guys. Whatever we are seeing right now, this is for the most of the people who will be going for the elections, who want to lead the state as a mayor or something. They needs to know all these things. Okay, कि how a government runs, कैसे चलता है सरकार, क्या करना पड़ता है, उसमें बिल कैसे पास किया जाता है, फलाना ढिमकाना. तो it's not for the normal public yet. We haven't gone to that page of the normal public constitution. ठीक है, जहाँ पे लोगों को अपना हक के बारे में पता चलता है, वो अभी तक नहीं आया है. It is only about कि how a mayor's office can exercise their rights or what are the rights Right. they have actually. ठीक है, or how they want to run the government. ठीक है, accountability obviously every चीज लोगों को they have to be accountable for whatever the decision they make and all the stuff. Limits And on executive powers. uh, हाँ, okay, so basically obviously whatever is written over here, इसके अलावा और कोई और कुछ दादागिरी नहीं कर सकता. सिंपल. ठीक है, यही तुम्हारा yes. फाइनल डॉक्यूमेंट है, इसके बाहर नहीं जा सकते. यही तुम्हारा सिलेबस है. So accountability is basically impeachment is what I'm assuming. Right. Technically, it's that only, Yep. but in a different form and in a more executive presentation. That's it. Right. I'm seeing over here decide governor's powers. See, I mean, I'm gonna be very honest. I don't want governor to feel like they're the king of the city. It's sort of gonna be like governor's responsibility is to listen what the public wants and come up with ideas or scopes that we can help the city. And which is why the whole SLA exists, where they come in and we all discuss about what can be done. So Exactly. So governor's it should be power a should collective be, decision. yeah, it should be a collective decision. There is no sole power that will be vested on them. It is going to be the entire office that will decide together. Succession, again, by voting. Removal, impeachment, again, based on accountability. You have already mentioned over there. I don't think there's any additions to that. Emergency authority, I would recommend Chief Justice to take over this part. Relationship with the DOJ and judiciary, I mean, that comes with the governor's work.
not just with DOJ and judiciary. I think it's their responsibility to maintain relationship with everyone. Right. यप सो मोस्ट ऑफ द थिंग उन्होंने बता दिया है. सो बेसिकली आई मीन जिन लोगों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको डाउट्स है, आई एम जस्ट गोना क्लियरिंग इट आउट. सक्सेशन आपको पता है, मतलब अगर एक मेयर चला गया तो ऑब्वियसली दूसरा मेयर वोटिंग के थ्रू ही आएगा, तो उसका लड़का राजा नहीं बनेगा. ठीक है. दूसरा है रिमूवल इज लाइक अगर कोई मेयर मान लो पकड़ा गया कुछ करते हुए, ठीक है, एंड उसको रिमूव कर दिया जा रहा है, तो उसकी जगह कौन मेयर बनेगा. Will there be another election or will there be kind of deputy mayor will become the mayor or something like that? तो वो अभी डिसाइड करना है. ठीक है. तो वो ऑब्वियसली वो हम लोग वो भी डिसाइड करेंगे. एंड नेक्स्ट थिंग इज लाइक इमरजेंसी अथॉरिटी. सो बेसिकली कल को अगर मेयर को हार्ट अटैक आया और कल को ठिल गया, मतलब सॉरी मर गया, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी जगह कौन लेगा. सेम थिंग लाइक दोनों अलग अलग सिचुएशन है, बट दोनों में एक इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होगा अगर मेयर का, तो क्या होगा उसमें. तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग आई थिंक बात करेंगे. इट विल बी मेंशन्ड इन मोर ऑफ द दूसरा डॉक्यूमेंट वेयर इट विल बी मेंशन्ड ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पावर्स है एंड एवरीथिंग. बट या वो सब चीजों के बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं कि व्हाट वी कैन डू. ठीक मैं है. सजेशन दे सकता हूँ इसमें? बता दो. We'll मैं write it ये down. अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे नजरिए में ऐसा होना चाहिए कि फॉर सम टाइम 15 से 20 दिन के अंदर आप 15 से 20 दिन के लिए आप डेप्यूटी मेयर को मेयर की पावर्स दे सकते हो, और उसी 15-20 दिन के अंदर अंदर हमें इलेक्शन को कंडक्ट करना चाहिए. Exactly. So that is one of the suggestions. Someone Sorry says to कि like interrupt, but can I have food yeah, and water, please? मेरे पास भी नहीं है यार. मेरे को भी चाहिए. I think पे there's वेंडिंग मशीन है शायद बाहर. yeah, there's I a have, guys. staff I room have. around here. I have one second, give. We just need a little quick break. मैं लेकर आता हूँ बाहर से. रुक जाओ. No, guys. I have. If anyone wants. You have तो क्या दे रे, दीजिए. तेरा 24/7 का दुकान है, तू साला खाना पाना नहीं ला पाया हमारे है, लिए. किसी ने पूछा नहीं मुझसे. अभी तो पूछा उसने. अरे ये सुना नहीं. Thank I mean, Mr. Dave, you should be Thank you. doing things without asking, you know. Yeah, I think we should. That's how the DOJ Thank should you, work. thank you, thank you, thank you. Next time I'll be bringing everything for you guys. Don't worry. Next meetings on क्या me. हुआ? बोलो next meetings on me. सब कुछ लेके आऊंगा एक एक के लिए कॉम्बो पैक. अब मीटिंग जॉब होगा मिली, अभी तो देव. पैसा है. यू हैव टू क्या बोलते हैं उसको, ट्रीट देना है तेरे को. ठीक है. मतलब Is खाने there पीने का ATM जिम्मेदारी machine तेरा. anywhere? I can give you some I food. have a cash. I have a देव cash. के पास है, देव के नहीं. पास है. यू कैन जस्ट टेक द फूड एंड Water, please. Thank you. Patek said the next 2 articles we should do a speedy trial for it. And या move on लेट्स गो. quickly. जुडिशियरी द मेन थिंग. ठीक है. अभी हमारी औकात के बारे में बात होगा यहाँ पे. ठीक है. Okay. Let's go, quick. सर बस Guys, इतना औकात होना चाहिए कि पीडी को नीचा दिखा सको सर. खाली दिखा सकते हैं, बट ऐसे नहीं करना, हमें भी देख के चलना वो पड़ेगा. दिखाने की जरूरत नहीं है वैसे. ये तो लिखा हुआ है जुडिशियल पावर ऑफ द सेनेट शैल बी इन द सुप्रीम कोर्ट. आई डोंट थिंक देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट, बट आई गेस इट विल बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली. आई गेस. आई डोंट नो, बट हाँ ठीक है. highest I'll court just- of the state. I'll And, just mention it over there, vested in the Department of Justice instead. हाँ वही कर दो. इट्स फाइन. Yeah, नॉट that's fine. हाँ ठीक है कर दो, वही कर दो. Okay, next we have the judicial independence. Yeah. So it says judge shall exercise their duties independently and shall decide cases according to number 1, this constitution. Obviously. Number 2, ठीक है. applicable laws. Number 3, valid regulations. Number 4, recognized judicial precedent. Does anybody wants to say anything on this? ठीक है. इनको समझा देता हूँ. इस शॉर्ट में है ये चीज कि कल को मान लो तुम जज बने, ठीक है, तो तुम्हें कैसे काम करना है, हाउ यू वर्क. ऐसा नहीं कि वो मेरे फेवरेट पुलिस ऑफिसर को किसी ने किडनैप किया तो मैं उसका केस लूंगा और उस किडनैपर को मौत की घाट उतारूंगा. तो ऐसे नहीं होता है. ठीक है. आपको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज करने, आपको सारे लॉज एंड रेगुलेशंस देखनी, सारे एविडेंस देखना है, और केसेस भी आपको अपने क्या बोलते हैं उसको अनबायसली चूज करना है कि कौन से केस पे आप असाइन होंगे एंड कौन सा केस आपको दूसरों को देना है. तो इट्स बेसिकली टेल्स अबाउट मोर अबाउट हाउ जज विल बिहेव. ठीक है. Next, jurisdictions. Right. Section 3, jurisdiction. The court shall have jurisdiction over number 1, criminal proceedings. Civil dispute criminal proceedings is basically
when the person is involved with criminal charges. Civil dispute is not criminal charges, but like, two persons just fighting over something. C is constitutional matters, something that is violating the constitution. D is government and administrative disputes, which is very straightforward. It says that if anyone made EMS or PD is having any sort of dispute, court will look into it. Warrants and judicial appeal application, I hope you guys are aware of it. Appeals and other matters assigned by the law. Any questions? No. Right. Moving on to the section 4, judicial orders. Courts may issue lawful warrants, bail orders, injunctions, judicial directions, judgments, other remedies authorized by the law. I am assuming one should be a point of like a gray area. I don't, if you can explain injunctions, please, Tej. Injunctions are basically laws wrapped around description. Example? So, I mean, for example, a particular person, for example, Miss Hazel has done a heinous crime. She was found to be charged under a HUT charge. HUT charges are basically held until trials. But the PD needs more time to investigate the overall scenario and finally convict her. In the meantime, the judge has told that I'll be putting forward an injunction upon Madam Hazel that she cannot do this particular act. It's That's a an injunction. Yeah, it's a easier form of court order. Consider it as a court order. Right. Okay. It's a court order. So मान लो कि कल को रेस होने वाला है बाहर and PD has given order to do the race. ठीक है. एंड वो फिर कोई बंदा जो है कोई बिजनेस ओनर्स आके कोर्ट को इन्फॉर्म करता है एंड देन कोर्ट कैन पुट अ काइंड ऑफ स्टे ऑर्डर ऑन द रेस और व्हाटएवर. मतलब इट्स काइंड ऑफ समझ लो कोर्ट ऑर्डर. ओके. ठीक है. टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग फ्रॉम हैपनिंग. ओके. नाउ देयर आर अदर थिंग्स आल्सो व्हिच इज नॉट हियर, but there will be lot of other things. There will be if you need, suppose कल को पुलिस आके बोल रहा है lawyers को कि I need someone's bank statement, they have to file the subpoenas on that. I need someone's phone record, I need someone's this that. So ये सब चीज भी कोर्ट के साइड से इशू होगा तभी उनको वो मिलेंगे. ठीक है. They cannot just simply go and access anyone's record like that. Yeah, minded as long as they are lawful. Okay. Yeah. But guys, just letting you know, you need to set the precedent before asking for anything. You cannot just come to the judge and say, give me the phone records because I need for this reason. Okay. There needs to be a precedent or build up to it. That's it. Right. आपको समझ में आया ये चीज क्या बोला उसने प्रेसिडेंट वगैरह? नहीं समझ में? कोई बात नहीं, बता दो. We can explain Precedent now. with a CE. Okay. Yeah. बेसिकली कल को मान लो आपके क्लाइंट के व्हाटएवर इट इज कि आपके क्लाइंट का फोन रिकॉर्ड्स पुलिस बोलता है कि मेरे को चाहिए. ठीक है. तो आप ऐसे ही कोर्ट के पास आके नहीं मांग सकते कि मेरे को चाहिए. आपको पहले कोर्ट को साबित करना पड़ेगा कोर्ट के सामने आके कि अगर ये फोन रिकॉर्ड मेरे को नहीं मिलता है तो मैं इस बंदे को पकड़ नहीं पाऊंगा एंड ही कैन डू सच बिगर क्राइम्स एंड ही कैन बी इन्वॉल्व्ड इन सच बिगर एक्शंस व्हिच वी कैन नॉट स्टॉप. ठीक है. So for example, the court will give you a permission with setting up a precedent कि like अगर कोई बंदा इस particular हरकतें करते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है, तो इसके लिए जो भी subpoenas होगा वो डायरेक्ट इशू कर दिए जाएंगे to prevent any further crime. उस precedent को बाद में कोई भी lawyer यूज कर सकता है and they don't have to wait for a hearing. They can simply bring the precedent to the court and the court will sanction the order. ठीक है. समझ गए आप? Yep. Yeah, but you need to start somewhere. हाँ. Yeah, For it's same more for like- same for the warrants also. ठीक है. Can you please give me some food? Sorry. देव से ले लो. देव से ले लो. देव Right. के पास. So I'll continue. It's more like you are not allowed to ask for it until and unless it is a very crucial piece of evidence that you need it in order to prove something. So that doesn't mean that, let's say your situation is happening and if the phone record is like, is something that can wrap the case in 1 second. So that's why you guys will be like, why not just take it? You are not to do that. You should only do that if there is no other thing that can help your case out. Only then you can ask for remedies that can be authorized by the law. Yeah. Any questions? No. No questions. Okay, section 5, judicial conduct. Judges shall maintain impartiality, professionalism, confidentiality, and independence.
It's pretty straightforward how judges should Yeah. behave. Mm. DOJ team knows define judicial ranks. I think Chief Patak sir Justice. would be better to define that. He should be Yeah, the one yeah. who helps नहीं us अभी with हमारे the. पास देखो we have kept it very simple. It's just like judge, prosecutor, attorneys, and that's all. And paralegals, I guess there is paralegals Okay, here. that works. If So there there are is no any. more ranks. There is nothing like DA and ADA, which will come Mhm. soon. Okay, Mhm. but not yet ready. There'll be special privileges of DA, obviously, and not which does not the public prosecutor will have. But obviously, it will come when we set up the DA's office, okay, properly. I mean, this particularly states about the judges' chamber for the time being. Yeah. So if there's Okay. anything you want to add, that can be done. But apart from that, nothing else. Yeah, so appointment removal, that's everything is KD Pathak's headache. We'll Point of take care of that. Okay, now coming to the Department of Justice, I think, yeah, go ahead. आप लोग. Department of Justice, Section 1 Establishment. The DOJ shall administer the legal and judicial framework of San Andreas in accordance to the Constitution and applicable law. No inputs needed here. Section 2 DOJ Authority can establish regulations concerning code administration, attorney practice, state bar licensing, legal procedure, departmental standards, and legal records. Pretty straightforward. I don't have any questions. Anyone has any questions? No. Section 2? No. If there's any addition you guys want, we can look up to that as well. But yeah. Right. I'm assuming nobody has any. Okay. Section 3, separation of powers. The DOJ shall not exercise powers reserved exclusively for the legislature, executive, or judiciary. Right. Guys, there is a very thin line between being a lawyer and being a judge. Though judge holds lots more of responsibility to try, but so try to understand if you're in the DOJ, you don't hold the power to prosecute people directly until and unless they have your consent or you have their consent. Try to understand only the judge has the power to declare them guilty or not guilty. You are just there to help them out With the in return paperworks. in return of a So, monetary benefit or whatever. yeah, so it is basically, आपको बता देता हूँ, ये आपके लॉयर के जो एटिकेट्स है इसमें बहुत काम आते हैं, ठीक है. आप जब मान लो आपके whoever you are representing, be it from the PD side, be it from the मतलब normal private attorney side, you cannot incriminate someone. You cannot just tell कि like भाई तूने ये काम किया है, तू guilty है, ठीक है. You cannot tell that. That is court's decision. That is the judge's decision, and only judge will take that decision. You cannot you can only accuse someone with something कि you can be accused, but you cannot prosecute. जैसे उन्होंने बोला कि you cannot declare, you cannot declare anyone's like whether they are guilty or not, ठीक है. ये बेसिकली आपके लॉयर एटिकेट में ये काम आएगा, बिकॉज आप जब भी आप क्लाइंट से बात करोगे एंड इफ somebody in front of you being a lawyer says that भाई तू ही guilty है, मैंने देखा है तेरे को, whatever, you can just simply tell them that that is not the decision that you will make, that is the decision that court will make. Okay, right. So in the opening statements also we cannot say that we think that this person is guilty. We have to you say have to say that you have all the evidence to show that this person have committed the crime, ठीक है, but you will never say that this person is guilty. Okay, you will say that we have all the evidence to show that this person have committed the crime, and will show the court as well, ठीक है, and will let the judgment to be decided by the court. That's all. Okay, same for the private attorney also. Private attorney will say that will prove that my client have not done this kind of things. My client is is क्या बोलते हैं उसको? Innocent for all the charges that has been placed and all the stuff. The court will decide whether he is guilty or not guilty. Okay, got it? Yeah. Yes. Okay, clarify exactly what DOJ controls administratively. Is all the judicial rights. Okay. You guys do understand the three branches of government, right? Judicial, legislative, and executive. The DOJ falls under judicial. The governor's office and mayor, they fall under legislative, and the PD falls under executive authority. That'll be my phone. Yeah.
There's a button on the left side on the screen at the top. You can just press it to make it silent. I call it the action button. Yeah, exactly. All right, guys, moving on. Article Article 5. 5, legal profession and state bar. Section Since 1, someone right was to counsel. asking how Mhm. to talk to the PD, this is the part which needs to be exercised by you guys to be put forward to the PD. Right to counsel, guys. Okay, before you start, Article 5 is all about you guys, ठीक है? जैसे Article 4 is all about Article 4 and Article 3, I guess it was all about the department and the judge. अभी आप लोगों के बारे में बातचीत होगा कि आपको कैसे काम करना है, how you will go and approach people, and what are the rights that you have to approach people. Okay, go ahead. Right, so every accused person shall have the right to obtain representation by a licensed attorney in accordance with applicable law. Exactly. Which bottom line means that everyone who's inside the cells or anyone who needs a legal advice, a licensed attorney can go and represent them. Yeah, so to the private attorneys, अगर कोई आपको बोले या कोई पीडी वाले आपको बोले कि नहीं तुम्हें मिलने नहीं देंगे तुम्हारे क्लाइंट से, you can just simply show them that this is the line, Article 5 Section 1, right to counsel. You can just tell them that particular phase. Okay, they will understand. ठीक है? किसी को कुछ डाउट है? No. All right. Public prosecutors cannot represent criminals, right? Public defenders can. Public defenders can, prosecutors cannot. Okay, public prosecutors' job is to represent the state. Yeah. And right. It's just prosecutor. There's nothing called public prosecutor. Right, right, prosecute. Section 2, State Bar Association. The State Bar Associations regulate legal practitioners and may issue license, conduct examinations, establish professional standards, investigate misconduct, suspend and revoke licenses in accordance with law. So I'll take it up. Abhi we don't have a bar council. Once we have enough private attorneys, okay? Once we have around more than 5 to 6 private attorneys are roaming around in the city, then we will set up a bar council जिसमें आप लोगों का ही खुद का elections होगा अंदर, internal elections, and you will decide a board or a chairman. Okay? ठीक है? So ये आप लोगों के ऊपर होगा, how you handle, simply like state legislative assembly जैसे आपने बोला कि आप लोग भी एक आपका बोर्ड होगा, आपका चेयरमैन होगा जो डिसाइड करेगा किसको बार लाइसेंस देना है, किसका रिवोक करना है, किस पे कैसे एग्जाम लेना है, बार एग्जाम कैसा होगा उनका, तो all the new lawyers will come and join the bar council for that. ठीक है, ये आप लोगों के लिए है. Go ahead. So you guys will be responsible of issuing license. You guys will be the one to conduct examinations for them. You guys will also establish professional standards, what each and every attorneys are supposed to behave like and present themselves. If anyone is found in misconduct, or let's say some people who are overly aggressive and violent and is lawbreaker, you don't expect a lawbreaker to be uphold the law standards. So that's again up to the bar council to decide if they want to remove It that would be person reviewed or not. and Yeah, so suspend or revoke license comes right after that, which is something the bar council can decide. Section 3, attorney standards. All licensed attorneys shall comply with the attorney practice manual, state bar regulations, count procedures, and applicable law. Any inputs? Patak sir. Which point? I'm sorry. Section 3. Section 3 would be presenting a attorney all license. Attorney practice manual, yeah, that I'll share. All the attorney, there's a attorney guidelines. I'll share it with you guys. ठीक है? आपको वो guidelines को through follow करना है. And आपका जब भी bar council बनेगा, जब तक bar council नहीं बनता, you are part of me. Basically, you are working under me. Then I will take care of it. If there is any kind of summoning or anything is required, if you are not following your attorney guidelines, ठीक है? There is a proper manual for that. You can, I'll share it. Right. Section 4, there is. In section 2, last point, suspended or revoked license is in accordance with law. It's what for the bar license. If an attorney's bar license has been cancelled, he won't be allowed to practice ever again, right? Nothing like that. That will also be decided by the bar council, how they want to do. Yeah, they can again apply for a bar exam if they want to, give them 15 days of break or something like that. Suspension. After that they can apply again. Okay? No, that is a suspension is different. Suspension that you don't have to apply. You are just suspended. You're not allowed to practice for 15 days. After 15 days you can practice. But if it is revoked, then you have to give the exam again. So revocation also have a period, right? After a certain period we can
try to That is take the bar again up examination to again. the Yeah, head of that's the what bar. that's what I said. Like Yeah. after 15 days, that will be decided by bar council. For the time being, we are not putting that kind of things in my DOJ. We are not revoking and suspending. All right. But yeah, that will, if anything like that incident happen, that I have to do that suspension or revocation, I will mention that for how many days and everything separately for cases. Just a heads up that if you are not holding a license, an active license, you are not allowed to represent any client. Yeah. Yeah. So that's basically written in the DOJ team notes, and also we can skip the section 4. Patak sir, I was not aware of this, so let's not read it. Yeah, the state shall Okay, not require to section maintain 4 a we are removing. there is no separate public defender's office. Yeah. Can remove it. Decide attorney eligibility. That's against for the bar council to decide right now. I think everyone's welcome. Licensing procedure, oath, rank. Again, these are all Katie Patak sir's License, license procedures, oath ranks, I'll put it. Disciplinary appeal and whether counsel is mandatory for particular proceedings. Right. Right. Okay. Let's Anyone, come to the any government input? licenses. I think we're good, I guess. Anything is fine? Anything is any doubts, guys? No. Okay. Let's go to the government licenses. Yeah. Section 1, licensing authority. License shall be issued and regulated by the competent authority established by law. Which has not been established yet, but would be done in the future, which is mandatory to be done. Yeah. So यहाँ पे बस लिखा हुआ है कि वहाँ पे क्या लिखा होगा, ठीक है? तो डोंट टेक इट एज लाइक यही लिखा होगा. इट्स लाइक वहाँ पे प्रॉपरली लिखा होगा. जब वो अथॉरिटी डिसाइड हो जाएगा तो वहाँ पे इट विल बी मेंशन इज लाइक लाइसेंस विल बी issued and regulated by this particular person. Maybe let's say DOJ through the judges will issue the licenses for such as like there will be multiple type of licenses. For example, hunting and fishing, there is no license yet. But if the mayor's office wants to put a license on hunting and fishing to prevent the illegal huntings and illegal fishings and all the stuff, they can put it, but not yet. There is no bill passed for that license yet. May I come in, sir? Aajao. Right. I mean, regardless, I would suggest if आजाओ. licensing. आवाज नहीं आ रही क्या? Come in. गजूदर भाई आ You जाओ. can come in. You can come in. हाँ, ये हमारा बिना पेचेक का क्लर्क है. ठीक है, तो अगर आपको कोई भी अगर मैं शहर में नहीं हूँ तो आप गजूदर भाई से कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प डायरेक्टली टू मी. I was about to suggest that the licensing authority should stay under DOJ. Suspension and revocation. So suspension, revocation, I'll just tell you right away. There will be few licenses which police will have the authority to revoke with proper evidences, and that can be reissued by the DOJ. Where I think there will be a particular clause will be decided, which will be mentioned in this particular section. कि आप कितने दिन बाद आके आप रीइशू करवा सकते हो कोई भी लाइसेंस वगैरह, एंड हाउ इट कैन बी रिवोक्ड, एंड अगर रिवोक होता है तो रीइशू करने के लिए कितना पैसा लगता है, व्हाटएवर इट इज, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड. ओके. Yeah. Right. So there should be a prescribed procedure for it, which will come along whenever a license for a particular thing is required, suggested by Judge K.D. Patak. To be fair, I think we should keep Article 6 for the government licenses. As regulated by the competent authority. Or PD if there are sufficient grounds established for it. And but I'll say we should keep this one instead of adding it when the licenses comes in. Food. Do you guys able to see the laser? Yeah. We can see the Yeah, we can. Yes, sir. Crazy. Oh no, I didn't know that it is there. Okay. Anyway, let's go to the other page. Food. I'm out of food. No. Anyone has food? I'm gonna get food. गजूदर भाई थोड़ा खाना पीना. Same here. I'm in front if anyone needs. Yeah. Right. Section 3, types of licenses: driving license, weapon license, business, pilot, fishing, hunting, state bar, other license. We can remove all of them. Yeah, so right now there are no licenses, okay, except the driving license. Okay, so all these licenses will come one by one, and this section will be modified a lot of times. Okay. Yeah.
So आपको जब भी ये modification होगा आपके legislation में, it will be published for the public to let them know that there is a change in this particular licensing and there are these many licenses are available. Currently, there is only driving license. Okay. Yeah. Patik sir, could you just read the DOG team notes and explain it to them what we had? Create a separate schedule listing. मेरे को दिख नहीं रहा है. Create a separate schedule listing each license, issuing authority, grounds for suspension, revocation and appeal procedure. Okay. So basically what he is saying is like कि हर एक license का हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा there is only one section for issuing, revocation and everything. But उसके अंदर हर एक section, हर एक particular license का अलग-अलग issuing and revocation का policies mentioned होंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल हंटिंग लाइसेंस कैसे इशू किया जाएगा, हंटिंग लाइसेंस कब रिवोक हो सकता है, तो उसका अलग लिखा होगा. उसके बाद वेपन लाइसेंस का अलग लिखा होगा. तो ऐसे ऐसे अलग अलग करके लिखा रहेगा हर एक पर्टिकुलर लाइसेंस का. वो जब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे लिखा हुआ है. ठीक है. Someone please go through the article 7. I'll be back in 2 minutes. Yeah, I would recommend if you just add on this one types of license. This article may cover number 1, driving license. And this is a subject that can be like, like as a term that can say like, as and when like, necessary more licenses will be added under this section. If you can just add that, so then we can have a concrete building block and we'll keep on adding it in the near future and we can just let people know that it was already mentioned in the Constitution. Sure, works. Will do. Article 7, rule of law and common law. Okay, Guys, interesting this is part. very important. Common law is something you guys need to understand what it is and what is the rule of law. This is the basis of working of the law throughout, which needs to be considered highly at the topmost priority. Right. Please read it. Yeah. The second word for common laws are also known as case laws. Yeah. Your section 1 is rule of law. No person shall be arrested, prosecuted, or punished except under lawful authority. Yeah. Pretty straightforward. It tells exactly Guys, what any it has to. confusion for it? We'll go very slow with this one Yeah. because it's very important. Is any confusion for it? Please let me know. No. Sure. Yep. Right. Section 2, common law principles or case law principle. The courts may apply recognized common law principles and judicial precedent where legislation does not fully address a legal question. Common law shall supplement existing law and shall not be used by authorities to arbitrarily create criminal offenses or punishments. This is important. You guys might have question. I will not make fun if you guys do have it. So if you do have a guys, question, ask ask it. anything. This is common law is really important because it's something that will not be mentioned in the Constitution. Tej. Yeah. Tej. I'll give an example over here. There is something known as Miranda rights. Yeah. Miranda rights comes from a common law that case was laws. back in I'm forgetting the year, but it was 64. Miranda 64. Yeah. Yeah. It was Miranda versus Arizona. Okay. Now Yeah. we don't have to mention that in the Constitution to tell people that right They exists. also could, yeah. So certain law will come from a case law that have happened in the mainland US. That will automatically derive from there, and we'll mention it over here. I recommend that we have a repository of all the common law that will be taken effect in this city. If you want me to help it, I have some of the common laws that I can send forward. Yeah, you can do that. Yeah, you can. I also have one set of common laws which are based from the Indian subcontinent, just for understanding it better, as most of you are from the not from the not like American part of the world. So yeah. Right. Yeah. So for now, the most well-known case laws are Tennessee versus Garner, Terry versus Ohio, Pennsylvania versus Mims, Wyoming versus Houghton, Carroll versus United States, and Miranda versus Arizona. These are something that usually stays. There's any confusion with the common law thing? But anything? When we are going to discuss about common law, like in details, then I'll tell you each and every common law specifically. But
For this one, do you have any questions? No. Okay. Section 3, judicial precedent. Previous judicial decisions may guide future cases where court considers them relevant and applicable. It's very intuitive what it's saying. Any decisions that the court has passed earlier can be used as a direction to judge the next cases or the next incoming cases that can proceed further. So basically, guys, from this point, we mean to say the case laws. Yourself, and it would be a really good upliftment for you. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल को कोई लॉक पिक लेके किसी अंधेरे में किसी घर के सामने पाया गया तो उसको बर्गलरी का चार्ज लगा सकते हैं कि नहीं, दैट प्रेसिडेंट यू कैन सेट. ठीक है, यू गेटिंग इट? Provide the fact that you have present enough evidence. Obviously, yeah, exactly, yeah. So that precedent you need to set. ठीक है? Yeah. Please, can you change Next page. Right? Yeah, next page. Yeah, just a second. How many pages are there? We are like 24, I think so. No, not 24. Damn. Oh my god. Determine Okay. whether, that's why we're gonna do a quick rush, okay? Yeah, guys, this is very important DOJ team notes. Read it and let me know what you guys understand about it. This is basically what we call the amendments, okay? Section 1, freedom of speech, expression, and assembly. Miss Hazel, just before that, the DOJ team notes is important. Right. Determine whether precedent is binding, persuasive, or dependent upon the level of the court. You are good to explain it. What does that mean? I just want to have a better understanding of what these guys are understanding from this, just so that I can understand what should be explained. Guys, please, if anyone wants to volunteer explaining this. You're talking about this page, or is No, that the DOJ team note team- was for the previous page? DOJ team note was for the previous one. Upload. Right. अपलोड तो मुझे समझ नहीं आ रहा, देख ही नहीं रहा. So it says determine whether precedent is binding, persuasive, or dependent upon the level of court. Yeah, please go on. Please go on. Whoever wants to explain. I have nothing to explain. Guys, you understood what that means? Okay, these are kind of amendments. ठीक है, आप लोगों को पता होगा कैलिफोर्निया कोड में पहला वाला जो अमेंडमेंट 1 से लेके 2, 3, 4. ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, ये बोल रहे थे ना तुम तेज? नहीं. He was talking about DOJ team notes. अच्छा. Determine whether the precedent is a binding. Patek sir, could you explain it to them? मेरे को दिख जाए पहले फिर. सबसे ऊपर सर, सबसे ऊपर एकदम येलो. Determine whether precedent is binding, persuasive, and Precedent is binding, persuasive, and dependent upon the level of the court. Yes. Patek sir, this is very important. You also know why, because things happen. No, I'm not aware about what things have happened, but I don't know how to explain this. ठीक है, देखो, explain. I don't know. Just correct me, okay? If I'm going in the wrong direction, I think what he meant to say is like city में आपको भी पता है, हमें भी पता है. There are things which is limited that you can go into. I don't know. Am I going to the right direction, Tej? Yeah. Okay. So कल को तुम ऐसा ना बोलो कि भाई मेरे क्लाइंट के पीठ पे दर्द हो रहा है, ये देखो पीठ खोल के दिखा दिया कि भाई मेरे क्लाइंट पे पीठ पे ऐसे छेद है, whatever it is. ऐसा मत करना कोर्ट पे, ठीक है? Your arguments should be, I mean, क्या बोलते हैं उसको? Adjusted to the मतलब cities things, okay? मतलब just to win the case, don't bring up stupid arguments in the court, जिसका हम भी कुछ हल नहीं निकाल पाए. समझ रहे हो? उसमें ना तो हम कुछ बोल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे. If you are getting it, you are getting it. ठीक है? समझ गए सर, समझ गया. मतलब मर्यादा में रहना है, मर्यादा में रह के. मतलब जब आर्गुमेंट कर रहे हो तो सोच समझ के करो कि भाई
ऐसा ना लगे कि भाई ये जीतने के लिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कोर्ट में, ठीक है? मतलब किसी भी हद तक गिर सकता हूँ। नहीं गिरने की बात नहीं है। देयर आर फ्यू टर्म्स व्हिच हैज बीन यूज्ड इन द पास्ट कोर्ट केसेस एंड ऑल द स्टफ, जिसमें ना तो आपके ऑपोजिट काउंसिल दे हैव एनी वर्ड्स टू डिफेंड इट, ना जज हैज एनीथिंग टू स्टॉप इट, सो वी हैव टू स्ट्राइक इट ऑफ, नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट, ठीक है? आई थिंक फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट Somewhat, हर yeah, बार पंजिम में it's नहीं that. हो सकते बाबा के सत्संग में. Sometimes ठीक he है, has to be somewhere else. ठीक है, समझ गया। Yeah. Moving on, please, Miss Hazel. Yes, Bill of Rights, Section 1, freedom of speech, expression, and assembly. Every person shall have the rights to freedom of speech and expression, peaceful assembly, publication, and petition of the government. Reasonable restrictions may be imposed by law of public order, safety, prevention of violence, and protection of rights of the others. In simple words, everyone can, they have freedom of speech. They can say whatever the fuck they want to say, like how I did right now. They can express whatever they want to. They can protest peacefully. They can publicize whatever they want to, and they can always send in petitions for the government, whatever they want. There can be some reasonable restrictions imposed by the law for public order. Just because you guys have a right to assemble and protest doesn't mean it has to be violent. So law enforcers can come in, and there can be restrictions that can be set up. So it is sort of like avoiding Section 1 to spread to a violent or aggressive nature to it. Yeah. Right. So basically, guys, your freedom of expression in speech should not affect another individual. It That's should why not the violate government. someone else's freedom. Yeah. So that's why the government has the right to impose laws as well, accordingly. That's it. Okay. Any confusions? No. All right. Moving on, please, ma'am. Section 2, right to possess arms. Arms doesn't mean hands. Arms, we are talking about guns. A person may possess and carry firearms only in accordance with applicable law and licensing requirements. If they have papers to prove it, they can carry the gun as long as the paper says they can. By paper, we are talking about license and legal documents, not just any piece of paper. The government may regulate firearms in the interest of public safety if and only if the city is well known that there is a lot of people around Practice roaming around happening, with yeah. guns. And for your information guys, this जो point है right to bear arms, it's not yet there in the city. अभी तो constitution ही नहीं है, but वो अलग बात है. But if it is coming in the constitution, it might be hidden. It might be It's added gonna be in a later black bar. in the constitution. Yeah. Okay. Okay. Right. The government may regulate firearms in the interest of public safety. Section 3, protection against unreasonable search and seizure. Every person shall be protected against arbitrary or unreasonable search and seizure. A warrant shall ordinarily be required for when prescribed by law. Exceptions may apply in exigent circumstances, including immediate threats, active pursuit, or a risk of destruction of evidence. I'll go one paragraph at a time. The first one, every person shall be protected. That means without any reason, a person will not be searched and their items will not be seized. Okay. If anything is needed from a person, if a search is required or if any seizing has to carry on, there has to be a warrant that will be given by the court to the person who is conducting the search and seizure. It will be given to them. Without that, they cannot. Exception can be there only at few circumstances, only if an immediate threat is involved or if the person was in an active situation. By active situation, I mean like if there's a bona fide evidence, a probable cause is what we call it, is there, or a risk of destruction of evidence. If we think that the person might destroy the evidence, then yes, at that moment, we are allowed to enter their private place and by the private property, and we can seize that item if it's needed. And guys, exigent circumstances would be defined separately, which is basically, in simple words, special circumstances in which people would be searched without any consent. Okay. Any confusion, guys? No. Right, moving on, ma'am, please. Section 4, protection. Yeah. Even if we don't have a warrant for Tej's house, but we knew that he's gonna burn the evidence or like
he's going to hide the evidence somewhere, so we can directly breach him without No. Not You cannot. exactly. Again, destruction of evidence is something that you need to prove to the court. If you cannot prove to the court, you just can't just barge in. You can't just go into the court and be like, I had a reason of belief that he's going to do it. Up until you do not have a specific proof to say so, you cannot enter into anyone's property. You But need to have let's a solid backing for doing anything in this circumstance. If you are Okay. violating this right Sure. directly, you would be harming you directly. This So is I do for a have good knowledge of yours as a private attorneys because police might do mistakes, okay? पुलिस की yeah. गलती हो सकती है बट तुम्हें अच्छे से जानना चाहिए और पुलिस के पास भी आपको थोड़ा सा उसका जानकारी भी लेना चाहिए कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस द पुलिस आल्सो कैन एंटर द प्रॉपर्टी, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि भाई हर बार प्रॉपर्टी में घुसने के लिए वारंट लगेगा. अगर अंदर कुछ हो रहा है ऐसा कुछ which the police thinks that it can put a threat to that person's life and the police is basically able to see the crime is happening inside, then they don't need a warrant, they can simply go Bonafide inside. evidence. Okay. Yeah. One more thing, जब फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसिक्यूटर है वो एक वारंट के लिए जज के पास अगर जा रहा है देन प्राइवेट अटर्नीज उस चीज के अगेंस्ट में उनको ये कर सकते हैं ना, like No, argument it कर is सकते going to हैं be ना? a bona fide conversation or a confidential thing amongst the judge and the prosecutor. I'll tell you how the warrants work. Warrants are not usually passed without an evidence, so you can't really, what do I say, appeal to it. You can appeal to it after the raid has completed or anything has, the warrant has been passed and the item has been seized. After that, you can contest it that it was taken unlawfully, but usually warrants are not passed without bona fide evidences. Yeah, so raids is a totally different story, guys. ठीक है, search warrant या arrest warrant जो होगा, ठीक है, that obviously private attorneys won't be able to know unless the person is basically underground. ठीक है, अगर उस पे arrest warrant है तो obviously private attorney as a private attorney you will get to know that that person is have an active warrant on it. That is fine, but आपको जानकारी मिलेगा, उसको आप contest नहीं कर सकते, उसको आप either you can talk to the police department, you can come up to a plea deal, ठीक है, or you can help your client to get arrested and then file a case against the PD for false accusations. Okay, that is for arrest warrant. किसी को समझ नहीं आया तो क्वेश्चन करो. सर्च वारंट इज डिफरेंट. सर्च वारंट में क्या होता है, पुलिस इफ दे हैव एन एक्टिव एविडेंस, सर्च एंड रेड्स आर डिफरेंट. ओके गाइस, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है. Search warrant will be going for a particular item search. It can be a gun, it can be narcotics, it can be some other documents or whatever. उसके लिए आप कंटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है. इट विल बी प्रोसेस्ड बाय द पीडी विद इन 24 आवर्स. आपको मौका भी नहीं मिलेगा उसको उस पे स्टे लगाने का, ठीक है, अनलेस यू आर वेरी मच एक्टिव इन द सिटी एंड योर क्लाइंट इज जस्ट कॉल्ड यू कि लाइक मेरे घर बंद हो गया एंड ऑल, दे आर गोइंग फॉर अ वारंट एंड ऑल द स्टफ एंड यू क्विकली कम टू द कोर्ट, यू फाइंड मी फॉर्चुनेटली इन द कोर्ट एंड यू टेल दैट प्लीज पुट अ स्टॉप और प्लीज कॉल फॉर द हियरिंग. दैट इज अ टोटली डिफरेंट एक्सेप्शनल केस. ओके, उसमें हियरिंग हो सकता है, we can call the parties in the court, but obviously there is no possibility of stay on the warrant. Okay, अगर कोर्ट में उधर ही डिसाइड होगा कि whether the warrant will be processed or not, ठीक है. But there is a very exceptional case I'm telling about, which will be the normal usual case is basically the police will done their search, everything has been done, and after that you can file the case against the particular cop that that search was illegal, whatever the item that has been seized was not properly seized or whatever it is, Was not basically. lawful. Yeah, was unlawful. Yes, exactly. ठीक है, understood guys? कुछ doubts है तो पूछ लो. Understood. Raid is totally different. Raid you will have enough time to compete, enough time to contest. Raid is something is like a ultimatum to someone. Okay. Got it? So raid इतना जल्दी नहीं होता है. Raid warrant जब application आएगा तो वो मेरे पास ही आएगा. And उसके अपार्टमेंट हो या कोई प्रॉपर्टी हो, whatever it is, it will be under lockdown for I think around 48 hours. You'll have 48 hours to file the contest. ठीक है? You will have enough chance to be present in the court to prove the court that this person's property shall not be raided for falana dimkana reason. ठीक है? But obviously this property will be under lockdown till that time. ठीक है? You cannot enter or you cannot do anything. Up until the case is ongoing, the property will be under lockdown. Yeah, but again, if you miss the 48 hours window, then yeah,
it will be the same process. The police will go. The police by default it will be a yes, okay, and they will go and they will do the raid, and they whatever the item they will seize or find, they will obviously give a receipt to your particular client. Okay, then if you want to file a petition on that, you can file it. I had a question. Yeah. Who can approve a arrest warrant? Warrant approval structure, I don't think it is come yet. It will come in this No, particular the constitution. procedure and structure Yes, is not prepared. procedure and structure is not yet come. So if you have a suggestion, you can put. If you want the arrest warrant to be approved only by DOJ or only by high commands of the police department, you can suggest that. I want to suggest DOJ. I had a suggestion. I think DA office can handle it. DA office can handle it. There's no DA's office right now. No. No, when it You comes. all the prosecutors basically. Yeah, the prosecutors. Part of DA's office. Yeah, that's Until fine. unless जब तक DA नहीं है तो prosecutor तक दे सकते. Yeah. I DOJ. For the time being, the DOJ will take care of it, and maybe the police high command also can take care of it if they need. But I guess we will mention it briefly. PD But High I think Command DA's can office take. is not far away. I'd recommend PD High Command can take it if there is an inactive. If there is no prosecutor available, only then PD High Commands can take it. Yeah, but DA's office is very much coming soon, guys. Okay. We will have the DA's office ready and in functional very soon. So there will be a DA and ADA soon will be taken care of. There can be multiple ADAs also, no DA. Okay, so I don't know what kind of possibility is coming. Let's see. But obviously there will be authorities who will approve the warrants. So don't worry before we pass the constitution. Right. Okay. Section 4, protection against self-incrimination and double jeopardy. No person shall be compelled to provide a statement or evidence against themselves in a criminal proceeding. No person shall be prosecuted or punished more than once for the same offense following a final judgment, except where permitted by law. First sentence means that if a person does not wish to speak and give their statement, they have the right to do so. They have the right to remain silent. That's where the Miranda rights come in. Secondly, if a person has been taken into custody for an XYZ crime, they will not be charged for the same crime over and over again in the same situation. Yeah. So guys, just to give a better light on this thing, for example, the PD has offered a plea deal to a suspect. Let's not call a person a criminal yet. So, for example, Mr. Chandu has committed a crime, and the people he had committed the crime alongside with had escaped, and only Mr. Chandu is in the custody. So PD has proposed if he gives the names of the other 2 or 3 people alongside him, the jail sentence might reduce. So, for example, that revelation cannot be used by the PD just to put on or stack up any more charges. And secondly, double jeopardy is you cannot be charged on the same crime. So, for example, there's an active investigation which has been happening for the past month on a particular case. The PD cannot charge a particular individual twice for the same thing. An example of this will be like, let's say a shootout happens and 5 officers are taken, have been admitted to hospital. So there's gonna be 1 times attempted murder of government employee and not 5 times attempted murder of government employee. Yeah. Okay. Guys, any question for this? No, from my side. Others? All good? All right, please move on. We can move to the next slide. Yeah. Okay. Section 5, due process. No person shall be deprived of life, liberty, or property except through fair and lawful procedure. That means we are not supposed to take someone in and put them in cells. And or not just us, like anyone, like any civilian or anyone in this island is not allowed to deprive someone of their liberty, their property, or their life until and unless there has been a fair and lawful procedure. By lawful procedure, of course, where the DOJ comes in, it can't be like they are the one who are going to do the fair and lawful procedure. It's not them who can do it. It's going to be us. We are the one who are the process.
Um, so no person will be deprived of the life, liberty, and property without the fair procedure. Any questions? बेसिकली अगर आप किसी को भी 9s के लिए रख नहीं सकते प्रिजन सेल में या जेल में, ठीक है? आप किसी का भी प्रॉपर्टी अनलिमिटेड टाइम के लिए Cannot be seized. Seized. लॉकडाउन पे नहीं रख सकते, Yeah. ठीक है? वैसा वाला चीज है, ठीक है? और किसी को जान से नहीं ले मार सकते, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई दिस पर्सन शैल बी हैंग टू डेथ. Yeah. Section 6, right to counsel and fair trial. Every accused person shall have right to, number 1, know the allegations against them, obtain legal representation, receive a fair and reasonable prompt hearing, present relevant evidence, challenge opposing evidence and witness, and receive an impartial decision. Well, this is technically a court process, honestly. Number 1, the person who is accused should know what their charges are. Second, if they want to get themselves a lawyer, they should have the ability to get one, and they should receive a fair and reasonable hearing from the court. If number 4 is present relevant evidence, they have every right to present every evidence to prove their innocence. They can challenge the opposing if let's say a suspect has been taken by PD and the PD has presented certain evidence, they have every right to challenge them, and they have also the right to call in their witnesses to challenge that as well. And they can also receive an impartial decision. ठीक है? ये बेसिकली कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है? कैसे होगा? कोई किसी को डाउट है इसमें? एनी डाउट? ठीक है, आपके क्लाइंट को, हाँ, ओके, फाइन. Section 7, right to privacy. Every person shall have the right to privacy in their home, communications, personal information, and personal effects. Unlawful or arbitrary intrusions shall not be permitted except as authorized by law. Well, it's already mentioned where a person can have their privacy at their home when they are talking to someone, either by phone or anything. They have the right to privacy. They have the right to privacy to withhold their information, the personal information. If they do not wish to share it with other people, they have the right to privacy to protect that. And anything that can affect them personally, they can withhold their information. It's basically 3 and 4 is vice Basically versa the sort of. same only. बेसिकली Just अगर आपका क्लाइंट को कोई अरेस्ट करता है तो उसके बीवी का नाम क्या है या उसके गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, ये पूछने का अधिकार आपको कोई नहीं देता, ठीक है? सिंपल सी बात है. Until unless उन पे कोई suspicious Until and activity- unless it was required by the law, अगर हाँ, उन पे पर्टिकुलर कोई केस फाइल हुआ है या that person is also an accomplice to that particular case और authorized by any law. अगर मान लो मैंने बोला कि हाँ इसका पता करो, इसका बीवी का नाम क्या है, ठीक है? तो वैसा होगा, ठीक है? Right. Section 8, bail, fines, and punishment. No person shall be subjected to excessive bail, excessive fines, or cruel, inhuman, or degrading punishment. Punishment shall be lawful, proportionate to the offense. Pretty intuitive. It's saying that a person should not get excessive bail. By bail, we are talking about the bail amount. We cannot, or anyone cannot put an excessive bail amount for them to get out on bail. They cannot be charged in excessive term when it comes to fines. We cannot have cruel punishment. We cannot have inhuman punishment. We cannot have a punishment that is very degrading to them, that puts their image which or basically violates their human rights. That's it. right. The punishment has to be very lawful and proportionate to the offense. This does not just go to everyone. This also goes to the judge as well, who is supposed to be the one to give the sentence. ठीक है? Section 9, protection of person in custody. Every person in custody shall be treated humanely and with dignity. Torture, custodial abuse, and unlawful treatment are prohibited. ठीक है? टेजर मारना सेल्स पे, लट्ठी मारना सेल्स पे, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? प्राइवेट अटेंडेंस, आपको ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना चाहिए. Yes sir, I know. कि अगर आपको सेल में कुछ भी होता है, अगर उस आपके क्लाइंट को कुछ भी ट्रॉमा आता है या कुछ भी उनको कोई भी हर्ट होता है, फ्रैक्चर होता है, व्हाटएवर, एंड आपके पास ईएमएस का प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट्स है, देन डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर ऑफिसर कैन बी face some kind of disciplinary actions. Just a heads up, when a suspect is in the custody, it's PD's responsibility to take care of them. Keep them safe, basically. Yes, go on. Patik sir, Question. next, please. No, question. Oh, there's a question.
मेंटल ट्रॉमा का भी Yeah. The person in the Depends PD's on how custody. he's getting the mental trauma. लाइक इफ मैंने किसी अगर किसी ऑफिसर ने उसको कुछ बोल दिया तो उसको बुरा लग will that be counted as well? Again, it depends on the gravity of the So that situation. would be contradicting the freedom of speech. I would say the person in the custody should be safe and sound. देखो He should be. एक सेकंड मैं गजोदर को समझाता हूँ गजोदर देयर इज नो बुक ऑफ रूल्स ओके कि ये नहीं बोल सकते वो नहीं बोल सकते it have to be the private attorney and the public prosecutor have to come with their intellects and they have to be smart enough to argue what they want to argue in the court okay अगर उसको एक सपोज गाली देने की वजह से अगर उसको मेंटल ट्रॉमा हुआ है एंड इफ दे वांट टू विन द केस ओवर दैट कन्वर्सेशन दैट हैव टू बी द कैपेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट अटर्नी हाउ टू विन दैट कन्वर्सेशन हाउ टू विन दैट केस ठीक है तो वो वहां पे देयर इज नो सर्टेन बुक ऑफ रूल्स कि ये नहीं बोल सकते ये नहीं कर सकते ऑब्वियसली द प्रोटेक्शन बेसिकली द लाइफ ऑफ द सस्पेक्ट इज अंडर पीडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी वंस ही इज इन कफ ठीक है तो उसको अगर कुछ होता है इफ ही गेट्स what you call beaten or maybe he is suffocating or he is suppose like experiencing some kind of pain, it's PD's responsibility to resolve it. It's PD's responsibility to make sure that they provide good care so that that person's life is secure and safe in the cells. Okay. Okay. Got it? Questions anymore? Yes. Okay, let's quickly let's go. There are a lot of things actually. Section 10, equality and non-discrimination. Every person shall be equal before the law and entitled to equal protection of the law. No person shall be discriminated against on the basis of protected characteristics recognized by law. Well, you guys know what it means. Yeah. No racism allowed, No. that means. Yeah. I mean, nothing is allowed based on Wait, caste, just read. racism, religion, gender. Okay, guys. Okay. Be very Protection against retroactive. Let's go. Criminal no law. person shall be punished for conduct Okay. that was not unlawful when committed. A later law shall not increase criminal liability for past conduct. Any questions? राइट नाउ फॉर एग्जांपल अगर अभी ब्रांडिशिंग का चार्ज नहीं है और अगर कोई बंदा ऐसे खुले में गन लेके घूम रहा है तो उसको आप बाद में ब्रांडिशिंग का लॉ डाल के उसको अरेस्ट नहीं कर सकते उस टाइम जब वो कमिट कर रहा था उस टाइम वो अगर चार्ज है तो ही आप उसको वो कर सकते प्रोसेस कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर Right. The recognition of the specific others' rights retained, Section 12. The recognition of specific rights in this Constitution shall not be interpreted as denying other lawful rights and liberties. Any questions? A lot of people does have questions on this. I'll not be surprised if you guys. Which one? Section 12. Section 12. Other rights retained. या थोड़ा सा इजी वे में समझाया जाए तो So, for example, there are 11 other sections under this article, right? Yeah. No one of the sections should be contradicted to one another just to put out a point for no reason. It's basically that. Oh. Just to break the law. Right. Okay. So DOJ team knows review each right individually and decide whether additional protections are required for the environment. Got it. For the environment, right? Yep. Yeah, for the environment. For the environment, yes. I think we have gone through all of them. I don't think we have anything to add. There's nothing to remove either. So I think we are moving to the next article, Article 9, Criminal Justice, Section 1, Legality of Offenses. No person shall be punished unless their conduct constitutes an offense established by law and other recognized legal authority. That simply means a person will be only like the charges will only be put over there if it is recognized by the legal authority. If it does not, then we are not putting it. If there's a charge against it, only then it would be recognized. If the penal code exists, it goes. Yeah. Yep. Section 2, arrest. Arrest shall be carried out only on lawful grounds and in accordance with the prescribed procedure. I'm assuming prescribed procedure will be presented by the PD itself, the arrest procedure. It's arrest procedure. Right. But I think we have to elaborate this. We should section 2 arrest. On what grounds we are arresting. We should mention it over here that the Miranda rights should be read. They have the right to EMS. Yeah.
This needs a discussion in with the PD itself, just to have a better procedure understanding for the DOJ and the PD both. Right, right. Yeah. So Can the prosecutors be present during the arrest for reviewing the charges? yeah, reviewed. If to be Technically, reviewed, yeah. needed. Yeah, Yes. if to be reviewed, that's what I would say. Yeah, if they, because we need to like, you know, give our officers some credit that they will do their jobs properly. However, if they are not doing it, then later, probably in the later state, we will be overlooking it. Section 3, custody. A person arrested by Leo shall be brought before the appropriate judicial authority within the period law. A Yeah, person so in the it is custody, yeah. yeah, it is basically tells the statute of limitations. Okay, अगर कोई बंदा मान लो HUT हो रहा है, HUT में भी एक there is a rule कि आप पूरा दिन रख तो उनको रख नहीं सकती, you have to present it in front of the court within 24 to 48 hours. ठीक है, सेम फॉर द अदर petitions as well. अगर आप किसी को भी कोई भी petitions फाइल कर रहे हो तो it had to be done within the 48 hours after the charge sheet has been filed. ठीक है, तो उसका अभी स्ट्रेटजी ऑफ लिमिटेशंस अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट व्हाट इट सेज इज बेसिकली आप फॉरएवर के लिए उनको पकड़ के सेल्स में नहीं रख सकते. ठीक है, उनको इधर आप प्रोसेस कर दो और अदर यू हैव टू प्रेजेंट देम इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट if there is any kind of such charge which you cannot process. Right. ठीक है. Any more questions? More food. Food. Yeah, even I need food. I need food. Me too. बस कोई नहीं है, अभी इसके बाद देखते हैं पूरा कितना रह गया वैसे सर, कितने Right. lecture रह गए? Section 4, criminal charges. चाहिए? Criminal Thanks. proceedings Yeah, shall be yeah. initiated through Yeah. the applicable FIR, complaint, charge, or procedural prosecutorial Prosecutorial. process. Yeah, that means any criminal proceedings will only occur when there is an FIR, or if there's a complaint, or if a charge is existing, or if there is by the court. Yeah. Okay. Any questions on this section 4? I'm assuming no questions. Section 5, bail. An accused person shall have the right to seek bail before the appropriate court. The court may impose reasonable conditions for the release. Any questions? Bail. Any questions? No, right? Okay, moving on, ma'am. The conditions of the bail, I think we will get to that later. But we'll this have is a just- bail bond separately as a document which could be presented. We'll discuss about that later on. Yeah. Section 6, trial. Criminal trial shall be conducted before a judge or a judicial bench unless otherwise provided by the law. Well, it's mostly going to be a judge. So think about that only. Section 7, appeals. A party may appeal and final judicial decisions where an appeal is authorized by law. Just because a decision has been passed doesn't mean that's the rock solid statement. They can always make an appeal to the final judicial, to the next person. But again, this will not go forever and ever. If a judge gives them a wrong sentence, they can appeal to the next high-ranking judicial authority, which is going to be a chief justice. If a chief justice also sentenced them something, you cannot approach anyone higher than that. Okay, guys. So for appeal, I hope everyone knows a word called prejudice. If a verdict has been announced with prejudice, there would be restrictions upon further appeal. Okay. Yeah. That is something the judge will mention it on the final verdict. They will say that dismissed with prejudice or dismissed without prejudice. If it's with prejudice, right? Yeah, with prejudice. Right. And then so then you can appeal to the next higher court. All right, moving on to the DOJ team knows the section should eventually connect directly to the penal code, FIR procedures, bail rules. Yeah, I think we just discussed. Article 10, Civil Rights and Remedies, Section 1, Civil Claims. Individual and organization may bring civil proceedings where authorized by the law. People can come to the court. They can ask for proceedings and court will entertain it. Section 2, Compensation. A court may award compensation, damages, reinstitution, or another lawful remedy. Pretty intuitive. The judge can also possess the power to give compensations. If asked for, okay. If asked for. If you guys are not asking for it, that's your bad.
Always keep it in limit, okay? Don't be like Yeah, 1 and million don't be compensation I need. unreasonably. Next slide, please. next slide. Any questions, by the way? Civil claims and compensation, section 1 and 2, under No. Article 10. No? Patek sir, moving on. Could you change the slide? We're doing speed run. Yeah. कुछ नहीं मैं 2 vending machine है, you can feel free to buy food and water. An ATM, please. soon. Are lawyers making money? Out of my jurisdiction. Sorry, my mistake. Sorry, Patek sir. sir, next slide, please. Yeah. मेरे खाने के पैसे भी चाहिए होंगे मुझे। टोटल फूड देना लाइव। Can't buy stuff without cash, and there is no ATM over here to pull out cash. Sir, chair. Thank you so much. Hello. मैंने खाना कर दिया पर से मुझे पैसे चाहिए इनके बाद। Oh, क्या हुआ? thank पैसे you. चाहिए तुम्हें? Thank you, Sorry. man. 3000 का खाना खरीद लिया बस। 3000? हाँ? Hello, sir. Hello. 3000 लेके जाए, sorry. Sir, actually, I haven't got the job yet. I have been approved. Patek sir, the gentleman in the brown. Kiddie. Okay. एंजॉय करिए सेशन को, ये खत्म होने के बाद मैं आपको जॉब देता हूँ। इधर खड़ा हूँ मैं आपके इस साइड। Section 3, government सामने। liability. Government authorizes may be held. This? Government Acha. authorities may be Okay, held. Guys, Okay, go this ahead, is go a ahead. very crucial part. Government authorities May be held legally responsible for unlawful acts or violations of protected rights subject to applicable law. Patek sir, we are filing cases on government. What's it? Government authorities, like people who are doing government jobs, that includes prosecutor, PD officers, EMS, including Chief Justice, and Including the mayor as well. Mayor as well. Everyone. Session. You can file a case, but they will be held like the way it's supposed to be. Imagine you are putting a case against an officer. It will be dealt in a different manner. It will not be dealt in the same way how it's going to be dealt with a report against a mayor. Yeah, there would be special cases, special hearings. Okay, any questions for Section 3, government liability? Everyone understood? It basically means that everyone who's doing government jobs are also answerable to the court. Yeah. Any questions? No questions. Okay, Section 4, injunctive relief. The court may order a person or authority to perform or refrain from performing an act where authorized by the law. It is basically, remember the first thing where we talked about injunctive? Injunction. Yeah, injunction, sorry. Injunction over there, which means court can tell anyone that they are not allowed to do certain things. So Section 4 is basically that. Questions? Any questions, guys? You guys are listening, right? No. Yeah. Yeah, listening, man. Any example for those actions? Katie sir did give an example before. Let's say it's basically a court order telling a person that you are not allowed to do certain things. If the court tells you that you are not allowed to enter Leave the certain state. place Yeah. or leave certain place, then you are not allowed to do so. It's basically stopping you from doing certain thing. If the court tells you that you are not allowed to go to that particular place, imagine tells you that you are not allowed to enter Burger Shot, then you just cannot do that. If you do that, then you're violating. Okay. Okay. DOJ team notes, decide limitations, damages, government immunity, and available civil remedies. That is again a point to be discussed later. Yeah. Taxation is Katie not, Packer. I think already we have discussed कि इसका authority किसको होगा, and we are putting it on SLAs, I guess, as Yeah. of now. Yeah. Fair administration is like obviously everything should be publicly available. As we said, कुछ भी legislation बनता है city में, वो हमें सबको बताना पड़ेगा. It's not like something we can hide.
tax rates and everything will come in like when those meetings happen. Yes. ठीक है. Now coming to emergency powers, declaration of emergency बहुत ही rarest of the rare case scenario जहाँ पे गवर्नर आपको emergency declare कर सकता है, and he can also put any kind of laws, bylaws, changes, कुछ भी वो कर सकता है. That is a very kind of rarest situation जो होगा नहीं उतना ज़्यादा जल्दी. Like maybe a martial law or a RICO act. These are very emergency. This will be like, again, will be passed on by the mayor only or the governor's office. We have nothing to do over here. Next slide. The point of this being here is that to let the civilians know that they can do it if they want to. Section 2 limits emergency powers shall be necessary, proportionate. Oh, we are just telling the limit of the emergency power. Yeah. Limit it in duration and subject to judicial and legislative oversight. Again, this is not something that we need to worry about. This is the governor's office. Governors look. Same thing for the rights during emergency. It's not for you, it's for the governors. ठीक है. Emergency shall not place government authorities above the constitution. Okay, तो ऐसा नहीं हो सकता कल को governor can tell the police to do whatever they want, like arrest and shoot out at the thing, whatever. Constitution उनको follow करना ही पड़ेगा. सबसे ऊपर संविधान है. ठीक है. Yeah. Define who can declare an emergency is already तो ठीक है. decided. हाँ, How long it lasts, decided. Renewal is to be decided, and which rights can and cannot be restricted. Already decided. Article 13. Accountability of public officials. Section 1. General accountability of government officials. Leos, judges, attorneys, and public authorities are subject to applicable law. Section 2. Misconduct. Misconduct may include abuse of authority, corruption, unlawful detention, unlawful search and seizure, excessive and unlawful force, falsification of evidence or records, and disobedience of lawful court orders. Yeah, so basically this all the type of things will come under misconduct. अगर आप मान लो कल को कोई भी पुलिस के अगेंस्ट, कोई भी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट आप कोर्ट केस फाइल करते हो, तो आपको वही इसमें से चूज करना पड़ेगा कि अगर मान लो उसने मिसकंडक्ट किया है या ऑन द बेसिस ऑफ जनरल अकाउंटेबिलिटी और फाइलिंग द केस, ये सब चीजें आपको वहाँ पे मेंशन देख के ये उस पर्टिकुलर केस को उस हिसाब से मेंशन करना पड़ेगा कि आई एम फाइलिंग दिस केस फॉर द मिसकंडक्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल फलाना टीम का ना व्हाटएवर. ओके, गॉट इट. Please moving on. While we're in the topic of misconduct, I'm also gonna raise a flag on a common law, which is gonna be guarantee rights. I would encourage if that is also included. Yeah, in the next section. That's on the next slide. Oh wow, okay. Next slide, sir. Investigation and discipline. Complaints against officials may be investigated by the competent authority and may result in disciplinary or judicial proceedings. Okay. Define who investigates police misconduct. That's going to be IA. Now, who constitutes of IA? That is completely Chief Upon Justice. the Chief Justice and the Governor. Yeah, Chief Justice and Governor will Yeah. decide it. Judicial misconduct. I think that is also Chief Justice and Governor will decide who will be the one to investigate it. Attorney misconduct, I would recommend the Bar Council. For now it's DOJ, but later it will be shifted to the Bar Council. And government misconduct, it will be handled by the governor. Okay, so here or the public, whoever wants to take it. I'll recommend the SLS. The legislative. SLS, okay. But obviously it should be triggered. Like what we say is like the spark shall happen from the public. Like the public should protest, and that should come to the court, and then the SLA will sit to discuss that topic. Not necessarily. I would recommend, because like I said, the will constitute a civil representative, right? So if the civil representative mentions about it, that means it is a public concern. I would also suggest like a special committee for the time being, if there's a consists of both the members of SLA and the public, just so that we could have a trigger on both sides. But You mean a it's jury? That's okay. Kinda joint committee, if you know. Right. Okay. Article 14, constitutional review. Wait, by the way, does anybody else have to input anything on the DOJ team notes? No. No. Everyone's on their phone. Right.
Article 14, Constitutional Review, Section 1, Judicial Review. The court may review laws, regulations, government actions, and official decisions for consistency with this constitution, which means that we, the court, can review laws, review regulations, government actions. That also includes SOPs, okay, for the PD, and see that their SOPs are maintaining the constitution. It's on the same page basically, following Yeah, and not it's on the same violating any page. of the constitution. Just a heads up, the DOJ will not be telling the PD how to do their job. It's just there to tell them that if certain thing is overlapping the Or- legality of this constitution. Yeah. Section 2 is invalidity. Any law, regulations, or official action inconsistent with this constitution may be declared as unlawful, invalid by the appropriate court. Well, something that doesn't make sense by this constitution will be deemed as unlawful and invalid. Article 15, Constitutional Amendments, Section 1, Proposal. An amendment may be proposed through the procedure established by the law. Section 2 is approval. An amendment shall require approval by the prescribed legislative and/or constitutional authority. Any questions? PIL, bail should be made into an act. That's the approval. As simple as that. Okay. Yep. Alright. Okay, done. Next slide. Section 3 is a publication for it. That's the same as this. Every amendment shall be formally recorded and publicly published before taking effect. I think this was already mentioned earlier in the Constitution, no? Yeah, for a different justification, but yeah. Right. DOJ team knows decide required majority, whether the governor must approve amendments, and whether certain provisions require enhanced protection. Again, that So is something up to Chief Justice and Governor to decide. Yeah, and just prioritize the word enhanced protection in your PILs. That's it. Any questions? Do you guys know what is PIO? Right. Article number 16, transitional provisions. Until specific legislation or regulations are enacted, existing laws, valid regulations, recognized judicial principles, and established legal procedures shall remain in force to the extent that they do not conflict with this constitution. No authority may use a legal gap as permission to invent an offense or impose an otherwise unlawful punishment. Understandable? Yeah, Pathak sir, could you explain this in title language? Pathak sir? Good. Could you explain this article one? 16? Transitional provisions. Unless specific legislation. So बेसिकली कुछ अगर स्पेशल केस ना हो, फॉर एग्जांपल कैसे समझाऊं मैं, अभी हम लोगों ने मिसकंडक्ट का बात किया, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्पेशल केस कमिंग कि लाइक नोबडी कैन फाइल अ मिसकंडक्ट केस ऑन मेयर, ठीक है, दिस इज अ स्पेशल केस कमिंग, ठीक है, बट जब तक वो केस नहीं आ रहा है तब तक वो मिसकंडक्ट जो है वो लागू होगा, इट विल बी एप्लीकेबल टू द मेयर एज वेल एज अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट conflicting with any of the other phrases already mentioned in the constitution. So कोई भी नया चीज जो भी आ रहा है, जब तक वो आ जाता है उसके पहले जो भी चीजें हम लोगों ने अभी तक मेंशन किया है, all the sections will be applicable as it is if it is not conflicting with any of the other clauses in the constitution. ठीक है? No authority may use a legal gap as a permission to invent an offense or impose an otherwise unlawful punishment. So basically I don't know, I might be wrong, but what I understood from this line is like आप या कोई भी बंदा उस चीज को डिले नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल आप पे कार्रवाई चल रहा है, there's a Mr. X who is a mayor, जैसा भी बोला, उस पे मिसकंडक्ट की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. नाउ पुलिस जानबूझ के उसको डिले कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि एक मिसकंडक्ट का वो आने वाला है लेजिस्लेशन, कि ताकि वो मेयर को भी डाल सके उस पर्टिकुलर क्राइम पे. So you cannot, no authority shall use a kind of a legal gap. Legal gap is basically you are using the legal
ways to find a kind of extending something to make sure that you get the case rock solid and win the case basically. Correct me if I'm wrong, I don't know. I mean, basically, you cannot commit an offense knowing that the law is not there. Acha, okay, sorry, my bad then. Okay. Yep, that means a person is smoking like 500 joints a day and is selling 500 joints a day because there does not exist a penal code. No authority will use that legal gap as a permission to let that happen. Okay. Okay. The DOJ team notes is not required. Move on, please. Yes, yes. It is mostly talking about if the MDT malfunctions and we have to go back to our archives for our hard copies. Yeah. They may be outdated there, but we're going to continue. So, Article number 17, Supremacy of the Constitution. This Constitution shall be the supreme law of the state of San Andreas. All government authorities, law enforcement personnel, attorneys, judges, and public officials shall be bound by it. Where a conflict exists between this Constitution and another law, regulations, or policy, this Constitution shall prevail to the extent of the conflict. I'll recommend over here, it's not just the government authorities, law enforcement personnel, and all the public officials. I think including the citizens should be bound by it as well. Yep. Public officials is... Public Public officials, officials the right word to use there? Maybe we can rephrase that. just make it everyone. Every citizen of San Andreas. I'll just Yeah. say citizens of Okay. San Andreas are bound by it. All right. Okay. Anything else? I think that sounds like a nice conclusion. I don't think. Oh, never mind. There is some more. That's a conclusion only. That's just the parameters for review and preparation of what you guys want to do and how can you... And guys, इसका copy जो है, I know it was a very lengthy session, I know, and thank you so much for being attentive and listening throughout the session and everything. But Sorry, I'm very there sorry. will be changes. Wow. There will be changes, there will be modifications, there will be a lot of things will be changing here, but Sorry? obviously we need your suggestions, your points to be added as well, so that it is not only feels like it is Tej Nagasaki's constitution, it will feel like the whole DOJ came and prepared it. Right. Okay, so I think you guys already have the copy of it. Do they have the copy of it? Just create a view link and share. Okay. Yeah, will do. If you want, just so there will be a link, he will share it. Yeah. And just go through the link today. Okay, take your time. Okay, and just come tomorrow and let's discuss. There will be having a proper constitution where we'll do the changes. Okay, where everything is written. Okay. We're gonna do it live. Yep. Right. Final declaration. This constitution shall take effect upon authority and publication through the official state records. Justice, liberty, equality, accountability. No person is above the law. Appendix A. Items for DOJ team review. Hazel ma'am, that's for them to read them. Okay, you guys will read it then. Yeah. Next slide, if there is any. Done. You're done. I mean, this is just the that's it. parameter. But that's just the parameter for them to read, not required. If I am audible, Guys, are there you any can queries proceed. finally? Is there anything you guys want to put? Please feel free to do it, and we want active participation of all of you to be there, contributing to the constitution, just to make it a very good constitution for the state as a whole. इट्स यहाँ पे बस ये बताया गया है जैसे कि हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है और क्या क्या हमें फाइनलाइज कर लेनी है चीजें करने से पहले, तो इजी रहेगा, हमें समझ रहेगी कि आगे से हमसे गलती ना हो, डिपार्टमेंट से गलती ना हो बेसिकली। अगर हम ये सब करके चलेंगे आपको तो एज अ डिपार्टमेंट से गलती अटर्नी नहीं देयर होगी। विल बी अ सेपरेट गाइडलाइंस आपके पास आएंगे, ठीक है, दैट विल बी अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि सरकार जो है, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरकार के पास क्या अधिकार है, ठीक है, आपका तो पता है लोगों को, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप
बट एज अ अटर्नी So आप guys, जैसे welcome to आपको the सारा stream. कानून पता होना चाहिए, राइट? If you guys कल are को able अगर to आप hear me कोई out, केस welcome to लाओगे, the stream. Thank you so अगर much for आपको ही नहीं joining. पता कि ये पुलिस वाले ने सही किया है गलत, तो आप कैसे केस फाइट करोगे, राइट? ये तो है सर। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू एन आइडिया, कि आपको एक आइडिया देता है कि आप मतलब आप कौन सी दिशा में जाओगे तो आपको सही तरफ लेके जाएगा एंड आपको न्याय मिलेगा, ठीक है? जी। This constitution describes that what a person has their rights, what they can do or what they cannot. Okay, it's for everyone. It's for judges, it's for government officials, it's for PD, it's for mayors, it's for everyone. ठीक है? एक सेक्शन में एक पर्टिकुलर रैंक्स के बारे में लिखा गया है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है? तो इट विल हेल्प यू टू फाइट द केस, टू अंडरस्टैंड कि लाइक यू नो कि तुम्हारा इतना ही मतलब अधिकार है, तुम इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते बेसिकली। बाकी आपका क्या है वो आपका अटॉर्नी गाइडलाइंस में होगा, देयर विल बी अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल व्हिच आई विल शेयर, ठीक है? बट यहाँ पे आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है बिकॉज यू विल हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, ठीक है? फॉर एग्जांपल तेज इज डिफेंडिंग पीडी, हेजल इज डिफेंडिंग पीडी, ओके? सो दे हैव अ माइंडसेट दैट दे Chandu also, sorry, I didn't Thank you for that, KD sir. Thank you so much. Anyone left or what? Huh? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इसमें। देखो आपको अगर कुछ भी लग रहा है कि दिस इज ओवर पावरिंग सर्टेन डिपार्टमेंट्स, और दिस इज नॉट गिविंग अ चांस फॉर द नॉर्मल पब्लिक टू फाइल अ केस, और दिस इज नॉट गिविंग अ चांस टू नॉर्मल public to raise a hand or raise a question on whatsoever mayors is doing or judge is doing, आपको वो पॉइंट्स ऐड करवाने हैं यहाँ पे, ठीक है? दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एवरीवन हियर, ठीक है? तो ये Guys, आपके भी ब्रेन्स को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फाइंड वेयर यू कैन पुट योर पॉइंट्स, एंड यू नो टुमारो यू कैन कम अप अगेन विद ऑल दिस पॉइंट्स अगेन, विल डिस्कस अगेन, ठीक है? Okay. Guys, also just a heads up, even 1 pointer from your side would value this and add so much more to it overall. So please just, even if you guys don't get time or anything, just give us 1 point. हाँ, अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो बस एटलीस्ट कल आ जाओ, बिकॉज कल विल बी वर्किंग ऑन अ प्रॉपर रियल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम लोग प्रॉपरली ड्राफ्ट करेंगे। उसमें भी बहुत चेंजेस होंगे, बट वेयर विल बी एक्चुअली ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इज लाइक टू लेट अस नो कि व्हाट थिंग्स टू बी ऐड एंड व्हाट नॉट टू ऐड, ओके, व्हाट थिंग्स टू बी मॉडिफाइड। अभी उसमें पूरा लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, जस्ट अ काइंड ऑफ अ हेडर्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? तो इसको थोड़ा गो थ्रू करो एक बार, कुछ भी तुम्हें लग रहा है कि अभी तुम्हें दिमाग में नहीं आया, बट सपोज तुम बाद में गो थ्रू कर रहे हो, तुम्हें दिमाग में आए कुछ चीजें जो ऐड कर सकते हैं, तो प्लीज डेफिनेटली फील फ्री टू कम विद दोस थिंग्स, ओके? ओके ऑलराइट गाइस। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे कितने प्राइवेट अटॉर्नीज है, थोड़ा बताओ जरा। आपका नंबर मिलेगा आप हो, ओके? एक और थे एंड मेरे टॉम, साथ आई मीन सॉरी, देव इज देयर। आप भी, यू आर आल्सो प्राइवेट, अच्छा यू आर पब्लिक डिफेंडर, सॉरी। Saul, you are private attorney, right? Yeah, Dave and me. He's a prosecutor. Dave and He's me. also prosecutor. Okay. Yeah. Okay. Dave and ठीक me है, is a then I private think we attorney. have enough prosecutors, so I'll Yep. stop recruiting prosecutors now. Okay. We'll go for the private attorneys. I think there were 2 more private attorneys came. I don't know if they came in the city Yeah. or not. Shiva. हाँ, Shiva is there, and Kwaish is there. No, Kwaish is also prosecutor. Quaish is prosecutor. Yes. She is a private attorney from what I know. Is it? No, Yeah. she is a prosecutor. She Dave is a private attorney. आप क्लर्क हो बिना पे चेक के गुजर थी। Alright, guys, thank you for showing up. Really appreciate everyone coming up and all that. Thank you everyone. You're welcome, sir. ऐसे शर्मिंदा मत करिए। कल we'll actually do a kind of hands-on on the constitution. We'll do a lot of changes, so feel free to join us, okay? At the same time, 8:30, we'll start around 9, okay? Depending upon everyone's availability. Baki to yeah, the person who came for the job, I think I don't see him. He's went or what? I think we had a head pop or Okay. चला ही गया। ठीक है. Cool guys, I think you guys can feel free. You guys can go roam around. Soon there will be garage. Will be coming soon. Okay. Maybe by this weekend there will be a garage. So there will be a vehicle for DA's office, private attorneys. So you can just take out those vehicles. Okay. I have one question, sir. हमें MDTs and MDT मिलेगी? DU Department of Justice?
private We have it. You have We to, actually you haven't have. gone through Just take the it, Amber. training. No, we haven't gone अच्छा through the आपको training. ट्रेनिंग नहीं मिला है ना, कोई बात नहीं. Yep. देयर विल बी अ ट्रेनिंग फॉर द ऑल द न्यू पीपल जिनको नहीं मिला है, ठीक है. देयर विल बी अ यूआई ट्रेनिंग हैपनिंग. मे बी मैं देखता हूँ अगर कल बिफोर कर देता हूँ सेशन से पहले, अगर आप लोग फ्री हो तो, ठीक है. विल डू अ यूआई I'm free. ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द टाइमिंग्स, ठीक है. आई थिंक बहुत लोग रात को आई थिंक 9 बजे तक अवेलेबल नहीं है, सो विल सी. जो भी अवेलेबल हो आई विल डू द यूआई ट्रेनिंग, ठीक है. ओके, मैं तो Same अवेलेबल same. हूँ, बाकी देख लेना कोई भी. Yeah, I'm also available. You're not available? No, no, You're I available? am. मैं तो हूँ. Okay, मैं so भी I'll available. set up a time. Okay, Okay. we'll discuss over there on the mail. Yeah. What time you are available? We'll give you the. For now, what you can do is like you can buy the tablet from the digital den. Okay. Okay. And also, you'll be provided with. I don't know if normal radio से आप join कर सकते हो कि नहीं, but there is a dedicated DOJ radio that is 9 frequency. Okay. Okay. So I think everyone can join that frequency, but I'll provide you all the radios tomorrow. Today I don't have the Okay. shipment, so yeah. So you guys can take the radios, or maybe I'll talk to the police and you can go to the police station and collect your radios. Okay. Okay. Yeah, I'll let them know that you guys are coming. Okay. Kitty sir, can you please share me your number? Yeah, sure. बस तो सारे दे दो. केडी सर सबको दे जिनका दो. यूआई Thank ट्रेनिंग you. हो गया है वो Thank लोग you. भी ज्वाइन कर सकते हैं ना कल का यूआई ट्रेनिंग. Chandu, you need more UI training? No, I don't. I think he needs. I Or need are some. you Definitely free? needs some UI training. Trust me. Got the contact of John Miller. I need some. You need some U, I think so. एरन यादव को मिला मैंने, और कौन है? Kitty sir Johnny बता दो. Miller. सभी दे दो वैसे तो कॉन्टैक्ट्स अपने. आपको नहीं है आपके पास? अच्छा, जॉनी मिलर मेरे को नंबर देना अपना. हाँ जी सर. अपने कलीग्स का नंबर होना चाहिए. Yeah. हमें भी दे दीजिए नंबर. तुम पे नहीं है मेरा नंबर? आपका है नंबर हमारे पास. अच्छा. तेज सर आज नंबर लेंगे या कल लेंगे? Oh, gunshots. What? Aaron, yeah. Yep. Okay. I'll show you mine. It's all good, man. नंबर तो शायद मेरे पास था. I'll create a group guys, ठीक है, आप लोगों का DOJ का, and probably right now there is no such facility, but PD will also able to see who all of you are on duty, but all the private attorneys you can feel free to क्या बोलते हैं उसको, give your advertisement on the app. All the public prosecutors be on the radio, on the radio 9. If PD needs any help, they will come to the radio 9 and ask for help. Okay. Yeah, Kitty sir, I have a for you from Heba. क्या बोल रहे हो? I have a message from you from Heba. बोलो बोलो. वो कह रही थी कि केडी को बोलना कि जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन ला दे, वरना उसको मैं बोल नहीं सकता जो बोला है उन्होंने. बाकी तो मतलब उनको बोलो अभी काम चल रहा है, उनको बोलो कभी आए हमारे ये छोटे से कोर्ट हाउस में, कभी आके अपना दर्शन दे दे. Tell her to talk to Shanks until we make the constitution. ठीक है, you guys can hang around. Those who are prosecutors, feel free to go to PD if they want. Yeah, for today I think there is no vehicle, but tomorrow I'll have you guys the vehicles, okay, so that you guys कोई can दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं. अभी भी रेंटल चला रहे, जब भी चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. सर वो Alright रेंटल guys, वाला thank you so much. स्कैम कर रहा है सर, रेंटल वाला. रेंटल वाला तो स्कैम कर ही रहा है, क्या ही बोल सकते हैं. Hazel ma'am, thank you for the narration. हमने अपना नंबर दे दिया है No worries. केडी जी. तो हमें बुला लेना. Hey, I'm really sorry, I forgot. Thanks to Tej and Hazel, okay, for conducting the session, and thank you so much for taking initiative. I want all of you guys to take initiatives like this. ठीक है, आप लोग अगर civilian awareness sessions करना चाहते हो, feel free to do so. Come, talk to people, do more interactions, or how many people you want, and yeah, just
just do it. If you need any permissions, I'll give you permissions. If you need any kind of help on the infrastructure side, I'll help you with that also. But just Okay, come up with the Patak sir. ideas, okay? Patak sir, at least you can take the booking for Arms Act or the Weapons Act, if we call. Oh, sir, one more question, sir. Sir, when we get the bar license? When you get the, you already got the license. Okay, so from where I get? You are there in the session. Uh, In the session, I have mentioned that there is only one license in the city, that is driving license. Yeah, वो Yeah. तभी मैं. So that's why you didn't get your bar license. Okay. Yeah, right now you are only authorized to practice under my authorization. Okay. Okay. Bar license अभी तक आया नहीं है, but yeah, it will also come soon. It will be shown in your profile for access in the cells. Okay. But for the time being, you can tell them that you are a member of the DOJ. ठीक है? हाँ सर, कोई आइडेंटिफिकेशन होगा? अभी नहीं है. There will be a badge also coming soon. Yeah. You can collect your badges. Okay. वो बेसिकली बात वही ना सर, अगर किसी को हम रिप्रेजेंट करने पे पीडी भी जाएंगे तो वो हाँ वो आ जाएगा, वो बहुत जल्दी आ जाएगा. बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत कुछ चीजें आ जाएगा, टेंशन मत लो. ओके, हमारे पास केसेस भी आ जाएगा. There will be cases Put a also. note on my profile. I have a 2 cases ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं फिलहाल कि आते ही केस करना है. डन. केस कैसे शेड्यूल करना है, कैसे करना है, सब मैं आपको बता दूंगा. ठीक है? आई थिंक तेरा नंबर है. KD sir, also I would like to have a small talk for 2 minutes. हाँ ठीक है, आ जाओ. Okay guys, thank you. You guys can leave. Take care. Okay. And thank you so much to Tej and Hazel for conducting. No problem. No Sir, worries, Chandu, thank you Chandu, sir, for Chandu. having- Really appreciate it, guys. Chandu, Hazel अपने आप को and ले Tej. चंदू. Yes. Sorry? I really appreciate your. मेरा चंदू, ऑफिस तुझे कौन मिल सा जाएगी, है सर? appreciation मिल गई तुझे, जा. एक Thank you, नंबर thank you. उठा ले कि 2 नंबर? आजा चंदू, क्या हुआ बता. Sir, Miss Hazel. Yes, sir. I'll send you the penal code draft as well. I have made a really basic one. So please Yeah, we review it don't and need all. a bunch of it, honestly. We just No. need a basic one. Reg the PD can. कितने मीटिंग में try कहाँ and पे हो अभी go तुम? as for the ये क्या है? Got a complaint from officers Mhm. that because the penal codes are राइट not लेफ्ट किधर से there, किधर Little आना Soul penal के है? codes पास are है, there, but Ginger because the Street. constitution is not there, people are apparently committing लिटिल crimes सोल, in लिटिल front of सोल के them. पास कहाँ? Ginger And Street पे. they're getting away because लोकेशन भेजो, there is मैंने no समझ देखो. नहीं I पा mean, रहा है there's देखो. always a आपने common अपडेटेड है law GPS में. which is not GPS understood में? by them. Yep. But it's okay. Department The of constitution Justice. should be rolled out in the next 2 days, I feel. ना हमें नहीं दिख रहा. yeah, it's priority right now, का which is दिख why रहा है. I'm taking every लिटिल सोल के initiative to पास make it एक happen. फ्लैग होगा. Yeah, I'll put forward this डिपार्टमेंट document ऑफ to a mail. जस्टिस. हाँ मिल So गया what आ रहे. everyone can do is make a copy of it and put in their ओ आजाद. comments or put in their reviews or put in their inputs, whatever they want. No worries. Yeah. All Any right, which ways. I'll take my cycle and I'll go for a ride. Okay. Have a good day. Bye. Hello. इतने दिन से आप लोग नहीं आ रहे थे, मैं क्या करूँ अकेले अकेले, बोर हो रहा था. हम निकल गए फिशिंग करने. सही है. ये सर हमको मिले थे, आप मिले थे क्या? हाँ मिले थे. बहुत सारा कचरा भर रखा है हमारे पास. बहुत कचरा भी साफ किया सर हमने शहर में. हैं? अभी भी एक कचरा को साफ करके आ रहे हैं कीडी जी. किसको? चंदू. चंदू?
हाँ हाँ चंदू चंदू सिंह तो उधर है। अच्छा साफ नहीं हुआ अभी तक। तो चंदू तेरे को साफ करने की बात हो रहा है यहाँ पे, देख ले मेरे तो को। कभी नहीं हो Yeah, I mean, सकता कभी नहीं हो Chandu can सकता leave and his friend can join. I don't know. सर मैं क्या बोल रहा हूँ केडी सर, हम्म। एक थोड़ा सा ऊपर का टॉक अगर क्या? आई कैन हेल्प क्लीन दिस मेस। मैं हूँ उसके लिए, आप क्यों मेरी जॉब क्या खा रहे हो? क्या क्लीन व्हाट? He's In talking this- about the bushes. Bushes, अच्छा। yes, I can help you clean this bushes. डन डन। If you ever need you me, need- just ये मेरे क्लर्क से बात करो, क्लर्क को ज्यादा पता है we need a janitor ना ऐसे भी। क्लर्क को ज्यादा पता clerk है। साहब कौन आए? चलो आई विल टेक लीव गाइस। हाँ कैरी ऑन। Yes sir, yes sir. Good night, guys. I'll also take वैसे leave. Bye bye. केडी पाठक जी यार बोलो बोलो। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन सब आ जाएगा would it be possible to have a weekly traffic court? ट्रैफिक कोर्ट? Yep. डेफिनेटली यार, ओपन कोर्ट ही रखूंगा मैं, Done. उसमें सब डिस्कस होगा। ट्रैफिक कोर्ट रहेगा तो ये पीडी वाले से हमारा भी थोड़ा मिलजुल हो जाएगा उनके स्ट्राइक्स हटाने के लिए। केडी अच्छा, सर strikes आ हमारे रहे हैं क्या garage अभी? किधर है? मतलब मेरे नहीं पीडी ऑफिसर्स को आएंगे ना एचआर की तरफ से वहाँ यहाँ डिपार्टमेंटल स्ट्राइक्स अच्छा जो आएंगे। डिपार्टमेंटल नहीं, वो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है हटाने का। अच्छा the court cannot do it. नो। फिर आपका गाड़ी व्हीकल कहाँ स्ट्राइक से की मिली? बात कर रहे हो या डिपार्ट, क्या बोल रहे हो तुम? ये डिसिप्लिनरी जो एक्शन हाँ है डिसिप्लिनरी स्ट्राइक जो आते हैं पीडी ऑफिसर्स वो पीडी, वो इट्स क्या कह रहे टोटली हो अप टू पीडी। डिसिप्लिनरी एक्शन इज सोनली इट्स अ इंटरनल मामा मैटर, की है? वी कैन नॉट गेट ओके इन। मामा की है, मामा की। मामा की पीडी में अगर अंदर की चीजें वो अंदर ही एक्सपेंजमेंट्स ठीक है, कोई बात रिगार्डिंग नहीं। एक्सपेंजमेंट्स हां एक्सपेंजमेंट्स के रिगार्डिंग समथिंग। एक्सपेंजमेंट्स भी अभी नहीं है। ओके ठीक है फ्यूचर देयर आर नो एक्सपेंजमेंट्स। डन it may come should. definitely but हाँ कल तुम लोग आके रेडियो ले लेना, ठीक है, गवर्नमेंट का। टैक्सी निकल गराज मिलेगा सर हमें? हाँ गराज मिलेगा ना, कल बन जाएगा गराज। मैं सर कह रहा हूँ ड्रॉप कर सर, दूं क्या कहीं? हाँ मेरा पार्क रोड जाओ टैक्सी। केडी सर आपको कहीं छोड़ना है? नहीं मैं सोने ही जा रहा हूँ। और देव सर हाँ चिंदू सर बताइए। क्या करते हो आप? हमें बस ये काम और छोटा सा दुकान है हमारा मेरा पार्क में। अरे हमने सुना आप भी प्रोसिक्यूशन में, आवाज आपकी हमने सुना आप भी प्रोसिक्यूशन में आ गए। आपने क्या सुना था? प्रोसिक्यूशन में? नहीं जी हम प्रोसिक्यूटर का फाड़ने आई मीन प्रोसिक्यूटर के ऑपोजिट है। क्या बोल रहे आप? जब कभी छूट जाओ हमें याद करना। थोड़ा क्या बोला आपने सुनाने जब कभी आप फंस जाओ तो हमें याद करना। अच्छा फंस जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। आप फंस जाओगे तो हमें याद करना। हाँ आपको याद करने के लिए कोई लड़की का चक्कर हम नहीं है। आएंगे आप करने के लिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको याद करने के लिए कोई लड़की का चक्कर नहीं है, तो आपको याद कैसे करें? अरे मैं लड़कियों के पीछे पड़ता ही नहीं हूँ यार, मैं ब्रह्मचारी आदमी हूँ। अच्छा ठीक यस बराबर। यस अगर आप ब्रह्मचारी आदमी है तो मैं प्राइवेट अटर्नी नहीं हूँ। ओके तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो मतलब, नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं। जिस साइड में आप होते हैं ना उसके ऑपोजिट साइड में आना ही अच्छा है। नहीं तो आप हमें भी लड़की बाज बना देंगे आपके जैसे। अरे बाप रे। कौन सी दुकान है आपकी, ये वाली? हाँ ये जनरल स्टोर है छोटा वाला। थोड़ा तेल का खर्चा मिल जाता तो यार। हाँ मिल जाएगा सबका बच्चा। गैस स्टेशन है ना, फिल कर लो। तो पैसे दे दूंगा। चलो छोड़ो, आपके लिए मैं डिस्काउंट करता हूँ। हाँ मेरे लिए डिस्काउंट क्या बोल? हाँ आप मेरे को कुछ खाने के लिए ही दे दो चलेगा। हाँ पता है, वही डील आएगा पता है मुझे। चलो फिर मुझे 100 सैंडविचेस और 100 पानी बोतल दे दो। हाँ थोड़ा आप शर्म भी ले लो ऐसे। तो ठीक है मैं आपके लिए ऑफर कम कर देता हूँ, 80 सैंडविचेस 80 पानी चलेगा। एक्सेप्टेड अगेन एक्सेप्टेड। अरे
आपको सस्ता पड़ता है क्या? बेस्ट प्राइस इन सिटी बहुत कम मिल रहा था इसलिए बेस्ट प्राइस पे सॉर्ट आउट करो, अंकल बताएंगे सीधा तुम। I mean like do you own the store? Yep, I do. So like these products are almost free for you, right? Nope. They do. We need to process them. We need to buy them. बहुत कुछ. Hello. कौन सा केबिन है तुम्हारा? एक काम करो ना, मेरा पार्क स्टोर आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। बहुत देर इंतजार किया मैंने। मिरर पार्क स्टोर कौन सा है? मेरा पार्क जनरल स्टोर 24/7। मुझे नहीं पता, लोकेशन भेजो। Okay, so मेरा yes, पार्क sir, I will take a 24/7। leave. ना मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। लोकेशन भेजो। क्या बोला तुमने? Take a leave. Take care. Bye bye, brother. अच्छा नंबर दे दो वैसे तुम्हारा। नंबर दिया तो यार। नहीं नहीं। आपको मैसेज तो किया है मैंने। कहाँ जा रहे हो वैसे? किसके पास? किसी के पास नहीं यार, मैं भी देखता हूँ कहीं पे जगह। अच्छा समझ गया। ऐसे ही सोच रहा था कि तुम ऐसे ही क्यों बैठे हो। वहां पर इसका नाम क्या था, बेचारी हेजल का नंबर मांग लिया तुमने। देखो माई सेल्फ डेविड कामेकाज़े। तो डेविड नहीं है पर तू वो जो सरनेम है ना वो तो है कामेकाज़े। Yes, I knew. दो नंबर दे रहा हूँ मैं, शेयर कर आउट ऑफ स्टॉक। Losing. There you go. Okay. Have a nice day. चलेगा, I'll take a leave. Bye bye. Yep. जय हिंद, जय भारत. I thought it's gone. Okay. Okay. That's what it was. It is 19. I will release stock 58K or everything. Dave, hello. Yeah, what's up? By any chance, do you have a lockpick What do you think of me? that I can borrow? Bruh, you serious? You're a public prosecutor, man. Yeah, I mean, my house doors are stuck and I don't want to spend money on locksmith. Alright, give me a few minutes, I'll try it. Yeah. Give me a few minutes. Please make it quick. See, everybody doesn't like it quick. Yeah, but she's... Yeah, I know that she liked it quick. Then she, that's the reason it's so low. No, someone is waiting for me. Oh, somebody's waiting for you. What's the name of the somebody? Maybe I can help you then. Huh? What? I said, what's the name of the somebody? Maybe I can help you then. No need, man. Huh? No need to know her name. Her name. Okay, now I'm pretty much interested. I need to know her name. Wait a second. I'll ask your accomplices. Hello, that's Guys, it. Yes, sir. दोस्तों, That's right. by any chance क्या किसी के पास भी एक लॉकपिक होगा? ना, हम गलत काम करते ही नहीं, हमारे पास डीलरशिप है, हम डायरेक्ट गाड़ियां बेचते हैं। लॉकपिक क्या, छोटी मोटी चीज। हाँ, that's it. बताओ. How are you? Dave. हाँ, give me a second. मेरे को दे दो ना, मैं निकल जाता हूँ. What do you want? लॉकपिक, bro. लॉकपिक मिलता है इधर? नहीं, वो शाबी वाले ने दिया था मुझे। वैसे फीमेल एम्प्लॉय रखा करो यार। अच्छा, नहीं हम Yes. खाना तो हाँ सस्ता तो है बहुत। कहाँ से? What do you want? $14 का भाई सस्ता। Is this your? This is my car. Bro, you dumb or something? No. Its engine is already on. Yeah, I know. I want something else. Give me the lockpick, man. You won't get the I keys even if you said- lockpick it.
Just let him. Yeah, fine. I said, nah, I just wanna enter my house. I can't enter my house. Yeah, I do not have any lockpick. That's the Oh, thing. fuck you, man. You wasted my time. What the fuck? Yeah. Sorry, that's it. Hello. और बताओ क्या हाल है? All good. अभी स्टोर को रिस्टॉक कर रहा था बस तो। अच्छा वैसे यहाँ पे चलता है, यहाँ पे सिविलियंस वगैरह कम है ना थोड़ा इस तरफ? है बट प्रमोशन चल जाता है हमारा। एवरीबडी नोज दैट दिस इज द बेस्ट प्राइस इन द सिटी। मतलब स्टोर भी ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ओ क्यों? बढ़िया है फिर तो। तुमको क्या लेना है फिर? नहीं मतलब पैसे लगते हैं। अच्छा उसके लिए तो यहाँ नहीं मिलेगा। और बताओ बिजनेस वगैरह कैसा चल रहा है? पैसे वैसे कमाई हो रही है? ठीक ठाक। ऑब्वियसली प्रमोशन तो बहुत चल रहा है। बेस्ट प्राइस यही बोल रहा हूँ। कहाँ पे सबको चल best रहा है? price। वैसे दिखा तो नहीं मेरे को। देखो फाइनली पे देखो, ट्विटर पे देखो। See। गलत जगह प्रमोशन कर रहे हो तुम, मुझे लग रहा है। हम्म, प्रमोशन देखो, प्रमोशन करो न्यूज़ चैनल पे, समझ रहे हो? अच्छा हाँ वो भी है हमारा इरादा। हाँ हाँ, इरादा से थोड़ी होगा। देखो जैसे आज यहाँ पे टड़ंग करके ऐसे रेड कलर का आता है ना, वो सब देखते हैं। अच्छा हाँ हाँ तो अभी कल आएगा हमारा, देखना। आज देखो इसमें हमने यहाँ पे डाला था अपना ट्विटर ओपन करो, हम्म, नीचे जाओ। अरे भाई इसने कितना डाल दिया। हाँ देखो इसमें ऑफिशियल विजिल न्यूज देख रहे हो? हम्म हम्म हाँ पलीटो सीधे से बंद हो गई है सब। हाँ यप। गेस करो ओपनिंग डेट फिर। आज कौन सा तारीख है? आज है तुम्हारा 27। देखो ऐसे ही आते लोग। 27 आई गेस फर्स्ट। लिख दो फिर, जिसका गेस ज्यादा होगा उसको दे, उसी डेट पे खोल देंगे। हम तो अभी भी खोलने के लिए रेडी है। अच्छा क्या? शोरूम। अच्छा शोरूम। हाँ हाँ। वैसे मैं तो कहूंगा तुम्हारा बिजनेस तो सस्ते में भी दे रहे हो, तो मार्केटिंग करवा लो बिजनेस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स द वे। भी तो वही है, इंतजार वही है। या फिर तुमको ऐसा बनना पड़ेगा, ये जो बर्गर शॉट में एक ही ऐड दे के रखती है ना, ऐसे भी कर सकते हो। वैसा। बट उसको नोटिफिकेशन सही से नहीं आता है मेरे ख्याल से। दैट्स द मतलब प्रॉब्लम। ऐसा बर्गर नोटिफिकेशन नहीं आता। एक्यूफिना, ये तो समझ रहे हो, ये थोड़ी मतलब ब्रांड आर्टिफिशियल है। प्रमोशन हो गया है। Remember that store? हाँ Yeah, Winewood इस store. तरह Yeah, Winewood one. मतलब लेजिट नहीं है, समझ रहे हो? थोड़ी लेजिट वाली करनी आती है Let's go. Let's तो go. और मजा आएगी। हाँ फिर यहाँ पे पेट्रोल भी है, फूड भी है। बताओ हमें कैसे याद करा? अरे हमने सोचा क्या कर रहे हो तुम शहर में, अकेला ना हो जाओ, इसलिए हमने याद किया तुमको। अकेला बोल सकते हो, हाँ पर वो तभी तो हम अकेलापन तुमको याद कर रहे हैं। हाँ हाँ, दूर करने वाली कब आ रही है? हाँ, मुझे मेरे पता को भी नहीं। चाहिए एक। वो किस्मत लिखेगी, किस्मत बोलेगी, मैं खुद बोलूंगा। अच्छा किस्मत में लिखा है वैसे तुमने डीलरशिप गांड देखा है घिसना। हमारा? नहीं देखा है, बताओ कहाँ पर? पलीटो में है, थोड़ा दूर है। आओ तुमको दिखाते हैं। ऐसे भी कुछ काम कर रहे थे क्या तुम? नहीं अभी तो फ्री हूँ, स्टॉक अप हो गया वो। आओ आओ फिर। सर ये पेट्रोल पंप भी तुम्हारा है क्या? नहीं अभी ऑक्शन में आने वाला है आई गेस। अच्छा ये लेने का कोशिश तो है, देखते हैं। हाँ ये हो जाएगा ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया हो जाएगा। एक काम करते हैं फिर, इस गाड़ी पे तेल कम है, हम अच्छी गाड़ी पे चलते हैं। ये कैसा लग रहा है तुम्हें गाड़ी? ये बढ़िया है ना? हाँ हाँ अच्छा। देखो भाई, तुम्हें चाबी दिया था इस गाड़ी का, याद है ना? थोड़ा निकालो चाबी। हाँ हाँ, हम थोड़ा ऐसे एक बार देख के आते हैं कि इधर में क्या क्या है शहर में। तब तक वो चाबी जो दिया था वो एक बार स्टार्ट हो जाए तो वो पेट्रोल पंप के सामने रख देना आते हुए। हाँ मैं कह रहा हूँ तुम्हारे जो यहाँ पे शॉप खोला है, कल जाके अगर ये हॉर्नीस खुल जाए फिर तो कंपटीशन हो जाएगा तुम्हारे लिए। बिल्कुल बस जो जनरल स्टोर में मिलेगा यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर बस खाना और पीना मिलेगा, जनरल स्टोर पे और भी मिलेगा इन फ्यूचर। जैसे तुम्हारे इसमें तो खाना जैसे पीना मिल रहा है। जैसे सिगरेट हो गया, वो तो लोग जेब में लेके घूमेंगे, उसका तो क्या ही है। सैंडविच हो गया, हाँ, तो वैसे खरीदना तो तुम्हारे पड़ेगा पास स्टोर से ही ना। तुम बैंडेज वगैरह रख नहीं रहे हो, फिर लोगों को नहीं चोट लगी वो तो फिर थोड़ा क्या करोगे? दिक्कत है, हमारे डॉक्टर्स भी नहीं दे रहे। अच्छा आओ आओ।
मिल गया ना चाबी रिको भाई? आओ बैठो। वो तब तक वो चाबी नीचे गिर गया होगा घुसते हुए, उठा ले बस चाबी। हाँ वैसे तुम लॉयर भी हो फिर बिजनेसमैन भी हो, ये कैसा सीन है? एक पैशन है, एक देखो भाई डायरेक्ट कम्युनिटी के एकदम लिए बस। नो पलीटो डीलरशिप। रुक जाओ, मुझे ये लेना टैबलेट। टैबलेट? कौन सी टैबलेट ले रहे हो? क्या टैब अच्छा टैब मिलेगा, मैं भी ले लूँ क्या टैबलेट? पैसे है? ऐसे तो नहीं है, तुम हो ना तो फिर गाड़ी बिजनेसमैन। में बैठो चलो। अरे अरे stream पे guys, as you hear me on the stream, just tell me you can. पता नहीं okay. वही तो आउट ऑफ स्टॉक कुछ है नहीं, लाइटें आउट कितनी ऑफ लगा स्टॉक। रखी है इसने। वैसे एक बात पूछूं तुमको देव? पूछो। थोड़ी इंटरनल है बट हाँ तुम जैसे लॉयर हो, तुम्हें गवर्नमेंट बिजनेस दे कुछ घपला तो नहीं किया ना? कि गवर्नमेंट स्टोरी है ये? तुम गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट लॉयर हो ये बताओ सबसे पहले तो। तुम क्या सोचते हो बताओ? तो लग रहा है तुम गवर्नमेंट लॉयर हो। अच्छा हाँ तुम बताओ अभी तुम नहीं, कौन से हो? प्राइवेट अटॉर्नी, प्राइवेट कंप्लीटली। दिस इज ऑन लीज। ये जो भी स्टोर है ये मैंने स्टेट से ऑफिशियल लीज पे लिया है, इट्स ऑल माय कितने मनी। साल? अच्छा 6 years। तो गवर्नमेंट ने सेटअप करने में भी कुछ भी हेल्प नहीं किया? Nope, nothing at all। पैसे वैसे देके कुछ तो नहीं। वैसे कितने कमाई हो जाता है तुम्हें? हो जाता है, सिंस माय प्राइस आर ऑलरेडी अफोर्डेबल, हो जाता है 1-2 हज़ार मोस्टली। अच्छा बढ़िया है फिर तो। मतलब अभी सोचो कि मैंने बर्गर लिया जैसे, हाँ तो कॉस्ट तो बहुत कम आती होगी। नहीं, हम जो प्रोसेसिंग करते हैं पहले ये है कि वील टेक वेजिटेबल्स जो भी सोर्स करते हैं, वी सोर्स देम, एक वीट वेजिटेबल जो भी करना है, एंड देन वी प्रोसेस देम। उन दोनों के लिए वी हैव सेपरेट टीम। वो लोग जो प्रोसेस करके मीट हम पे लेके आते हैं, हमारे जो शेफ्स हैं वो बनाते हैं खाने, लाइक सैंडविचेस वगैरह वगैरह, और बॉटल पैकेजिंग जो भी है वो करते हैं। एंड देन आफ्टर ऑल द प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन इज डन, वी जस्ट सेल इट इन द स्टोर। इतना। तो तुम्हारे एम्प्लॉइज कितने हैं अभी? एम्प्लॉइज हैं आई थिंक 4-5 है, अनऑफिशियली और भी है, ऑफिशियली 4-5। नहीं मतलब जिस जो रिस्टॉक वगैरह कर पाए, ऐसा तो मैं जाके अभी तुम बोल दिए कि रिस्टॉक करो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ना। नहीं ऐसे कुछ तो वैसा तो उनको क्या सैलरी देना पड़ता है तुमको इसमें से कि नहीं, अभी तक तो इट्स नॉट अ सैलरी बेस्ड थिंग, इट्स जस्ट कि मैं आई जस्ट गो फॉर द कमीशन बेसिस। ओके बात बताओ, इसमें तुम्हें टैक्स भी तो देने पड़ते होंगे फिर गवर्नमेंट को? हाँ टैक्स देना पड़ता है, एवरी डॉलर अर्न 20% टैक्स। हमें तो शायद और ज्यादा पड़ेगा। हो सकता है प्रॉब्लम। और आपका बॉडी से कमाई भी हजारों में हो इजीली। हाँ वही तो, हजारों में वो तो होना ही है, हजारों में ऑब्वियसली होगा। मैं रहूंगा जो पहले खरीदे। बट बढ़िया है, वो तो हमारे ऊपर है हम कितने प्रॉफिट रखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। यप, बढ़िया सिस्टम लगा मुझे। पूरा डिपेंड करेगा हाउ वी वांट पीपल टू बी विद यू, बिजनेसेस के साथ तुम्हारा तालमेल सब कुछ डिपेंड करेगा। हाँ वही अभी एम्प्लॉइज भी रखेंगे तो कितने सैलरी वगैरह देने हैं वो भी कैन ओनली डिसाइड, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, अगर तुम्हें कोई जॉब वॉब ढूंढना है ना। मैं 2-3 लोग हैं इंटरेस्टेड है इसमें। हाँ तो दे कैन कम। अभी तो मोस्ट प्रोबेबली हमने अभी सोचा नहीं है कि या तो सैलरी बेसिस पे रखेंगे कि मतलब कमीशन बेसिस पे। बट मुझे अगर आप पूछो ना तो मैं सैलरी बेसिस पे प्रेफर करूंगा। क्यों पता है? क्योंकि जो अगर कमीशन बेसिस पे रख दिया ना तो वो बंदा आएगा, गाड़ी बेचेगा और निकल लेगा। बट
अगर तुम उसको सैलरी बेसिस पे रखोगे प्लस तुम कमीशन भी दोगे, तो समझ रहे हो? अच्छा, वो यहाँ तो पे वो इंक्रीमेंट होगा, रुकेगा भी। बोनस इंक्रीमेंट होगा उसका। हाँ, और शहर में मुझे जितना लग रहा है ना कि लोगों की कमी पड़ने वाला है, एम्प्लॉयज की, मतलब मालिक बहुत हो जाएंगे, हाँ तो हाँ एम्प्लॉयज तो थोड़ी अच्छे पैसे वैसे दे के रखने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर दूसरे लोग उठा लेंगे एम्प्लॉयज को। ऑब्वियसली और सरस्वती अपना है मुझे। बिजनेस भी थोड़ा ऐसा शहर से बाहर है ना, तो वहां तक जाने आने का भी खर्चा भी तो देना पड़ेगा। ऑब्वियसली जैसे वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वही चीज कोई ना, सोच रहे थे एक हम। जेट दे देंगे ना, प्राइवेट जेट गिफ्ट कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। पैसे है तो उन पे प्राइवेट jet, अभी तो टैबलेट की मेडिसिन पैसे चल तो रही है। हाथ का मैल है भाई, हाँ हाँ, वही मैल भी हाथ में नहीं निकल मैल रहा ही है अभी। नहीं है। मैल वही नहीं वही निकल रहा ना मैल, थोड़ा डेली और नहा वैसे के दो ना। कोई केस वगैरह अभी तो आया? अभी तक तो कुछ नहीं आया होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन का आना चाहिए ना पहले, केस करने से पहले। कॉन्स्टिट्यूशन का आने दो, उसके बाद सब देखा जाएगा। अच्छा, ओ समझ रहे। तो फिर एक बात बताओ, अच्छा तो फिर अगर ये मेयर हट जाए, हाँ तो ऐसा कुछ तरीका है कि हम बोले हम टैक्स ही नहीं देंगे? हो सकता है। there's a way PIL रखे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वहां पर केस अगर कर तुम्हें देंगे हम। टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं, मेयर की जरूरत नहीं है इसमें, ऑनेस्टली बताऊं तो। अगर jurisdiction में तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मेयर डज नॉट प्ले अ रोल इन द टैक्स। there is a department called State Legislative Authority, SLA. Okay. This is a department which runs over the governor and the mayor. अगर कलेक्टिव डिसीजन हो गवर्नर और मेयर का साथ में, तो भी इस डिपार्टमेंट जो है jurisdiction के अंदर आना चाहिए, एंड दिस डिपार्टमेंट हैज अ फाइनल से। तो अगर इस डिपार्टमेंट में सब स्टेट डिपार्टमेंट से लोग हैं, फ्रॉम DOJ, फ्रॉम PD, फ्रॉम EMS, फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट, तो उन सबका से होगा तो ये होगा। तो अगर सोचो कि मैं ऐसा कहूँ कि कोई जो मेयर इलेक्शन आ रही है, कोई अपने बंदे को उठा के जितवा दूं पैसे वैसे खिला के, और फिर बाद में टैक्स मोनोपोली करवा दूं, कि ऐसा कर देंगे कि दूसरे वाले जो बिजनेसेस है ना, वो अपने प्राइस में दे ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको इतना टैक्स लगेगा। तो फिर ऐसा हो सकता है पॉसिबल? हो सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अभी आया नहीं, सो वन डिस्क्लोज एवरीथिंग, बट देयर आर सम लूपहोल्स इसके अराउंड में। अच्छा ये देख, अरे भाई साहब मेरे दोस्त लोग आए, उनको जरा गाड़ी दिखाए है ना, अच्छी अच्छी। हाँ वो आपने मुझे कैंटीन दिखाए वाले थे ही है वैसे। अभी तो। हाँ नहीं हाँ, उनको कुछ सवाल है, वो सवाल करना चाहते हैं आपसे। हाँ हाँ, क्या हाल जी ये है? देखो, हाँ, ये ओनर लोग हैं, इनसे इनको सवाल करो सारे जो करना है। बताओ सर, क्या सवाल भाई है? साहब, हमें अरे जो सर, गाड़ियाँ ये कॉन्टेंटर गाड़ी कितनी शानदार है, इसकी प्राइस प्राइस क्या है, और इसके फीचर नीचे बताओ थोड़ा सा आप। अच्छा, इसमें देखो ये कंटेनर तो 4 सीटर है वैसे अभी, बाकी अच्छा, मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो इसको, कंटेनर वगैरह को। ओके। और इसमें ये पीछे जो है ना, ये खुला है ना, इसको छत वगैरह भी लगा सकते हो। ओ, यप। अच्छा, ये कब और आपकी इसका ओपनिंग कब हो इसका रही है इसका पीडीएफ की? ट्रंक कितना साइज का है? ट्रंक का कैपेसिटी क्या है? ट्रंक मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 600 है। आप यहाँ से टेस्ट ड्राइव लेके आप देख सकते हो ट्रंक वगैरह, या चला के भी अच्छा, देख टेस्ट सकते हो। ड्राइव ली हमने अभी जस्ट, सही है। हाँ मैं थोड़ा ये सा पूछ रहा ब्रेकिंग था कि ब्रेकिंग अपग्रेड की जरूरत लग रही थी। हाँ, देखो वो ये तो स्टॉक गाड़ी आया ना, तो थोड़ी तो मैकेनिक शॉप वगैरह से आप अपग्रेड कराओगे ना, तो बढ़िया चलेगी। ओह हेलो, अगर नाइस। अगर आपको वैसे बंदों के साथ घूमना है, थोड़ा फास्ट चाहिए, शो ऑफ उतना नहीं चाहिए, तो एरिस आप ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया है। और बफेलो भी बहुत बढ़िया है, अब वो बाहर बफेलो में पूछ लगी रहा हुई था डन है। है, कि डन अगर है। ये पूछ अच्छा, रहा था कि इसके कलर वेरिएंट कितने हैं अभी कलर तो आप अवेलेबल? जो भी कलर चाहो करवा देंगे, और बाकी अगर आपको डन है, स्पेसिफिक कोई यूनिक कलर चाहिए, तो वो तो मैकेनिक शॉप से हो जाएगा, रिपेंट करवा ठीक देंगे है। वो लोग। और ये गाड़ियाँ डिलीवरी आप हेलो 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 सेम डे कस्टमाइजेबल दे है देते ना? हो या हाँ हाँ, कस्टमाइजेबल है, यहाँ पे बुकिंग नहीं लाइक करना इनका वो होता जो है? है स्पीड वीड वगैरह बढ़ सकती है? हाँ हाँ हाँ, वो मैकेनिक शॉप में ना उसको अपग्रेड करवा अरे सकते मैं हो ये आप। कह रहा था वो कि इसकी ओपनिंग कब है? मोस्ट इसका डिलीवरी प्रोबेबली सेम डे अभी या सेम डे है अभी तो। डन? रीस्टॉक्स चल रहे हैं,
तो कुछ सैंपल्स आ रहे हैं और बाकी जो भी हमारी शिपमेंट है वो आ रही है, ताकि ऐसा ना हो कि शहर में जैसे 2 दोस्त आए 3 दोस्त आए, आप लेके घूम रहे हो, दूसरे वाले को स्टॉक ही ना हो देने के लिए। हाँ तो ये हम मैं पूछना था। हाँ, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जैसे स्टॉक कंप्लीट हो जाए, मतलब उतनी भी ज्यादा तो हमारे पास भी फंड्स नहीं है, बट हाँ जितने मैक्सिमम हम स्टॉक ला पाए देन वी विल स्टार्ट। मोस्ट प्रोबेबली आप सोच लो कि कल, अगर कल होना ही चाहिए, अगर कल नहीं होता तो परसों तो 100% पकड़ लो आप। तो आज आप नहीं दे रहे हो राइट डिलीवरी? नहीं, अभी रीस्टॉक्स हो रहे हैं तो इसीलिए, तो जैसे ही रीस्टॉक हो जाएंगे देन वी विल स्टार्ट गिविंग द अच्छा, इनमें डिलीवरीज। से अब एक भी नहीं मिल पाएगी हमें? ओके। क्यों? मतलब अभी के एक भी नहीं मिल पाएगी मतलब? अभी मतलब अभी नहीं मिल पाएगी, बट जी जैसे ये जी ओपन हो जाता है ना तो जी मिल जी जाएगी। जी एक क्या जी। फिर ताज चाहिए अभी 5 तो चाहिए? कहने शॉप के के लिए मतलब अभी प्रीव्यू के लिए ओपन ही रखी नहीं है हुआ ना, उन्होंने। शोरूम अच्छा, ओपन ही उनका नहीं हुआ है स्टोर तो मिले उनका सबसे स्टोर बड़ा अभी एक ओपन डाउट नहीं था। हुआ है ना, तो कैसे सबसे पता बड़ा चलेगा? एक हाँ डाउट था। मतलब कैसे? हाँ मेरा सबसे बड़ा तो एक ये डाउट था आपसी कि के इसमें जो चक्कर में वो प्राइसिंग दिख दिखा रही रहे है, हैं। हाँ हाँ, वो यहाँ पे जो प्राइसिंग वही प्राइसिंग रहेगी कि दिखा रहा है बढ़ेगी? आप सोच लो ऑलमोस्ट वही रहेगा, क्योंकि हमने अरे शहर के बारे में, अगर आपको कोई सजेशन है तो आप डेफिनेटली आप दे सकते हो, अगर आपको जी जी लगता जी, है। प्राइसिंग बहुत अच्छी है। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अभी शहर नया है, लोग ग्राइंडिंग इतना मतलब करके भी मतलब समझ रहे हो आप, 2 लाख 3 लाख के ऊपर वाली गाड़ी लाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ना ना, देखो हम सच बताए तो हम प्राइसिंग इस तरह से रखते हैं कि सब अफोर्ड कर पाए कोई ना कोई गाड़ी। और सेकंड ये है कि ये डी क्लास है, डी क्लास में हम अगर 1 लाख 1.5 लाख रख देंगे तो फिर मतलब नहीं है, वो मुझे ये गाड़ी को अच्छा लगा जो जस्टिफाई आपका, नहीं करेगा। जो आपने प्राइसिंग रखी है बिल्कुल जस्टिफाइड है। और सबसे बढ़ के जो आपने स्टोरेज वैन रखी है 20,000 की, हाँ हाँ, परफेक्ट एकदम बिल्कुल। यस, क्योंकि देखो जस्टिफाई भी होनी चाहिए ना। अभी मैं डी क्लास का गाड़ी 1 लाख में बेचूं, फिर कल आके सी क्लास की गाड़ी कितना 2 लाख, फिर बी क्लास का कितना 3 लाख में बेचूं क्या? सही बात है, बहुत दिक्कत महंगा हो जाएगा, ऐसे तो दिक्कत इकोनॉमी ये हिल जाएगी। हाँ, और नहीं तो क्या होता है ना कि अभी जैसे सोचो कि इसको मैंने 1 लाख में बेच दिया, कल जाके बी क्लास भी 1 लाख में बेच रहा हूँ, सी क्लास भी 1 लाख में बेच और रहा हूँ। एक बात ये भी है ना, आप 10 गाड़ियां बेच के अपना 20,000 का प्रॉफिट ज्यादा बुक कर पाओगे, ना कि एक गाड़ी 1 लाख की बेच के। यस, और देखो सीन तो देखो शहर में अब भी घूमे होंगे, बहुत सारे डीलरशिप है जहाँ पे स्पेस जी, वगैरह है। आज नहीं तो कल कोई तो लेगा ही। तो करेक्ट हम करेक्ट। चाहते हैं लॉयल कस्टमर, हमें ये नहीं चाहिए कि हम एक बार कस्टमर आए कि दोबारा वो घूम के भी ना देखे कि ये क्या ले लिया, समझ लो। तो हम चाहते हैं कंपटीशन सही बनाए बात। रखे। जब ऐसा नहीं है कि क्योंकि अभी मोनो 1 लाख की गाड़ी दे दे कि वही वो मैंने नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे शहर देखे, लेकिन बट इसमें ये देखा कि प्राइसिंग आते साथ ही गाड़ियों की मतलब सबके पास ये है कि कोई कितना गरीब से गरीब हो चाहे ज्यादा पैसे वाला हो, सब भी हाँ सब ले सकते हैं घूमने के लिए। बट यस, मैनेजर साहब, हेलो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा हाँ कि हाँ, मैं बनूंगा guys, can you आपका hear me on the लॉयल stream? कस्टमर और आपको Hello? कस्टमर लेके आऊंगा। बस ये बताओ अरे आप कमीशन कितना दोगे शांति से? पहले अरे पहले शुरू तो चालू तो अरे हो यार लो। मतलब तो बिजनेस नहीं नहीं बिजनेस भाई ही तो साहब बढ़ा जो रहा भी हूँ ये सर बात का। बोल रहे थे ना, देखो मैं मैं वही बोलता कह हूँ रहा हूँ। आपको कस्टमर की तरह नहीं, यहाँ पर आके काम करना चाहिए। हाँ, एम्प्लॉय के लिए अभी कल परसों स्टार्ट होगा एम्प्लॉय हायरिंग, उसमें आप कर जाओ, अगर हैं? आपको ये फिर कमीशन ये और सवाल सैलरी मुझे दोनों भी था मिलेगी ना। कि तो एम्प्लॉय अच्छा हायरिंग का फिर, क्या सीन है? यस यस, मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं तो परसों स्टार्ट हो जाएगी तो फिर जॉब ओके। एम्प्लॉय की हायरिंग। बात कर लेते हैं। कुछ फायदे क्या क्या हैं जॉब में? कुछ फैसिलिटी वैसिलिटी अलग से मिलती हो, एक ही बता दो अच्छे कुछ। कपड़े नए आएंगे। हैं हम शहर में। कपड़े मिलेंगे, सैलरी मिलेंगे, और क्या, और हाँ, कमीशन भी मिलेंगे। अरे अच्छा, वाह, फिर तो डन है। हमें इन मेरा कामों फॉर्म में भर दो अभी एक्सपीरियंस कभी। नहीं है तो काम तो मिलेगा नहीं। सर बताओ कहाँ साइन करना है, मैं अभी साइन करके ही जाऊंगा अरे आज। अरे इंटरव्यू होंगे उससे पहले तो वैसे। मैं क्या कह रहा था ओनर साहब हाँ हाँ, डन है डन है कि डन है। अगर जैसे हम इन कामों में फ्रेश हैं, कोई जानकारी नहीं है, तो काम तब भी अगर हम लोग अप्लाई करें तो ऐसा तो नहीं है कि कहेंगे आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं मिलेगा। नाइस देखो पॉइंट। मैकेनिक शॉप तो है नहीं, बने बनाई गाड़ियां हैं, बेचनी तो है। ये बात बराबर। है। बात करने बस होती टायर है, यू थोड़े गाड़ियाँ से जस्ट खुलवाने नीड हैं। टू गाड़ियाँ हैव गुड हाँ स्किल्स गाड़ियाँ इन सेल्स। गाड़ियाँ पहचानने बस की होनी चाहिए, बस कस्टमर मतलब को आप टीमेन को कैसे। देखो 50 की गाड़ी 1 लाख में बेचनी है अपने को, बस डन बस सिंपल है। बात है। अभी अगर तुमको मैं पूछूं ये बराबर। कितना सिलेंडर है कितना क्या है, तो फिर हमारा क्या काम, हम उनको सिखाएंगे ना कि जो भी हाँ, गाड़ियां है। अभी मैं और आपको पूछूं, आजकल तो बताओ बताओ। टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है भाई, टैबलेट हम्म, मैबलेट में सारी आप गूगल करोगे सारी डिटेल आ जाएगी, वही कस्टमर को बोल के वही बतानी है। तो। अभी बस सोचो अब तुम मैंने ये सारी इंटरव्यू में स्कीम आपको, सबको मत बता देना, पता पड़ रही हाँ मेरी जॉब कोई और लेके बैठा है।
वही तो वही सीन अच्छा है ओनर भाई, साहब जितने जो एक गाड़ी और और हीमैन प्रश्न अरे और जय क्वेश्चन ओनर था। भाई तुम मैनेजर दोनों मेरे मैनेजर बाद फॉर्म भरोगे, ठीक है? पहले ओके मैंने ओके मैंने अप्लाई किया है। ओके ओके अंदर जरूर जरूर, कोई दिक्कत नहीं, बरोबर है। बता। भैया सब ओनर लाइन साहब में आओ, एक नंबर नहीं बात तोड़ेगा ये कोई। है कि जैसे आपका कोई एम्प्लॉई है, हाँ हम गाड़ियां लेने आते हैं, हाँ हमें गाड़ियां प्राइस से लगभग दुगने या बहुत ज्यादा दाम पे बेच देता है वो। बाद में हमें पता चलता है कि उसकी एक्चुअल कीमत कुछ और है और सब लोग उस कीमत पे ले रहे हैं। तो मतलब अगर हम उसके खिलाफ कंप्लेन करें या वो करें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने हमें ज्यादा बेची है या कम पे बेची है? वो तो जॉब चली जाएगी सर उसकी तो। देखो, हमारे जो सिस्टम्स है ना उसमें कितने में बेची है, किसको बेची है, सारी डिटेल्स रहते हैं। आप ऐसा बस थोड़ी है बस कि बस खिलौना बस थोड़ी है बस कि आप यहाँ से ले चले गए और निश्चिंत चला हो लिए। जाए। इसके रजिस्ट्रेशन हो गई ना पूरी, जी जी जी। करेक्ट पीडी है। वगैरह सब जगह पे रहेगा आपका डिटेल्स कि आपके जीएसटी नाम पे बिल गाड़ी जीएसटी रजिस्टर है। बिल और भी एक आएगा मेरा आपको। क्वेश्चन है कि अगर हाँ गाड़ी मुझे वो वापस तो बेचनी कस्टमर अगर होगी तुम्हें तो खुश होके $10,000 एक्स्ट्रा दे जाए, तुम्हारी जेब में तो रख दे प्राइस जबरदस्ती, वो डेप्रिशिएट अलग बात है। होगा देखो या वो तो फिर अलग बात। सेम रहेगा? मतलब आप दोबारा बेचना चाहो तो देखो, यप यप। गाड़ी ऐसी चीज है, जैसे ये यहाँ से तुम चलाओगे ना, जैसे तुम पैसे दे दिए तो उसकी थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी वैसे तो। बराबर बराबर। हाँ बट रीसेल तो कर पाएंगे ना। हाँ मतलब इन फ्यूचर डेफिनेटली यस, अभी तो फिलहाल मोस्ट प्रोबेबली नहीं। देखो अभी क्या है ना कि अभी ओके आप लोग जो भी, किसी के पास गाड़ी है ही नहीं, अभी लोग डन है। खरीदेंगे। फिर जब नए नए गाड़ी आएंगे तो ये जितने भी गाड़ी उनकी यूज के नहीं होंगे या फिर जो अपडेट हाँ कराएंगे तो हाँ डेफिनेटली वो कर पाएंगे। और डेफिनेटली हम तो सारे कस्टमर्स का डिटेल्स रखेंगे जिन्होंने हमसे गाड़ियां खरीदी है, हम इंश्योर करेंगे कि उनको अच्छे से प्राइस में ठीक है। मिले। एक सेकंड ना, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ श्योर श्योर। ठीक है ठीक। ठीक है ठीक है। एक सजेशन देना चाहता हूँ ओनर साहब। अरे मैं ओनर नहीं हूँ, मैं अरे मैनेजर हूँ। हाँ मैनेजर साहब, ओनर, मैनेजर हाँ तो साहब मैनेजर साहब पहले अपना एक नाम तो सजेशन। बताएं यार, इतनी बातचीत हो गई नाम। अरे मेरा नाम है दैट्स इट। क्या क्या नाम क्या है? दोबारा। इनका मुश्किल नंबर है। है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ हाँ थोड़ा हिंदी मीडियम यस। वाले हैं ना। ठीक है अरे ठीक कोई है। दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम तो हम भी है, तो पापा इंग्लिश मीडियम थे। मैनेजर अरे साहब मैं ये क्या कह रहा बात है। था, आंटी एक हाँ आंटी हाँ सजेशन है, आंटी। हाँ, फ्यूचर वो के भी लिए सेम आप सेम। फ्यूचर के लिए आप प्री ओके बुकिंग वगैरह भी रखे तो अच्छी बात रहेगी। जैसे गाड़ी की बुक कर दी तो पहले उस इंसान को मिलनी चाहिए जिसने बुक की हो फर्स्ट आके। हाँ वो तो होगा कुछ होगा ऐसा बिल्कुल। होगा। देखो अगर जनरल हाँ गाड़ियां होंगे तो डेफिनेटली, अगर वो जी कुछ जी स्पेशल गाड़ियां हो शहर में एक ही दो ही, तो यहाँ पे पीछे देख रहे हो, वहाँ पे आपने देखा हाँ पीछे वहाँ पे एक ऑक्शन हाँ के हाँ लिए लिमिटेड जगह है। लिमिटेड एडिशन भी आ रहे हैं क्या वो? हाँ डेफिनेटली आएंगे। बस नहीं वही उसी अभी चीज के अभी लिए मैं बोल रहा था। कल अभी कल। नहीं आ रहे, नहीं नहीं अभी नहीं आ रहे। बट हाँ मैं एक बात बता दूं, स्टॉक आप जितने सोच रहे हो उतने नहीं होंगे। हाँ वही चीज ओके स्टॉक लिमिटेड ही होंगे। डन है। मैं उसी के लिए तो पूछ फिर रहा था आप कि प्री हमारी बुकिंग बुकिंग के ले लिए। लो, आप आज ही ये कंटेंडर की बुकिंग डाल लो। आप एक काम करो, आप तो हमारे नाम से बुक कर देना। हाँ हाँ डेफिनेटली। ऐसा तो कर नंबर सकते हैं, दे ऐसा दो, तो कर वैसे सकते हैं। मैसेज मेरे को मैसेज कर दो बस, मैं आपको नंबर दे दे ठीक है रहा हूँ। आई थिंक ये भाई ने नंबर तो शेयर पहले ही करो बुक कर आप। लिया है। और मुझे एक स्टोरेज वैन चाहिए। हाँ हाँ जी जी मैं भेज रहा आपका भी भेज दो हूँ। ताकि हाँ मुझे भेज पता चले। एम्प्लॉइज होगा। मतलब कल। हेलो देव, एक डाउट था। हाँ हाँ एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। मतलब पूछा था कि हमें बिजनेस के लिए करना है तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस के लिए करना है तो। क्या मतलब किससे बात करनी पड़ेगी? अच्छा मेयर। मेयर क्या अभी यप है वो? आई डू नॉट नो दैट। एक बार सिटी हॉल जाओ उनसे पूछो, बता देंगे। चीफ ओके जस्टिस ओके कोई है तो वहाँ पे। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। विच बिजनेस हो? टैटू शॉप। द वन यू वांट टू। ओके या राइट डन। ठीक है, विल कॉल यू। यप
मेरे मुंह में फेंक के मारोगे तो फिर समझ रहे हो, ऐसे कस्टमर्स की वैल्यू होती है। बराबर बराबर राइट। बराबर। मेरे को मैसेज कर दिया है वो, ऑर्डर आपने मेरे को दिया है तो मैं डिलीवरी कल करा दूं आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। डन है फिर आपकी। मैंने है ना एक वैन बुक कर दी और एक बफेलो बुक कर दिया। लाओ एडवांस दे दो आप 20K बस। शायद भाई आवाज ऊंची करो थोड़ी। मेरी आवाज इतनी ही है। हाँ फिर ठीक। ठीक है ठीक। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा जी। मतलब ये मत सोचना बुकिंग अमाउंट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है? अरे सर किडिंग कर रहे हैं, हम तीनों नहीं मित्र मैं बता मंडल रहा एक ही हूँ, पता चले ग्रुप में हैं। पता चले कल कोई आया आपको बुला रहे बुकिंग, हाँ वो हाँ दो 5,000। 2020 स्कैम हो गया। हाँ वही वही वही। करेक्ट है करेक्ट है। बताना जरूरी है सब सही है। चीजें। हाँ चलिए मिस्टर भैया, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई हमें। अरे आपके जो सेम साथ खड़े हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई आपके नए शोरूम की, और अरे आपको भी। हाँ इनको ये तो डीओजे है इनका। मिरर पार्क में जो फूड स्टॉल है ना वो इनका है। नाम क्या है इनका? ओ हेलो हेलो सर। हाँ, उसमें क्या हाल सबसे है? सस्ता बर्गर वहीं पे डीओजे मिलता डीओजे बोलेगा तो है। हाँ मतलब डीओजे मतलब वो लॉयर लॉयर वकील कल साहब। जाके आप वकील, हाँ। वकील ओ साहब कल लॉयर जाके वकील आप ये साहब हैं वो। ठीक है। हिंदी वकील मीडियम है साहब। यार। ओके भैया ओके साहब थोड़ा ओके सा ओके ओके। देख के। हाँ डीओजे साहब अब मुझे आपसे बहुत सारा काम है, आपसे बात करेंगे हम। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ ये केस है मतलब आपके लिए इनके पास। अच्छा ये मेरे बहुत पुराने दोस्त है, ऐसे अच्छा वकील है। आपका कभी भी क्राइम वाइम हो क्या बात तो है, नाम छुपाने क्या में है बहुत वकील एक्सपर्ट है। साहब का? देव देव रोमानो। सॉरी इनके एक और बात। देव देव रोमानो। देव इनका इनका ओ एक भाई देव था। भाई। इनका एक भाई था टॉम करके, इनके बड़े भाई, वो भी बहुत बढ़िया वकील थे। अच्छा हाँ नाइस नाइस। हमें तो आज तक खैर वकीलों की जरूरत ना पड़ी है, भगवान के ऊपर वाले की दया से। अच्छा अच्छा हमें पड़ जाती बट थी फिर। मुझे पढ़ने जब भी वाली पड़ेगी, शायद। जब भी पड़ेगी देव भाई को याद किया जाएगा। और बिल्कुल हाँ बिल्कुल। और ये भाई फीस अपना एकदम नंबर बहुत दे कम दो प्लीज लेते हैं। जरा। हाँ अरे हाँ देव जी भाई बता। पहचाने नहीं क्या? देव भाई अरे हम मिले तो थे। ये तुम हुए। जैद। अच्छा अच्छा। मैं खड़ा, मैं क्या पहचान वो तो रहा क्या हूँ। है कि अभी अभी चल रही है सब चीजें धीरे धीरे। ये कब सब डिसाइड अब किया देव तरक्की भाई कर रहे आपने हैं। एडवोकेट अच्छा बनने का? ये हेमंत रॉय कौन है अभी? मैं अच्छा आपने लाइक किया था ना मेरा ट्विटर पोस्ट आई थिंक। यप 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 हाँ यप यप। वैसे अरे बाय द मैंने वे ट्विटर पे अकाउंट ही नहीं बनाया। मुझे चॉप सब सिखाने वाले देव भाई हैं। ओ भाई साहब। वो देव भाई तो ओपी हो जॉब गए। अरे आप ही बचा सकते हो फिर मुझे। प्राइवेट वकील साहब लॉयर है, ये प्राइवेट क्या हो रहा लॉयर है है, साइलेंट में? प्राइवेट लॉयर है, प्राइवेट लॉयर है, गवर्नमेंट थोड़ी है। मैं अरे तो वही नहीं बोल नहीं रहा वकील हूँ। इनके की के नाम के काला कोट सामने की इज्जत तो लॉयर रखना लिखता पड़ेगा। हो। हाँ हाँ ये तो सबको दे दिया। देव रोमानो राइट। हाँ जी मेरे पास तो है आपका नंबर। हाँ हाँ। चलो मैं भेजता हूँ देव भाई को। अच्छा आया मेरे वैसे पास। खाना पीना भी इनके स्टोर में मिरर पार्क वाले में 4 रुपए सस्ता है पूरे। अच्छा इनके पास हाँ स्टोर भी है? हाँ मिरर पार्क में जो पेट्रोल पंप के साथ में स्टोर है ना, हाँ। वो हॉर्निस के आगे वो वाला स्टोर अरे इनका है। वकील साहब यार हमें भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिलवा दो स्टोर यार, है थोड़ा सा काम मतलब धंधा चलता रहे। खाने का दुकान है। हाँ 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 मैं आ रहा स्टोर एक है, मिनट। जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है। अरे देखो वकील वैसे साहब कोई प्रॉपर्टी एक काम बिक करो, रही हो तो सुनो ना, बताओ ना। वो तो जैसे मैं मेयर कह जी रहा था, बताएंगे मोस्ट प्रोबेबली भेजा उनसे मैंने बात नंबर करें। भेजा। सुनो ना, मैं कह रहा था यहाँ पे जो हमने मशीनें लगाई है ना, यहाँ पे 20-25 देव डॉलर भाई महंगी नंबर है। भेजा मैंने अभी। थोड़ा अगर तुम ही सप्लाई कर देते तो बढ़िया हो जाता। कैसा कैसा? नहीं नहीं, यहाँ पे पीछे जो वो खाने पीने की मशीन लगाई है ना, इसमें महंगा है बर्गर वगैरह। तो मैं कह रहा था हाँ कि देवी अगर वहां से उसकी दुकान से हाँ यहाँ से एक स्टॉल लगवा मुझे सकते हैं, स्टॉक बिल्कुल करवा। लगवा सकते हैं एक एम्प्लॉय को पकड़ के। हाँ इधर नहीं नहीं वो तो लगा हुआ है मशीन, बस उसमें इनकी बर्गर आ जाए बस। बट देखो 4 रुपए सस्ता है, मैं बोल तो दिया, बट आगे जाके तबीयत खराब हुई तो मुझे मत बोलना। ना ना ओहो नीटनेस तो ओ बहुत भाई ज्यादा भाई है, भाई भाई, वो तो तबीयत नहीं प्रॉब्लम नहीं है। तबीयत नहीं। हाँ। डॉक्टर वैसे का बिल कौन आपके देगा भाई? यहाँ भी डॉक्टर का गाड़ी भी बिल बहुत कौन देगा? सस्ते है दाचन, चल तो रहेंगे, चल तो जाएंगे अरे गाड़ियाँ। हाँ, पूरे शहर में हम ही हैं। पूरी शहर में हम ही है जो सस्ते और अच्छी गाड़ी अरे बेचते हैं। भाई
गाड़ियां का तो ऐसा है कि चलो फूट जाएगी दूसरे ले आएंगे, शरीर टूट जाएगा तो पैसा कौन कमाएगा? अभी नहीं फूटे, हाइजीन सब ठीक है। मैं खुद एक वकील हूँ, मैं खुद पे केस कर दूंगा अगर ऐसा हुआ तो कभी। ओ भाई सही है सही तुम्हें है। तुम्हें लोग मिलके कह रहे थे तुम चॉप शॉप सिखा रहे थे, फिर वो क्या ही अरे आपका केस चॉप मैं शॉप लड़ूंगा। मतलब वेजिटेबल्स को कैसे काटना है, इट्स अ वर्कशॉप टू चॉप। अच्छा हाँ, अच्छा, ओके ओके। इतना देव बारीकी भाई से काटते हैं ना, आपका अच्छे केस, समझ आते देव भाई आपका केस मैं लड़ूंगा मैं। हैं। हाँ हाँ, मेरा और एक अलग केस है, वो लड़ लेना। कितना कौन बड़ा सा? है? वो साइज पता नहीं पर है कोई। साइज नहीं, एक उम्र मिनट। पूछ रहा हूँ उसकी मैं। अच्छा, क्या बोल रहे हो? अरे मेरे को लगा आप अपनी जीएफ की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। अरे शिट भाई, इतना हैंडसम चेहरा और की मस्त अच्छा शक्ल, गर्लफ्रेंड नहीं है तो शहर अच्छा, को क्या हो गया है इस शहर को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई नहीं, आपके लिए कोई सुंदर सी कन्या होगी तो हम अवश्य बताएंगे। आपका है कोई? नहीं नहीं, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना, फालतू पैसे बर्बाद नहीं करना फालतू की चीजों करता पे। हूँ। ऐसा नहीं है कि सब पैसे के पीछे ही पड़े हैं। 99%। मुझे तो 99% दिखे नहीं, पर कोई बात नहीं। बढ़िया बढ़िया। और देव 99% भाई तो कब चलो देव भाई, लॉयर पे कब क्या आए? सीन है फिर? हाँ हाँ, क्या चल रहा है और बाकी सब शहर में आप अरे बताओ तो यार, पहले आपको से ज्यादा नॉलेज होगा। भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया इसीलिए। अच्छा 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 अच्छा। और तुम सबको ऐसे मत बता देना, बताओ कि मैंने तुम्हें अरे नहीं, ये सिखाया तो दोस्त है। इतने बारीकी से वेजिटेबल्स को काटना, चॉप करना। सॉरी सॉरी सॉरी। सीधा आगे बोल ले तो ये तो इसका जगह है तो कुछ होगा नहीं, वो तो पता ओ भाई, हाँ भाई, ये तो मैं भी कहूंगा अजीत भाई, ऐसे धंधे पे असर मत डालो सीधा सीधा। मैं नहीं तो नहीं नहीं, अगर अरे अपने गवर्नमेंट सब ऑफिस दोस्त होता है ना तो लात इसीलिए मार बोला। देता, बताओ इसकी नौकरी चली जाती आज। अरे नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे चली जाती, सब भाई है भाई, ऐसे थोड़ी ना जो खा जाएंगे आपकी। गवर्नमेंट अगर ऑफिस तुम्हारा तो जो भाई है। दोस्त है, राइट भाई साहब, आपका नाम क्या था? मेरा हाँ हाँ, डेविड। अगर डेविड डेविड ने इंदौरी। अभी तुम्हारा जो सामने दिख रहा दातचित का खून भी कर दिया, तुम्हें कोर्ट में आके ये नहीं बोलना है कि हाँ कर दिया, बोलना है कि सेल्फ डिफेंस में हो गया, शायद शायद कुछ फोर्स किया होगा उसने, ऐसे। ये देखो, वकीलों के साथ रहने कितने फायदे, कितनी अच्छी टिप्स दी इन्होंने अब। देखो, पर एक और टिप कल देता तुम्हें हूँ मैं, गाड़ी फ्री भी मिल कभी सकती है तुमने इसी ट्रिप कुछ पे। क्राइम किया ना, इसको तो विटनेस बॉक्स में मत लेके आना। किसको किसको? ये सच बता देगा। सीधा बोल देगा कि हाँ इसने किया। बात तो सही है। देव भाई वही मुझे ना। जरूरत पड़ी आपकी कभी तो बचाओगे मुझे? हाँ हाँ, जहां तक तुमने तुम्हारी खुद मुंह से बोलनिया हो बताऊंगा, बचाऊंगा। नहीं नहीं, मैं कभी भी तो पकड़े जाओ एक्सेप्ट मत करो कि आपने गलती करी है। अरे फ्री में दे अभी रहा हूँ टिप्स। पहले ही दिन की बात है जब पुलिस वालों ने मुझे वो मेल बॉक्स करते हुए पकड़ा। मैंने अच्छा, बोला कि मैंने किया ही नहीं, वो बोले लोकल ने कॉल किया। हम हाँ कहे हाँ, लोकल ने कॉल किया, कह रहे हैं रिकॉर्ड किया, ये वो सब किया, हम्म फिंगरप्रिंट चेक करूं। हम कहे मैं वहां उसको पकड़ के टेक लगा के खड़ा था, फिंगरप्रिंट तो आएंगे ही मेरे। तो हम्म बहुत उन्होंने फोर्स किया, उसके बाद डराया धमकाया, मैंने फिर भी कबूल नहीं किया तो वो चले गए। मैं आ सकता हूँ वैसे भी, अगर तुम अरेस्ट हो गए तो बस एक ही डर है कि भाई वहां भी बोल दे कि चॉप शॉप देव नहीं भाई नहीं 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 दिखे। नहीं, अरे नहीं 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 देव भाई, अरे सब अपने थे इसीलिए बोला ऐसे ही। अच्छा, ठीक ठीक। अब भूल गया भूल गया भूल गया, अब आप लॉयर हो। कोई बात नहीं। पहले भी तो मतलब अभी तक गवर्नमेंट ही नहीं है, लॉयर कैसे होगी? हाँ, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अभी आया ही नहीं अभी तक। हाँ वही अरे तो। रेड्डी हाँ ये अपन कर लेंगे, मतलब एक जज की व्यवस्था भी ऐसी क्या है, अपने भाई का धंधा चलना चाहिए। केस तो लेके आओ आप। केस हाँ है मेरे हाँ, पास एक। कॉन्स्टिट्यूशन आ जाने दो, उसके बाद केस फाइल जब हो सकता है। एक केस है गवर्नमेंट के, मतलब ये अच्छा जो सुनो रेंटल वकील पेपर वाला। साहब, देव भाई, बताओ तो। हाँ अपनी थाने में थोड़ी बातचीत है क्या नहीं, ये तो बताओ तुम पहले। कहाँ पर? आजकल मैंने सुना है बहुत रोक रहे हैं ट्रैफिक पे खुले। नहीं, अभी तक तो ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बात आया ना करो ना, इसीलिए टेबल के कोई। नीचे वाली अगर हो जाए। क्या बोल रहे हो? देखो मेरा तो अभी तक कोई पाला पड़ा नहीं है, बट इन लोगों का पड़ गया है थोड़ा सा, इसलिए बोल रहा हूँ। आपका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन क्या बात आपको ही करनी पड़ेगी। क्या करना है बताओ, क्या बोलना है? अरे टेबल के नीचे बात कर लो पहले, तो फिर मैं बताता हूँ। एक बंदे का है कि वो जो मेरे साथ खड़ा था ही में, हाँ हाँ, रॉय साहब, उनका है कुछ फंड मैटर,
बढ़ा हुआ बातचीत, तो फिर आपको देखते हैं। पहला केस दिलाते हैं शहर का। केस लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया, तो किस बेसिस पे केस फाइल करें अरे बताओ? यार तुम्हें सिर्फ थाने से बातचीत करनी है, केस जज के पास नहीं लेके जाना है अभी। मतलब क्या थाने के बातचीत अंडर करवाना है टेबल बताओ? निपटाना है। ठुल्ला परेशान कर रहा है, उसे ठुल्ले को बोलना है कि अब परेशान नहीं करना है, शकल दिख जाए तो ट्रैफिक पे छोड़ देना है बस। ठीक है, टेबल के हो नीचे गया, बातचीत कर लो, जो भी करना है। हो जाएगा, समझ रहे हो? उसके हम लोग ऊपर देख अभी लेंगे मान लो आपस में। चार्जेस लग जाएंगे, बच्चे को जॉब नहीं लगेगी कल से, क्या होगा फिर? ठीक है। नाम क्या कैसे ऑफिसर? चलेगा शहर आगे? नाम क्या है इस ऑफिसर? अब ये तो कोई बताएगा यार, मैं तो आया था, उसने मेरे को बताया ऐसा ऐसा हो गया, हाँ, ये हाँ। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अपन दरोगा जी से बात कर लेंगे, बट दरोगा जी तो मिले ना। अब आप मिल गए तो मैं सोच रहा हूँ आपका भी थोड़ा भला हो जाए। करते बात। उसे बोलो कि मुझे फोन करे डायरेक्ट से, ऑफिसर का नाम वगैरह बात रहेगी। डन है देव भाई। मैं तो कह रहा हूँ बातचीत कर लो आप, कमीशन पे काम बहुत आएगा आपके पास मुझसे। हो जाएगा। यमन गया कहाँ वैसे? नहीं भी होंगे तो 2-4 केस अपन कर देंगे अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो। बस एविडेंस लग रहा हो काफी है, और ये ना एविडेंस हो विटनेस बॉक्स वो में। सब तो मैटर आपका है, बस। आप पैसों की बात करना बस। बिल्कुल। एविडेंस भी हमला है, केस भी हमला है, फिर आप क्या करोगे? नहीं, थोड़ा एविडेंस सा समझो ना। ना छोड़े, वो बोल। हाँ ओके ओके, वो सब ठीक है, और कोई छूट जाएगा तो वो संभाल लेंगे अपन पैसों में, कोई और दिक्कत इसको नहीं है। बिल्कुल विटनेस बॉक्स में जहाँ मत लेके आओ। हाँ हाँ उसका ध्यान रखेंगे अपन। अरे क्या देव भाई ऐसा करोगे? अरे तुम्हारे काम की बात कर रहे हैं हम, तुम्हारी जॉब अगर लगवाएंगे तुमने तुम्हें। एक केस में अच्छा गुना इतना विटनेस हो गया, तुम टेस्टिमनी अच्छा दे दिया तुमने, तो तब मान जाऊंगा। किसी तुम्हारे एक भाई को बचा दो। कि आपको पता नहीं आप किससे कह रहे हो ये बात? अच्छा, किससे? एक्चुअल लायर वो। अच्छा, देखते। वो बोलने का भी एक तरीका होता है ना, जितना ये रियलिस्टिक लगा ये शॉप वाला, उतना रियलिस्टिक लगना चाहिए वो झूठ भी तुम्हारा। नहीं अगर उस तरीके से आएंगे तो फिर तो फंसा दूंगा किसी को भी या कुछ भी कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये सब कर रहे हैं। तुमने तुम्हारी फ्रेंड का मर्डर क्यों किया? 602 में क्या है? 602 में क्या ये होता है ना जरा? नहीं, तुमने तुम्हारी फ्रेंड का मर्डर क्यों किया जेन? मैंने? हाँ, क्यों किया अपने तुमने? फ्रेंड का मर गया मेरा फ्रेंड। हाँ, मर गया वो। देखो, कौन? 2 दिन पहले उसका फ्यूनरल भी हुआ था, वो मर गया था, तुम्हारा नाम था उसकी सुसाइड नोट पे भी। क्यों किया तुमने इसे? अरे देव भाई आज मैं मेरा फ्रेंड हॉस्पिटल मर गया गया, था, मुझे कोई नहीं मर पता, गया, ये तुम्हें कैसी पता बात है कर रहे क्या कौन मरा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा फ्रेंड मर गया, मुझे ही नहीं पता, ये कह रहे हैं कि मर्डर किया। किसने किसने मैंने डॉक्टर को नहीं, पूछा, नहीं, मैंने बता मैं दो, मैं एग्जाम्पल चाकू मारने सिचुएशन में बता रहा बोले। हूँ बस। अच्छा, तुम्हें पता है डॉक्टर आज कौन मर गया वही तो हॉस्पिटल? मैं कह रहा। कोई तो मरा था, पर पता नहीं कौन है एक्चुअली। नहीं, ये चले रॉयल रेस्टोरेंट चले, कुछ लाइव सिंगिंग हो रहा है वहाँ पे। देखते हैं। चलो 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 चलो, हमें तो पता ही ना। हाँ, अभी ट्विटर पे डाला था लेकिन रॉयल रेस्टोरेंट। चलो 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 चलते हैं। कार है आपके पास? हाँ है। चलो चलो, ताचिर को बुलाओ। बुरा ये देखो इनके काम। मैं कुछ नहीं कर रहा, थाने जाने बैठे हैं ये। मैं गाड़ी देख रहा था। सीसीटीवी लगे हैं भाई। अरे तो मैं लॉक पिक कर ही नहीं रहा था। ठीक है भाई, ठीक है। तो लॉक पिक भी तो जैद इन्होंने हाँ देव देव भाई भाई ने बताओ। राजेट आ रहे हो? ये लोग रॉयल रेस्टोरेंट जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हो? रॉयल रेस्टोरेंट लीजन पे है ना वो वाला। हाँ हाँ, आ जाओ। आप जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी सी देर में। सिखाई थी। फिर बेल्ट लगा लो। आपकी ड्राइविंग अच्छी नहीं है? हाँ हाँ हाँ, नहीं है, मैं गाड़ियों को अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकता। अच्छा, वो तो कर लोगे ना? हाँ, वो तो वो बताइए, मैं क्यों बोलूँगा। कॉन्ट्रैक्ट पढ़े चॉप शॉप के, चाहिए क्या कुछ? नहीं, अभी तो नहीं चाहिए। पी का है, चाहिए तो ग्लव बॉक्स में डालो। ना ना ना, रखो रखो आगे। और एक काम करो आप लोग, मैंने सुना कि कुछ ऑयल रिग ओपन होने वाला है। कब? ऑयल रिग रिफाइनरी हाँ, वगैरह। हाँ, हाँ, अगर वहां पर तुम लोग का कुछ काम वाम हो गया, नहीं तो कुछ ओनर से बातचीत हो गया,
वो मेरा स्टोर में जो बगल में है ना गैस स्टेशन, वहाँ पर कोई हाँ। लेना चाहता है तो मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ उसमें। तो बताओ ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ कोई स्टोर दिला दो, कागज किसी से बात करा दो आप। अरे बात मेल करने पे की बात बात नहीं करनी है यहाँ पड़ेगी पर। उसके लिए कि तो नॉर्मल फिर यहीं ना सिटी में? ये वो ऑयल रिफाइनरी आएगा, उसके बाद गैस स्टेशन के जो एप्लीकेशन खुलेंगे स्टेट के हिसाब से, तब भर देना बस। हाँ, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है क्या अलग से? हाँ, कुछ कन्वीनियंस फी होगा आई थिंक, तो कुछ नहीं बिटकॉइन है। की या इन अच्छा, यहीं यहीं की करेंसी? क्या हुआ? ऐसा है। बिटकॉइन देना पड़ेगा कि करेंसी देनी पड़ेगी, डॉलर? आप मेल पे बताना मेरे को, थोड़ा सा मेरे को समझ में कम आया अभी। ना ना, बट ये बात क्या बोल, अब बिटकॉइन वाला नहीं, नॉर्मल वाला है। अच्छा अच्छा, ले सकते हैं इंदौरी भाई। कोशिश करो पर अच्छे, हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं, अच्छे डीलिंग रखना चाहिए। कर सकते हैं। गाड़ी ले रहे इसमें तेल खत्म हो गया। चेत भाई आपको याद किया जा रहा है। याद कर रहा है। अरे गाड़ी का बोला ना उन्होंने। अच्छा लूं? ले लो ले लो। सामने देख रहे हो? भाई साहब कौन है वो साइलेंट व्यूअर? एक्चुअली 2 लोग जो बस स्ट्रीम देखे जा रहे पर बात भी नहीं कर रहे, इतने शर्मीले हो क्या? मतलब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो बोल गया। रहा हूँ, सामने देखा है वो? क्या? सामने समुंदर में। हाँ कुछ तो बोट है, शिप है बड़ी सी। नहीं मैंने नहीं देखा भाई, ये तो लॉक्ड बता रहा है मेरे लिए। सबको लॉक पिक करनी पड़ेगी लग रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ होता है होता है। तुम उतर के करो एक बार और। लॉक हो गई, गजब। वेट हो, करना ही पड़ेगा। इंदौरी भाई क्या लॉक पिक कर रहे हैं? चलो। हाँ वो क्या है, शिप क्या है? मुझे पता नहीं, देख लो एक बार। हाँ तुम क्या बता रहे थे ये? अच्छा जहाज। नाइस। तो चेक करते हैं। आर्मी का लग रहा है यार, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा तो है। ये ट्विटर का बड़ा दिक्कत है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है उसका, शेयर में कुछ ना कुछ हो जाता है और पता भी नहीं चलता। आप लोग ने क्या क्या किया इसके अलावा? कुछ किया आप लोग? मैंने तो सब कुछ कर डाला है, कुछ भी बचा नहीं है। अच्छा, लड़की से बात किया तुमने? सही एक्सप्लोरर। हाँ लड़की से बात किया? हाँ लड़की से बात भी किया। हाँ, जरूरत नहीं है वैसे, फिलहाल शादीशुदा है। अच्छा। नहीं तो मैं फिर भाई दूसरों बात की करने लाइन की क्यों बात काट रहे हो? बोल रहा हूँ बस, अब उसे नहीं बात तो किया, बात तो किया। मैंने यार फिशिंग किया और माइनिंग किया इन लोगों के साथ ही, इसके अलावा मैं तो कुछ नहीं कर पाया ज्यादा। अच्छा। हाँ बस देरू मैंने बहुत टैक्सी मैक्सी चलाया, बट अरे शहर के गरीब लोग साले टैक्सी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, मुझे जहाँ तो देखो लॉक पिक मारे बैठे थे। जो नया बंदा मिलता, भैया कहाँ चल रहे हो? मैं यहाँ जा रहा हूँ इस जॉब पे, चलो अच्छा मुझे भी ले चलो साथ में, बात करने को भी मिल जाएगा काम। फिर उसके बाद हाँ क्या कर रहे हो? भैया चॉप शॉप कर रहा हूँ, आज तो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ। क्या कर रहे हो? रिंग बना रहा, जाओ अरे मैं भी बना देता हूँ। चॉप शॉप की बात चल रही है तो ये चॉप शॉप का यार वो एक वो व्हील वाला कुछ आता है, वो समझ में नहीं आया मेरे को। मैंने करा था एक सिंपल है, बार। बहुत ही ईजी है। क्या सीन है उसका? मतलब ई मसल तब प्रेस करना है जैसे ही वो ऊपर की ओर जाए ना, सर्कल में ही उसको होल्ड कर देना है ताकि वो ऊपर की तरफ ना जाए। अच्छा, तो बीच वाले छोटे वाले सर्कल में करना है, सबसे छोटे वाले में करना है, बीच वाले में करना है, क्या सीन है बीच उसका? वाले में, मतलब जैसे ही वो ऊपर की तरफ बढ़े ना, ई मसल होल्ड कर लो, ऊपर जाए ही ना। आना ही चाहिए। हाँ वो जो ऊपर लंबी वाली तार ऊपर एकदम बिल्कुल टच कर जाती है जाके ना, नीचे से ऊपर हाँ तक वो नहीं करना चाहिए। हाँ वो बीच में ही रुक जाए। ये जो तुम लोगों पॉइंट ने है पूछा, ना उसी सर्कल में। ये देखो समझा। यहाँ पर क्या बोलते, सेकंड हैंड व्हीकल बेच सकते हो।
क्या है यहाँ पे? सेकेंड हैंड व्हीकल बेच सकते हो यहाँ पे। बेचना है, खरीद नहीं सकते। तो खरीद भी सकते हैं अगर स्टॉक है तो, किसी ने किया है तो। ओके बढ़िया है। अरे अब नहीं खरीदेंगे ना कॉन्टेंडर, वो कौन सी थी? 45,000 वाली। सही लग रही है मेरे को, बढ़िया। चारों बैठेंगे और सुनेंगे म्यूजिक और घूमेंगे सिटी। अच्छा यार कोई रेस्टोरेंट नहीं है क्या यार अच्छा सा शहर में? खाने अभी पीने तो का बड़ा वहां जा रहे इशू है हैं। बहुत भूख लगती भाई। है खाने का कुछ देना यार, बहुत तेज भूख लग रखी है। रुको मैं ग्लब बॉक्स में डाल रहा। डन है। 10 सितंबर को ये खुलने वाला है, ये भविष्य। बढ़िया खुल जाएगा तो अच्छा अच्छा रहेगा। सितंबर में ही खुलेगा? आई थिंक 4 दिन के बाद। ठीक है। रॉयल रेस्टोरेंट में कुछ सिंगिंग हो रहा है, देखते हैं। अभी तक है लोग तो देखते हैं। चलो देखते हैं। एक आदमी जो है मेरा दोस्त ही है, वहां पर गा रहा है। चलो गंदे शिट हो गए, पहले ही बोल रहा हूँ। आपका दिक्कत हो रहा है क्या कुछ? सबका हुआ, सबका हुआ। अच्छा यहाँ दिक्कत है ही है। सबका। मेरे नंबर तो सही आ रहे हैं बट कुछ दिक्कत हो रही है। कोई नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे ये क्या है? ये कुछ नया दिख रहा है मुझे। रेस्टोरेंट है। खाना मिलता है यहाँ? क्या लग रहा है? अच्छा क्या सीन है देख। भाई आ रहा। चलो। कोई दिख नहीं रहा वैसे मेरे को। लगाओ पे तो फोन किसी डाला, को। एक बार पूछो, एक बार ट्विटर पे। एक बार ट्विटर पे पूछ लो। अभी डाला है मैंने। कोई है ही नहीं। खाना वगैरह है मैं यहाँ इधर पे? नहीं आ पा रहा। ये अभी नहीं है, ये गड़बड़ है। आपको गलत लोकेशन मिल गई शायद। और यहाँ कौन पार्क करा के गया है मूर्ख? बोला तो है यही पर। कॉल तो सुन रही है। मैं बोल रहा हूँ एक बार ट्विटर पे देख लो, वहां पर एक बार रिप्लाई कर दो, देख लेंगे हम। आवाज आ रही है?
क्या हुआ दीप भाई? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर चल के देखते हैं, अभी तो कुछ कोई नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है ठीक है। एक बार मैं बोल रहा हूँ ट्विटर ओपन करो। 1 मिनट, मेरे को अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैंने अकाउंट नहीं बनाया। बना लो बना लो, 2 मिनट लगे बना। बना। अरे मेरे को ये फोन का पासवर्ड हटाना है यार, मैं फोन का पासवर्ड नहीं हटा पा रहा हूँ, क्या करूँ? सेटिंग में होगा देखो। अरे रिमूव कर दिया 2-3 बार, नहीं हो रहा, वो फिर से आ जाता है। ये तो नया वाला खरीदना पड़ेगा। अरे यार उसके बाद ट्विटर पे जाओ एक बार, ये कर लो आप। चिरपी चिरपी डाउनलोड करना, राइट? चिरपी पे जाओ, चिरपी पे तुम्हें दिखेगा। पैरली कर देता हूँ। अच्छा ये वहां पर है ये सिंगिंग, वाह। कहाँ पे कहाँ पे? आओ दिखाता हूँ ये बात। वेट। पासवर्ड ना रखूं अकाउंट पे चलेगा कि रखना पड़ेगा? कुछ ना कुछ रख दो, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बस एक ही बार 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 नहीं लिखना पड़ेगा ना? एक ही बार। हाँ खत्म। हाँ आ जाओ, चलो इस चलो तरह चलो पर। चलो चलो। वो कहाँ है? जैद भाई कहाँ हो? वापस यार ये तो बहुत बेकार चीज है। अब मैं भी करूं? करना पड़ेगा आपको भी आगे शायद। पीछे करो, आगे पीछे करो। अरे रुको रुको रुको। ना अरे यार बैठो बैठो। गाड़ी गाड़ी साइड में रोक लो सर, डू नॉट स्टॉप इन द मिडिल। टेक इट आराम से गाओ।
ये नहीं है, अच्छा ठीक है। Charlie bhai? Hmm. No, no, problem. देव भाई थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस गाड़ी छोड़ के आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ लीजन पे, वेस्टर्न के सामने। लीजन पे आ रहा हूँ, गाड़ी छोड़ दो, वो वाली ठुल्ले आ गए थे आपको तो उसी के चक्कर में। हाँ छोड़ दिया, एक काम करो। इसीलिए तो मैंने उलझाया था उन्हें बातों में। एनोनिमस क्यों आ रहा है तुम्हारा? यहाँ पर आके बैठो गाड़ी। आवाज आ रही? वेट हाँ आ रही है। अब बोल रहा थोड़ा देख के एनोनिमस क्यों करना आ रहा है पड़ेगा, नहीं तुम्हारा? तो पता नहीं, मेरे को भी उसका जेद का कॉल आया था तब ऐसे ही आ रहा था। सेटिंग्स में चेंज कर। ओ ये गा रहा है लीजन पे गा रहा है। एक महका महका सा What's up, Nina? Hello. You wanted a lawyer? Yeah, actually. Yeah, what's up? First, Uh-huh. I have a friend who wants to apply for the tattoo shop. Okay. I guess he spoke to you. Khan. Yep. Carl Serra. Yes. Yep. So he wanted to wait. Oh, Jax is here. Jax. Sorry, your friend is not here. And when you asked me to tweet on Chirpy, he replied. Okay. I mean, भाई जी आप लॉयर हो? हाँ जी, बताओ। हमें एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल चाहिए था लिख के। हाँ, कौन सा? हमें एक टैटू शॉप खोलनी है, उसके लिए चाहिए था। ओके। कौन इन्वॉल्व है इसमें? इसमें तो हम दो ही है, अभी के लिए तो दो ही है हम। दो ही है, ठीक है। आई गिव यू माय नंबर, आपको भी नंबर दे दूँ। ठीक है। डिटेल्स आप फॉरवर्ड कर देना मुझे, आई विल सबमिट योर प्रपोजल। ठीक है ना। And even है आई थिंक नंबर तुम्हारा। मिल गया आपको मेरा नंबर? मेरा भेज दिया। ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल्स फॉरवर्ड करता हूँ जैसे कॉल आ जाएगा। Done. I need your first name and last name, state ID, आपका बिजनेस का नाम, कौन सा बिजनेस, और आपका बिजनेस प्रपोजल, मतलब क्या करना चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो, क्यों आपको देना है, ये सब सिंपल। ठीक है ना, आपको हम भेज देंगे, जैसे कॉल आएगा भेज देंगे। Done. And more. We want to apply for another business, and we need a proposal for that. What's that? Mechanic shop. Okay, which one? That's something Lambu can tell you. Fine. Same thing for that too. Same format. Just get it to me. I'll get it done. Can you write down whatever you need? Yeah, I'll Details? text You have my the number, details. right? I don't think so. एक बार मुझे बताओ, अभी के लिए किसने किया है Check अप्लाई it, अपना टैटू शॉप if के you लिए? have it. अभी तक तो नहीं, honestly नहीं। किसी ने भी नहीं किया ना अभी तक? नहीं, मुझे तो नहीं। Can you check if you have my number? Share it to me. आप थोड़ा फॉर्मेट मुझे भी सेंड कर दीजिए। मैं इनको भेज दूंगा, ये आपको भेज देंगे। ठीक है। You rejected the number. No, I accepted it. It's escalation UI the phone. Maybe. Yep. Write down the details that I need to send you, because I'll have to collect it from all the members one by one, so I wouldn't remember. वो कंटिन्यू में हो जाता है। ओके चलो ठीक है। गोलू सराफ, SARAF सराफ। मेरे को बाइक लॉक करके आने दो। He looks like Frosty, don't you think, Jax? हेलो हाँ, टॉक्सिक है थोड़ा सा। भाई जी आपका नाम फ्रॉस्टी है?
Hi, Frosty. आपकी आवाज क्यों कम आ रही है बहुत? प्रैक्टिस करके कर लूंगा Frosty, सर। I heard that you have started earning a lot. पक्का Mm-hmm. लो ना सर। What? बोलो बोलो। No, no, don't lie to me, Carl. Oh, he left only. He left. My God. अरे बिल्कुल यार। Yeah, I'm good. Uh, Raise your all right, hand. one second. Investigate. आइए है All right, you need. Wait, 1 second. I'm so sorry. Frosty, Carl told me about it. Okay, so you can't lie to me. First thing. Second thing, yes, Dave. गोलू सर You need name, state ID, stated ID. What's that? Yeah, that's State a ID. typo. Yeah. Oh, okay, right. State ID, business. Huh? Nani? Business? Obviously, what do you mean by business? I'm confused. Huh? Business name. Obviously. Oh, business. Oh my God. It's not a job to get confused. That's a business. यहाँ पे कर रहा हूँ अभी। Yeah, It's go a on. business. That's the reason we are contacting a lawyer, right? Because we Yep. need a business. Yep. मैनेज करना है तो वो मैं थोड़ा बहुत Then गाना गाता that's why I was confused Business about it. and business name and the business motto. That's नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। वहाँ पे तो Motto event as in? समझो आपके यहाँ पार्टी What as in how would you like to function? What are your rankings? What do you plan for the future of the city and yourself? मैं सब Okay. That all comes under mottos, yeah. Okay. Right. Jack, see आपको Do भेज you देंगे, need ठीक any है? pictures? ठीक है ठीक है। Not मैं आपको needed. कल तक सेंड कर It's दूंगा पूरा पूरा professional डिटेल। business proposal, no pictures, nothing needed. No pictures, nothing necessary. You sure? They're actually unnecessary. It's soils professionalism, so yeah, I don't prefer it. हाँ यार इधर ऑडिटोरियम भी है सुना मेरे शहर में। Okay. And the state ID and the name should be one should be the owner's name and everybody involved in it. Like उसमें if ओनर्स कितने हो सकते हैं? दो Oh, wait, एक ही? wait. How many? owner Yeah, on I. paper एक ही हो सकता है. On paper owner only एक ही, one. okay. I wanted to ask. You said one owner's name and the rest. And the rest employees, managers, whoever you think. So So we can't have multiple owners. nope, only one on paper. One on paper. Yep. All right. I can help you with the board distribution after you get the property, but not right now. Okay. Yeah. All right. This is interesting, Jax. That's all. On paper, No one owner? owner. No. On paper, one owner. Only There one. will be a big problem between three people, man. Because you know how the whole DD started, okay? So I don't know how we take it forward from DD to the rest of the businesses. Reminders? We negotiate. Okay. साइलेंट व्यूअर है भाई साहब, आपको सलाम मेरे भाई. Don't chat, but it's I guess that's all from my side. Okay, just tell me whenever you're done. Mr. Romano, I asked you a question actually. What did you ask? I'm sorry. Do we need to, like, you know, focus on something important? Like, हाँ नहीं काम थोड़ा बहुत Like not doing any crime? अरे आपके पास पानी होगा? yeah, a clean record will always be a plus pointer, I guess. अगर जी मुझे एक बात Just for बताएं, the owner, right? Yeah. लॉयर हाँ हाँ बताओ. अभी के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन आया नहीं है ना? नहीं आया अभी तक. मतलब नो रूल्स? No rules, but there are still SOPs and penal codes and law for the PD. मतलब वो जेल कर सकते हैं अभी भी हमें पुलिस वाले? Yup. कुछ किए तो हमने? Yep. Okay. उसके अलग लॉ है. कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर डिफेंडिंग और वो लोग डिफेंस मोड में नहीं है, अटैकिंग मोड में. I'm confused. What? Can you repeat that? The constitution is for defending your rights and yeah, no rights for you as of now because there's no constitution, so they can do anything they want, honestly. Who, the PD officers? Of course. Ooh. Jax? Yeah? Jax, I'm going. Bye bye. You going? Bye. You scared the shit out of me that day, remember? Which day? You, me, and What's Kyle, your we were- intention with me? Oh, yeah, that day. Sandra, I know. Yeah. this side. What's... Sorry? No, you know you. Yeah, go on. Go ahead. I'm sorry. Didn't get you. Not you, not you. Go on. Alright.
क्या मैं तुम्हारी बाइक ले जा सकता हूँ? नहीं, भाई साहब पेशेंट लेके आना भाई साहब, मेरा दोस्त Take वहाँ the गिरा yellow हुआ है one. भाई साहब। ये लो ले लो। ओके थैंक यू। जो स्टाफ होता है वो मैनेज कर लेते हैं, बोल रही है। ये गो अहेड। हाँ देखो मैं करता हूँ ना थोड़ा बहुत, इसके लिए Any मुझे more समझ में आ doubts? गया इनकी फीलिंग्स समझ में आ गए तुरंत। Not right now, but I don't know. When are you available so that I can ask Lambo and Neil to sit Yeah, together and discuss? come for a meeting tomorrow वहाँ से at खींच के 8. लाता हूँ, आओ इधर Yes, आओ। yeah, it works. Or yeah. इधर आओ, इधर खड़ी रहो आप, It लाइट में is आइए not इधर, ये साइड exactly में। possible. आप दोनों आ जाओ, दोनों को नहीं, लाइट How यहाँ से आ about रही है ना पीछे से, तो आप 10:30? इधर 10:30, I'll let you 11? know. I cannot assure you anything. I have a शेरो आ meeting जाएगा at that time, so I'll let you know. हाँ बस आप इधर देखिए मेरे तरफ, ओके? मैं अभी फोटो खींचता हूँ फोन में। Okay. Yeah. I think I have Lambu Pandey. Is it Lambu Pandey or somebody else? No, it is Lambu Pandey Okay, and I'll Neil give him Shah. a text. I don't know about the second person, but I do know Lambu Pandey. I have his number, so yeah. No, but as I've spoken to you, I will go ahead and talk to Lambu first, and then we'll talk about it. Yeah, Rather than anything you works. texting Lambu, you Yeah. can text me your available time, and I can talk to Lambu अरे about सर ये it. फोन का Yeah, ये चल sure. रहा है ना अभी, अपडेट Thank चल you. रहा है ना, See. तो ये फोटो अभी Have सेव a नहीं nice हो रही सर क्लाउड में। Jax, Yeah. मैं आपको tattoo ये दे देता हूँ। business. Yeah, tattoo business. हाँ देखो देखो। Tattoo business. इधर मैं बताता हूँ, एक यहाँ पे आओ। लड़की भीगी बाकी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक You can get free. अजनबी से कोई आगे Yes, ना you can get free पीछे tattoos. तुम Free ही कहो ये कोई tattoos. बात है ये गाड़ी अपनी है, चलो फिर। प्यार हुआ इकरार हुआ It was है Mr. Romano's. प्यार से क्यों डरता है दिल पूरा कहता स्माइल है इस देव दिल भाई मुझे एक बात रास्ता बताओ, इधर आओ। मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल Can you explain the whatever you said just now? It's really nice, brother. Okay, Appreciate this is it. the song Wow, lyrics in which देव भाई a guy is हो गया, हो गया। confused. इधर आओ, Okay, इधर आओ। he's talking Okay. to धन्यवाद, himself आपका like नंबर तो मैं आपको शेयर करता हूँ। he's in love. Okay, but True that, my friend. True that. he's in true love. Okay, but Okay. the मुझे एक बात बताओ, अभी ये गवर्नमेंट बिजनेस लीज पे दे रही है कि परमानेंट ओनरशिप दे रही है? Lease. लीज पे दे रही है ना? All lease. Okay, कि मतलब पूरा बिजनेस अभी भी गवर्नमेंट के नाम पे रहेगा? हाँ, उनके मेरे नाम के पे नाम पे रहेगा, पर लीज आप ओनर आप होंगे, रनिंग पार्टनर आप। it will take him. समझ गया मैं। That's why बस। मतलब प्राइमरी ओनरशिप गवर्नमेंट ही है उसकी। प्राइमरी ओनरशिप गवर्नमेंट के है, पर आपके पास 51% रहेगा। 51% है हमारे पास। Yep. ठीक है, जैसे कहा था मैं आपको फॉरवर्ड कर दूं पूरी डिटेल्स। Done. हाँ हाँ। Broken friendship. Let me think. I usually sing. I love to sing 80s song usually. I think Ford Yeah, if को you let have me something. cloud yeah, का let नहीं me think. हुआ है। Let me think. Just a minute. Just a minute. Sure. मुझे I लगता है can कुछ तो गड़बड़ see है, into my उनका भी नहीं हो रहा था। list Okay. playlist. Just a minute. टैटू जाने पे Sure. दोस्त Jax, come here. We enjoy. फोन में कुछ बग है। अरे फ्रोस्टी क्या Until Carl क्या comes. हाल है? We enjoy. फ्रोस्टी काम है तुम्हारा थोड़ा सा So tomorrow be ready. Jax. Yeah, okay. करो बात। For that, क्या हाल है ब्रो? what do you राखी, say? राखी, राखी। Bandan, yeah. Yes, रक्षा मेरा नाम तो डेविड है भाई। Yay, I देखा got भाई a ये brother. एग्जैक्ट I शक्ल got another brother. You get a कहाँ Rocky? पे? Huh? Where is भाई Rocky? एग्जैक्ट तेरा जैसे शक्ल What's का that? बंदा को हुआ कैसा? घर में ही खड़ा है How उसके will I से get the एग्जैक्ट सेल का बंदा That's the main part. देव फैन फॉलोइंग बहुत है I will अपनी। still get the bracelet for you. Somehow. Okay. And what would you give me? मंकू बताए थोड़ा चलते हैं यार किधर आए A million Surprise dollars? gift. यहीं आ Surprise gift. Why 100 lottery tickets? और देव भाई क्या कर रहे हो? Surprise gift. मैं किसी I विजन want न्यूज $1 वाले को million. ढूंढ रहा हूँ। $1 million. $1 कोई million. पता है विजन न्यूज से तुम्हें? And All then my I'll go money and on- buy a car. You know, all my I'll go money and buy a Huh? car. in Swiss bank. Then oh, No. Swiss bank, huh? Yeah, Then I'll Swiss go and bank. buy a car. आवाज आ रही है? Actually, a bike. Actually, I can give the Me- black me- money. You need black No, money? no. I want. The number you are wait. calling is currently unavailable. ब्लैक मनी क्या आवाज आ रही बातें है? हो रही है? ओहो हाँ हाँ आ मैं रही है, बोल आ रहा रही था किसी विजन न्यूज वाले को जानते हो? Hello, ma'am. है। नहीं अभी तो नहीं, बताओ क्या खबर फैलानी है, अपन फैला देंगे। बस हमारा स्टोर का थोड़ा एडवर्टाइजिंग करवा रहा
हाँ You did not get a song yet? हाँ तो चलो फिर स्टोरी चलते हैं, शूट मूव कर लेते हैं उसका आज। बताओ बताओ Actually, बताओ। you know any Okay, business okay. employees? Start, But start, it's start. about. No. I will just Alright, say two words. Okay. Okay, It's not like okay. a within friends. It's just a feeling. Okay. चलो आपके Okay, alright. स्टोर चलते हैं, शूट मूव कर लेते हैं उसका कुछ फोटो वीडियो फिर डाल देंगे। लेंस अच्छा नहीं है। अबे यार और अभी इस फोन भी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। दिल में क्या कोई नहीं, कल करते हैं, आप मेरे को कल कॉल करो, बैठ के करते हैं बढ़िया। और इस दिल मैं बना के देता हूँ आपका प्रमोशन। में क्या रखा है तेरा ही आओ थोड़ा सा म्यूजिक का आनंद ले लेते हैं, दर्द इतना सुंदर आवाज है बिल्कुल। रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है। Have you heard this song? Anyone? क्या बात है I भाई, have never heard any Hindi songs. मतलब I'm आपने sorry. गहराइयों में डाल दिया मुझे ये गाना है गा। ना? So how is बढ़िया it? How is it the song that I requested for? Explain. How is it connected to the whole? Friendship, like if you are a very close friend, so it's like a friendship, na. I have connected this song in the friendship, like the broken friendship. Like he is saying, like in my heart there is nothing. Okay. The pain what you left, nothing else than that. So true. Correct. Yep. You're right about Very it. true, brother. So, Very true. True words. So continue the song, please. Continue the song. Or if you don't have something like you can connect any song to friendship, I wouldn't mind. But I really liked it. The meaning of the song is nice. Okay. Let me think. I think you would like this song. Just a minute. Let me think that I have that lyrics. You will like or not? I think your friends will like this song most. My friends. Means the people you come here with you, like them. Nani. Okay, gotcha. Naruto. For that, I would say Jax would love the song. He's my brother. Hey, Jax. Yeah. But I am talking about friendship. ला 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 दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे ला 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 दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल भर जरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो तुम भी मुझसे प्यार कर लो तुम भी मुझसे प्यार कर लो ला 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 Very good thing. Very good. Yeah. मेरे पास नंबर नहीं है, इनको बुलाते मतलब अभी वो हॉस्पिटल फंक्शन है ये तो ये वाला है ये वाली है। अच्छा हाँ जनरल वार्ड कहाँ पर क्या बोल रहे हो? जनरल वार्ड इज राइट जाके सीधा जाओ, सॉरी लेफ्ट जाके सीधा सॉरी अरे इधर उधर कहाँ जा रहे हो? इधर भी गेट है।
अरे भाई साहब इधर गेट है, इधर गेट, ये रहा लेफ्ट में। अरे ऑफिसर भाई मेरे बीपी बताओ। बढ़ा हुआ है यार। ये देखो बीपी क्या आपको दवाई पल्स में नॉर्मल है। गिर गया था सर मैं। बीपी की गोली दी है मैंने आपको, टेलमीज़ार्टिन वाली। कैसा लग रहा है वो आपको? आपके मेरे जैसे देख, मेरे को आपका शर्ट उसको और ये उस पे बैल है ना, उसके बैंडेज चक्कर में लगाना लग गई। अबे एक्सरे होगी हमारा पानी पीना है क्या? आ जाओ। कैसा लग रहा है सर? इज्जत से बात करना। अभी अरे बहुत रुक जा, बढ़िया अभी लग रहा है सर। चलो सारों अच्छी बात नहीं होगी। दर्द की गोली दे देता हूँ अब आपको, एकदम फाइन लग रहा होगा मेरे जनरल हिसाब से। वार्ड मैं में एक कोई बार क्यों नहीं है और यहाँ पर एक पेशेंट वाइटल लेटा हुआ है, उनको कौन अटेंड करेगा? अरे नहीं नहीं सर, आ गए देखिए। अरे आ गए हाँ, पता है, आ बट गए। इस टाइम पे भी तो आपकी सख्त जरूरत थी थोड़ी देर पहले। हाँ, पता नहीं, देव से बात करना था ना। आप बात करो, मैं आता हूँ। बैठो बैठो, कॉर्नर इमरजेंसी लाइफ इन्वेडर। कैसे हैं आप? What happens? करो भाई एक्सप्लेन। मैं बता रहा था तो कुछ और है। बताओ बताओ। क्या कर रहे हो भाई साहब? क्या बोल रहा है? क्या कर रहे हो? ओ ये हम लॉटरियां खोल रहा है। अच्छा, पैसा मिल रहा है? हाँ मिलता है मिलता है। क्या नाम है तुम्हारा? देव। क्या तुम्हारा? करते हैं कुछ? हमारा नाम हैरी मलिक। अच्छा, कहीं तो देखा है जगह। कहीं देखा है हमको? किधर देखा? पता नहीं। मैं एक छोटा सा स्टोर ओन करता हूँ। हाँ अच्छा पड़ गया। हाँ 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 हाँ, लोग थे वहाँ पर। ओए ओए। ओके, that is not planned guys, trust me. That is not planned guys, trust me. 1 2 3 4 5 6 7 8 वो तेरी अरे उठा 311 उठा करो उठा, जल्दी। हेल्प कर हेल्प कर। ओए इधर वो डॉक्टर आएंगे सारे, इतने सारे को लेके जा। हाँ जी सर। इस गाड़ी में फुल है। टेंशन नहीं लो भाई लोग, हम सबको उठाएगा। रुको बस इसको छोड़ के आवे। अरे यहाँ पे तो भाई गा रहा था, ये क्या गा दिया इसने? मैं एम्बुलेंस लेके आता हूँ। बजोदर भाई, ये जो क्लीनिंग वाली जॉब है उसमें लाइफ इन्वेटर का लोकेशन आ रहा है। What the fuck? तो है नहीं। हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर जा नहीं सकते वो।
राम भाई जल्दी आ जल्दी आ गए। डॉक्टर इसका इलाज कर दो थोड़ा। किसका इलाज? इनका इनका इनको अंदर जनरल वार्ड में लेके जाइए। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा चल नहीं सकता। इमरजेंसी सिचुएशन पे। इमरजेंसी अच्छा मैं सिचुएशन। मैं ले जाऊँ। हाँ आपका वो कहाँ गया +1? माय बैड ऑफिसर, माय बैड। राहुल +1 अरे का डॉक्टर My आ रहे bad. बॉस। उसको कहाँ मरवा दिया तुमने? अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है या My आपके bad. पास लाइसेंस नहीं नहीं है? नहीं, बबल हो गया। My bad. थोड़ा सा हेडेक हो गया। अरे by आप mistake, इनको sorry. एस्कॉर्ट कर सकते हो, ये क्यों कर अरे रहे हो? कफ क्यों कर रहे हो? एस्कॉर्ट करो सीधा। भाई कैसे? एस्कॉर्ट करके गाड़ी में बिठाओ। एन एस्कॉर्ट। ये सस्पेक्ट है क्या? नहीं नहीं, सस्पेक्ट नहीं है, सब पेशेंट है। अरे अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई इसको हमारी। नैतिक सर इसको ट्रीट करो, ये चल हमारा मैं इनको ऑफिसर है। लेके जा हमें रहा हूँ। जानना है हुआ क्या है यहाँ पे। इसका वो +1 भी ढूंढना है, कहाँ पे है करके। हाँ, वो कहाँ गई? गाड़ी वापस लेके आना। इसको इसको कुछ करो, इसको कुछ करो। अरे इसको आप मैं पुलिस इनको में छोड़ के चला आता हूँ। +1 ढूंढ के गाड़ी वापस लेके आना, ये भी पहुंच पूरी- रहा पूरी- पूरी- कहाँ पे? पूरी- छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये हमारे पीडी ऑफिसर को छोड़ दे आप। यही है। हाँ हाँ अच्छा, हमें ये लीजन स्क्वायर पे कुछ फटफट छोड़ आ दो, गया छोड़ दो हेलीकॉप्टर। लीजन पार्किंग पे आओ, लीजन पार्किंग के ऑपोजिट आओ। यही है +1 हाँ, +1। वो जो रेस्टोरेंट नहीं है गंदा सा, उसके ऑपोजिट। मिलन हो गए +1। अरे सामने होता है ऑपोजिट। ये तो रहा ना, मैं ये रहा। मिल गया +1 मिल गया। अरे ये कौन अंदर बैठा है? फिर फट रहा है। कौन फाड़ रहा है ये? नो ब्लू बर्ड। ये मैडम को क्या हुआ? हेलो मैम। ये दो हमारे ऑफिसर्स है, प्लीज रुक जाओ, इनको भी ट्रीट कराना है। अरे कहाँ लेके गाड़ी निकल यहाँ से, गाड़ी निकाल, मुझे नहीं मरना। तुम साले हमसे क्या करवा रहे हो? वतन के नौजवान वतन की शाह में न शहीद हो। वतन के नौजवान वतन की जाह में। अभी चल ही नहीं हुई है तो बाइक चल ही नहीं हुई। अरे इनको क्या हुआ? शहीद हो। रुको मैं लेके जाता हूँ इनको। उठाओ। मदद करो। इस गाड़ी में जगह है। ओए ये लो लेके जाओ। हाँ जा रहा हूँ। हाँ जी। अरे आराम से चलाओ यार, देखो रे पुलिस की गाड़ी आ रही है इतने। ऑफिसर डाउन। हेलो क्लियर द वे। मैं खुद वहां से बंदर लेके आ वो ये भी लाया हूँ, ये देखो ये वाला। एक गाड़ी लॉक करो अपनी। मेरे पास नहीं है चाबी, जिसके पास है वही डाउन है। तो बैठे रहो फिर गाड़ी में। अरे ये मैडम कहाँ? ओए लो भाई साहब, पेशेंट बम ब्लास्ट हो रहा है सर। ले जाओ। मुझे बचा लो। मैडम ओए मैं भी चल गया। हटो भाई। ओए ये लाला, ये मैडम को उठाओ पहले उसको। चलो अभी ये अरे ये हाँ रुको, तुम्हें लेके जाएगी हम अंदर। यार इसने वाइग्रा खाया है, इस वजह से हॉस्पिटल वाले है कहाँ पे? एक्स्ट्रा वाइग्रा खा लिया है। अभी कहाँ है बंदे? कहाँ है अच्छा, बंदे? आओ चले प्रोटेस्ट पे। ये हालत है इस देश की भाई, इस देश की हालत देख। हेड संभाल लेते हैं पूरा देश। आ चल। आ जाओ इसमें चलो। अरे अरे अपनी है बैठ।
लो अकेले हैं चार्ली को बुला, मेरे भाइयों को सब छोड़ दो इन्हें, अंदर लेके जाओ। भाई मुक्का को मार के आयो। चार्ली को बुला। इंस्टेंटली माय बैड बोला। भाई मुक्का को मार के आयो। बोल रहा इंस्टेंटली माय बैड बोला था। क्या बोला था? आवाज नहीं आ रही क्लियर। बोल रहा था इंस्टेंटली बोला था मसल फ्लेक्स हुआ माय बैड। सर क्या हुआ अच्छा था वहाँ पे? हाँ चलो ठीक है। मैं तो डॉक्टर हूँ, छोड़ दो। हो गया ठीक। और किसी का Yes, so इलाज it was. ओम प्रकाश क्या हुआ था? हाँ बोलो। पता नहीं सर, आपकी बहुत ज्यादा ही तबीयत कैसे खराब हो रही है? कहाँ से क्या हो हुआ रही है? था? अरे छोड़ आपके जा जाओ चोटें आई थी, बहुत कौन बड़ी अंदर चोटें भाई? थी। इतने सब ओ लोग क्यों आ मैन गए थे? क्या हुआ था? पता नहीं, कोई मास कैजुअलिटी हुई होगी सर, पता नहीं है मेरे को। हाँ चलो चलो किसी का निकलते हैं, चलो। किसी का इलाज इधर करो। से मत निकलो, अभी थोड़ा रुक जाओ, अंदर ही रहो। अरे क्यों? आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। किसी है? का इलाज, किसी का और इलाज। नहीं तो क्या। हाँ भाई। आपका इलाज करना है किसी का? सच बताओ, मेरे को बाहर जाने से डर लग रहा है। नहीं, मेरे को डर लग रहा है। something happened. ओह, अरे ये इंग्लिश के बंदे कहाँ से आ गए यहाँ पे? अरे I remember कौन? the blast had some kind of thing. वो ऐसे ही करते हैं, वो सब जानते हैं, एक्ट करते हैं, बस की कुछ जानते नहीं। After that, I woke up here. गाइस मैं आप ये तो हिंदी का सर्व है ना, ये इंग्लिश वाले गोरे कहाँ से घुस गए? दूर भागो। We thought we were safe. गाड़ी से दूर नहीं, ये कूद। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। सर और कोई? भाई आपने बचा के लेके आए अमित। हमको ही गांड मार कैसे बच गया? तू कैसे बची? मैं बचा नहीं, मैं भी टूट गया ना साथ में। अच्छा अभी डॉक्टर ने बचाया फिर हमको। गाड़ी की तो बीवी हो रखी है। अब मुझे लग रहा है कि अन करीब आने वाले गाड़ी फट वक्तों में गया। हम सबको पैदल ही घूमना पड़ेगा। ऐसे सर आपका लगता है आपकी भी गाड़ी चली गई लगता है। अरे ये इतने इतने सारे बम कैसे फट गए एक साथ? ये दाऊद आ गया क्या शहर में? क्या हो गया? अरे ओम प्रकाश भूल गया। हाँ ठीक है सर क्या नाम है आपका? हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भूल गया सर, बता दो। जॉब आने से पहले पूरा घूम के बोलता था कि ये अच्छा करो, देव हो वो आप, करो। देव हो। ठीक है कोई बात देव नहीं, हो ना आप? वो भूल गई थी, तुम भी भूल जाओ। ठीक है अरे आप देव हो ना, देव रोमारियो। हाँ हाँ अरे याद आ जाता है यार, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही। ये देव जी, ये इतनी सारी मास कैजुअलिटी हुई कैसे थी अभी, जो इतने सारे ये लोग? हुई थी, किसी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था लीजन पे। आसमान से आगे बरस रही थी? नहीं क्या नहीं, हुआ? किसी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था लीजन पे, तो ये सब हुआ, होने लगा। खतरनाक भाई, खतरनाक। होई ना? हाँ गोलू। बोलो बोलो भाई। हाँ हाँ गोलू भाई। खुले भदोरिया। हो गया शायद उधर। इधर ही पटे हो क्या आप? अरे वो लीजन के पास गाना गा रहा था मैं सबके सामने। अरे लाओ इधर भी सुनाओ। अरे आपके मालिक का जो गाना गाया था आपने, वही वाला क्या? ओके वाह, जो आपने मुझे सुनाया था दूसरे वाले हॉस्पिटल के वहाँ, याद नहीं? कौन सा गाना गाया था मैंने? Bye. Yes yes Gaju, bye. bye. What is your name? बाइक को फोन दो। Gaju, bye. My name is. भाई मिले तो है अपन। स्टोर देखते हैं चीज और और भी आपकी हम ये कल करेंगे। ये जो नया वाला जॉब आया है, एक्चुअली 2 आए हैं, which one seems interesting. The profession this character has. तो वो देखते हैं, there are some contract that will start. अभी कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है, so just the foundation of the हो जाते I guess अभी अच्छे से होगा, धीरे धीरे धीरे। Wait and watch क्या हुआ। Just here
Bro, hello brother, welcome to the stream. पहली बात ये वाइटली सर्वर नहीं है, you can just join directly. Nexus Universe RP सर्च करो और आप तुरंत आ जाओगे. वाइटली सर्वर नहीं है ये. Thank you for joining and welcome to the stream. 50. Hit में 38 है ये. It's 50. और ये 76 है तो 84 है तो serious obviously not getting at least out of now, so we'll stock up the water bottle and I mean I guess it needs if this is done. Right. Yes, just see that is, but I don't think so. It's fine. Oh, today I mean look at 44 minutes में हुआ. Not bad. Should I withdraw them? Okay, अभी cash कितना है हम ये 3497. Let's add 1k. ये 50k पे निकालेंगे थोड़ा सा just for our खर्च. Okay. नीचे बता वाइट लिस्ट की जरूरत नहीं है ब्रदर, जस्ट ब्लैक लिस्ट सर्वर. आप Nexus Universe RP सर्च करो and then you can just log in with your Steam and Discord and you can directly join, play. Alright guys, thank you so much for watching today's stream. RP initiation to हुआ, it's just foundation stone ऐसे ही. और अभी जाके आगे RP होगी. Regarding the business VOJ. I'm sorry, I still have. So yeah, that's all. अभी RP DOJ RP का एटलीस्ट फाउंडेशन स्टोन हुआ है एंड बिजनेस RP भी इनिशिएट होगा और भी बिजनेस एम्पायर को एक्सपैंड करने का ही होगा. क्योंकि बिजनेस एम्पायर नहीं बोल सकते अभी तो एक ही बिजनेस है. ट्राई टू एक्सपैंड टू ये गैस स्टेशन जो है ये भी लेने की कोशिश करेंगे. तो that's all from today. That's all for today. See you in the next one with some more fun, more RP. Hopefully something interesting to take there. See you guys. Bye. और जितने लोग भी थे सबका मैंने चैट पढ़ा है, रिप्लाई भी किया है. If you guys did not listen to that, एक बार please पीछे जाके देख लेना. But anyways, thank you so much for joining the stream guys. Really appreciate it. Bye. See you guys.